ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಮುಲ್ಲಾರಪಟ್ಟಣ ಪರಿಸರದ ಹಬ್ಬ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4-5 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮುಲ್ಲಾರಪಟ್ಟಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ MPL ಮುಲ್ಲಾರಪಟ್ಟಣ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸತತ 4ನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 3 ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ನುರಿತ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ನುರಿತ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನುರಿತ ತೀರ್ಪುದಾರರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನುರಿತ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸಾರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಪಿ ಸಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನುರಿತ ತೀರ್ಪುದಾರರಾಗಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರರೆಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಬೇಜಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಕ್ರೀಸಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದ್ದೂರಿ ಚಾಲನೆಗೆ ತಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತವರು ಅನೀಫ್ ಖಾನ್ ಕೋಡಾಜೆ ಇವರಿಗೆ, ಅನೀಫ್ ಖಾನ್ ಕೋಡಾಜೆ ಸದಸ್ಯರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ MB ಅಸ್ರಾಫ್ ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವಕರಾಗಿ ಮನೆ ಮಾತಾದಂತ ಅಸ್ರಾಫ್ MB ಮುಲಾರಪಟ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ GHM ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಲಾರಪಟ್ನ ಇದರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಓರ್ವ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರ MS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. GHM ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಂಸಾ ಗುತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ನುರಿತ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಾಫಿ MB PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮುಲಾರಪಟ್ನ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಖ್ಯಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟು ಜಬ್ಬಾರ್ ಮುಲಾರಪಟ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ರಮ್ಲಾನ್ ಒಬೋರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ MPL ಮುಲ್ಲಾರಪಟ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಯಶಸ್ವಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ದೊರಕಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅನೀಫ್ ಖಾನ್ ಕೋಡಾಜೆ, ಸದಸ್ಯರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಡ್ ಉಡುಪಿ. ತದನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಮೊಳಗಲಿದೆ. ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಮೊಳಗುವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೋಬಾರದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅನೀಫ್ ಖಾನ್ ಕೋಡಾಜೆ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಸದಸ್ಯರು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಮೊಳಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಡಿ.
ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಮೊಳಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಮೊಳಗಲಿದೆ.
ಅದನ್ನು ನೀವು
inside the ring. So hope everyone will go into follow the rules and regulation of this cricket tournament, because it's very necessary for the success of any cricket tournament. And discipline, one of the key factors for the success. And I hope yes, every team will go into follow that. The 6 teams will go into participate in this cricket tournament, and in the league stage matches, the Premier League means 6 teams will go into play 5 matches in the league stage matches. Then afterwards, it's IPL concept will be implemented, the power play, and the bowler will go into start the proceeding. Samshuddin from the Vision events, and deep wideish long on, and one fielder down at the wideish long of the fielders outside the circle in the power play. And this is going to be a first delivery of the tournament, left arm around the wicket. Lofted that one right in the vacant area, but there is a fielder what I'm talking about, the long off, which is slight a bit of wideish, and so straight away Siab is off the mark with the single. Lofted drive, but quite safely played it down to deep long off for a single. With that single, first run of the tournament, and which is Sihab has got the first run of the tournament from his bat, and he opened the innings. Again, that ball is going down far outside the line of off stump, so going to be a wide plus 1, 2 wides given, and scoreboard now moves on to 3 on the board. 3 without loss of any wicket. So thanks to the donors who are donated very attractive first and second trophy for this prestigious cricket tournament. Respected Ashraf, Janab Ashraf. Sam appeal for, I think it's gone. Maybe yes, it's gone. Ball hitting the stumps. Batsman is just trying for the unorthodox cricketing shot. That is but playing your first delivery, trying for the unorthodox shot, definitely need to pay the penalty for that. And unfortunately, the batter Sihab is back in the pavilion. He's playing his second delivery, not quite able to get that one to his back, and pays the penalty for that. And the bowler Shamshuddin got rid of the batter, and which is really going to be dangerous to play against delivery, which is pitching in the line in the middle of stump, and batter completely misreading that one and pays the penalty for that. So first wicket is back into pavilion of Zara 11, the team which is owned by Fayaz Al-Mazin of KSA, Saudi Arabia. So we would like to give special thanks to all the owners of the teams. The 6 teams participating in this cricket tournament, 7 teams in fact. 6 teams. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ರಫ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತೌಹೀದ್ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ರಫ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಶ್ರಫ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದಂತ ತೌಹೀದ್ ಇವರಿಗೆ. Thank you very much. And Irfan is a opportunity of run out which is created. If it's a direct hit, it is all over for Irfan. Absolutely, the golden opportunity is created for the run out. The fielder from the short extra coverage and trying for the run out, but misses the stumps complete, and the batsman survives. So little bit shattering start here. We can see that from Zara 11 after winning the toss elected to bat first, and Siab already back into pavilion, and these two batter Riyaz and Irfan try to get some partnership, but nicely pushes that one down to backward point region for a easy single. The bigger single scores on Amazon to 6 in the board for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. For the latecomers, you are watching the match number 1. There is a inaugural match between Star Emirates versus Zara 11, and Zara 11 after winning it was selected to bat first, and the first over is in progress. Again, that's going to be a punishable not from the batter but from the umpire. Vijay Prasad has got no hesitation to call that wide, which is going far outside the line of leg stump, and 2 wides, and the extras will go into added total with that 2 extra score on Amazon to 8 on the board. Nothing much wrong with the runs. They got runs what they really wanted, but the problem that they lost 1 wicket, the big wicket of Sihab back in the pavilion, and again Shamshuddin left arm round the wicket, nicely plays that one off the back of the square, driving that one down to deep belly region before the fielder from the third man division to run across to his right to field that one. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that couple of runs, Scuba moves on to double figure, 10 on the board for the loss of 1 wicket. Runs are coming very freely in this over. Even though they lost the wicket of Sihab, but both the batters getting some runs from the bat, even bowler contributing from the extras.
10 without loss of any wicket. Sihab again, right on the wicket, again going to be punishable. He's really struggling, Shamsuddin, and he bowled so many extras, and because of that runs are coming very freely in the first over. 11 on the board for the loss of 1 wicket. This time Sijit comes into play, just going over the top of the infield, running down to deep backward point boundary. Will it go into the first boundary of this tournament? No, it doesn't. Just inside the boundary line, the one fielder we managed to pull that one inside the boundary line, and meantime both the batters completed 3 valuable rounds in between, and expensive over which is comes in, and even it was a successful over. He picked up a wicket there, but nothing much worried about the wicket, because team Zara 11, they got 14 runs in that over, and that means the good start given by the batters. Of course, especially the Riaz is getting most of the runs, is batting on 7, and Irfan is scored 1, and altogether the extras also contributing to get that huge amount of runs in the first over. 14 for the loss of 1 wicket. Just talking about this cricket tournament, a very prestigious MULARAPATNA Premier League 4 MPL 2024. After that, with the presence of dignitaries, this tournament is inaugurated, and we are watching the inaugural match, and second over is in progress. Outside on leg stump, while well within the reach of the bat, and umpire Kishore has got enough evidence that ball is definitely within the line, and no chance of any run score, means on 14 without loss of any wicket. Shabit balls again, it's going to be it's going to be a punishable from the umpire, and the ball just missing the line, going outside the line of leg stump, further away. White signal, 15 on the board. So many extras conceded by the bowlers. Again, the ball is this time okay. The ball just passing around the legs of the bat, and the wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Good comeback here by the bowler. Shabit bowled 3 deliveries so far at 1 wide, that means 2 legal deliveries, 5 deliveries, and 1 wide delivery means 15 on the board. Sabit, right arm over the wicket bounce. Just and again that will going to miss everyone, wicketkeeper and the shot, fine leg fielder also, and it's going to be 1+1, 2 wides, with that 2 wide scope and moves on to 17 on the board. A lot of extras conceded, and this is what the discipline is much required for the bowler, and what is lacking here from the bowler. Sabit again balls lofted, not misfield there by the fielder. Ball running out to deep long off region. The ball will go and cut it off just inside the boundary line. The fielder from deep long on to run towards a deep long off region, straight long off region. Ample time for the batter to complete that couple of runs. With that run score moves on to 18 on the board, and that brings Riaz into strike now. Riaz going for the expansive drive, didn't got enough timing in that stroke, so just wicketkeeper just charging to the ball, denying the runs from this batter. 18 for the loss of 1 wicket in the over. Number 2 is in progress. Right arm over the wicket bounce. Again, that's going to be punishable for the umpire. What we are talking about, the discipline is much required for the bowler, but we can see that a lot of extras conceded in this over number 2 as well. And 19, which is the total score on the board, the good score for Zara 11. Sabit balls, this one batsman drives at one, lack of placement, ball went to short mid wicket region right side, a bit of fumble from the fielder. What could be a certain single because of that misfield. Now we're looking for the third for the overthrow. Everything is going wrong here for the fielding team. What could be a certain single because of that misfield there by the fielder, and they got opportunity to complete it. 3 valuable. They're going for the 4th. My goodness, it's absolutely unnecessary. And just number 28, the batter, Riaz might be the Riaz or Irfan. Umpire have to decide which batter is going to be a run out, and Irfan is the batter is going to be a run out. So whichever the batter very close to that stumps, which is the stumps hit by the fielders, that batter will going to be out as per the rules and regulations. So that Irfan is the batter walking towards the mid pavilion. Second wicket is back into pavilion. Nothing much worried about the wicket, but they lost. They got runs what they really wanted in this power play. 22 on the board. 22 for the loss of 2 wickets back into pavilion.
So good morning everyone, this is your Sachin Salian and Mr. Gopi, first time coming to this place which is called as MULARAPATNA, and one of the most beautiful cricket ground which is surrounded by the beauty of the nature. Just behind this cricket ground we are seeing that the holy river is passing, and of course the greenery which is surrounded in this particular cricket ground. Altogether perfect condition here, maybe a little bit hot condition, but was typical condition, the weather condition here, quite a bit of hotter than it's more maybe the 31 to 32 degrees Celsius in the morning, and seems to be a good atmosphere out here created for this MPL season 4. So one more expensive over which is comes in end of Shabit, and 2 overs gone after completion of over number 2, searching for the right track. Team definitely is DAY-01 is in the right track of getting a huge score here. They are 22 on the board for the loss of 2 wickets. They go exactly 11 runs per over. Munif is the new batter in as replacing the place of Irfan. So third over going to start. A lot of hard work is required from the bowlers of Star Emirates. 2 expensive over, 22. So bowler Shamsuddin will going to continue one more ball first over with the expensive 14 runs, but captain has got a faith in his bowling, so he's asked him to bowl the second over. The young talented bowler Shamsuddin is bowling his second over of his quota and third over of the innings of team DAY-01. Just I want to say this is a field set. Wicket keeper standing well behind the stump, short third man. There is a fielder at deep cover point, deep extra cover, long off, short extra cover. That is offside field. This time top edge, but ball will go to land it safely into the declared area. Just we need to wait for the umpire signal. Just a single here, and with that single score the numbers are to 23 on the board. Not that much of huge opportunity to score the runs behind the wicket as for the dimension of this cricket ground is concerned, but in front of wicket, square of the wicket, yes, you can get some boundaries and sixes. Shamsuddin. Left arm over wicket, lofted. What you're talking about, the square of the wicket, you get the distance, but here is a face to get the distance as they are looking for the huge stroke down to deep square leg region. Between deep square leg and deep mid wicket, might be that ball is landed safely to the fielder at deep square leg, and just wanted to say that against the direction of the wind, the batter wanted to hit that ball and pays the penalty for that. Third wicket is back into pavilion of DAY-01. Riaz back into pavilion after scoring some important runs from his bat, and he just wanted to get to clear that fielder at deep mid wicket. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with the placement, and he back into pavilion, and the third wicket is back into pavilion of team DAY-01. Lovely delivery indeed from Shamsuddin. Perfect delivery to ball to the first leg, the new batter, but negotiated very well by the batsman, just covering his stump, pushes the ball into the gap. The new batter in is Irshad. He got his first run and scored on the Mozambique 24. Now it's going to be 25, so quarter century coming up here for DAY-01. In the over number 3 is in progress. That what you're talking about, lot of extras which is conceded by Star Emirates bowler. Shamsuddin bowls again. That's going to be one more lot of extra and lot of exercise as well for Dejapur. The morning exercise for him, that bowlers bowling some wide deliveries and warm up, which is much really required, not only for the players but for the umpires as well. And bowler just giving that kind of opportunity for the umpires to get some morning exercise. So score the numbers are 26 here.
left arm. Boss this time so design to score like going for a big single chance of run out there, but Indian on-strikers and it's a little bit slow reaction coming from that square leg fielder, isn't it? The quick throw which is required to get the run out, but the batter is safe in that occasion. He complete the single. With that single, score number moves on to 27 on the board. So Naif wanted to get that one into extra coverage, and again the ball has got outside edge of the bat. Just a single good piece of fielding there by the fielder. With that single, score number moves on to 28 on the board. Over number 3 is in progress. Very good progress here for the team. Zara 11 against team Star Emirates, even though they lost the toss, but what opportunity to bat was field first, but fielding I don't think it's going to be not pretty much of good enough, but a very good over from Shamsuddin compared to his first over. He conceded 14 in the first over, but in this over he's a little bit steady over, and after completion of over number 3 and searching for the right track, the team Zara 11 are 28 on the board, and 28 means it's going to be a very good run rate which they managed to maintain, and just over almost 9.33 runs per over. And before the next over going to start, it's the time to change in community box as well, and it's time for my friend Mr. Gopi to take over the microphone in our national language first time and in this cricket tournament, and first time in this MULARAPATNA. So it's over to Gopi. Welcome Gopi, and good morning to you. And looks like it's a good start which is given by the batters of Star 11, Zara 11 against Star Emirates, and in the similar run rate I think they will manage to get another 28 in the sense of maybe 56 to 60 is a very good score to defend in the morning. Exactly, Fatisha. जैसा कि आपने फरमाया सारे दर्शकों का निकुट में यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला मुलरपटना प्रीमियर लीग 2024 के शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई, जहाँ तक सवाल है पहले मैच का, तो पहला मैच इस वक्त जारी है। गेंद को डीप विकेट पर उछाला, इस वक्त मिड विकेट फील्डर बेहतर कैच लेने में सफल, और इसी के साथ ही विकेट यहाँ पर गिर चुका है। तो बासी तो बल्लेबाज थे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर इस वक्त गेंद को ऑनसाइड पर उछाला जरूर रहा, लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि अपने आगे की ओर 3 से 4 कदम में जरूर आना पड़ा दौड़कर, लेकिन अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए गेंद के नीचे आकर खूबसूरती के साथ इस कैच को बेहतरीन जजमेंट के साथ लपका, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 and loss is off stump. He's just gone for a massive one this time, but he just wanted to play that one with the wrong line, and because of that he paid the penalty for that. और गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए उनके बल्ले को वंचित करते हुए स्टंप पर टकराए, और बेंच वहां पर डिस्टर्ब होते हैं। इसी के साथ ये विकेट नंबर 8 गिर चुका। 42 for the loss of 8 wickets and 5 overs has been Keynstone, and exactly 8.40 the present run rate is now progressing here for them with just a last over to go in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी, देखते हैं बचे हुए अंतिम ओवर में जरा 11 के बल्लेबाज और कितना रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो मैच नंबर 1 का इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट मुलरपटना प्रीमियर लीग सीजन 4 2024 के अंतर्गत इस श्रृंखला का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ दिन धीरे धीरे दोपहर की ओर बढ़ता हुआ लगभग सुबह के 11:40 बज चुके हैं। सूरज जब धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों के इस वक्त छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई ओवर की पहली गेंद को खेल दिया। इस वक्त एक्स्ट्रा कमर पर तेजी के साथ उनके लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइक रेट पर थ्रो होता, और लेकिन थ्रो को कितना से गेंद नहीं करता ओवर तो लेकिन ओवर के रूप में बल्लेबाज को दूसरा रन यहाँ पर नहीं मिला, और एक रन के साथ ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 पर 7 विकेट के नुकसान पर 43 for the loss of 7 wickets with just 5 balls left in overall calculation in the innings। और गेंदबाज साबित इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार हुआ। दाईं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज साबित की ओर की अगली गेंद का गेंद मैक्सिम से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद लगभग नारियल के पेड़ पर टकराने के बाद शॉर्ट फाइनल पर जब तक विकेट कीपर द्वारा फील्ड हो 1 रन का इजाफा सिर्फ बाई के रूप में, और बाई के स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 पर 8 विकेट के नुकसान पर।
और गेंदबाज साबित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है। ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त गेंद को मिड विकेट पर फील्डर दौड़ कर डीप मिड विकेट से, लेकिन नॉट मोर देन अ सिंगल, सिर्फ एक मात्र रन उनके टीम के खाते में जुड़ता हुआ एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। बुलबुला कर 45 रनों पर 45 for the loss of 8 wicket with just 3 balls left in overall calculation in the innings। अंपायर इस वक्त कुछ कहते हुए शायद नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज से और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त उनके जूतों के बारे में, शायद उन्होंने कुछ कहा था और बल्लेबाज इस वक्त अपने the star Emirates Tanda move over end of the third over, total moves into 15 on the scoreboard, loss of 3 wicket। ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಸತೀಶ್ ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದೆ। ಆಗ ಸತೀಶ್ ಸಾರು ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ। ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸಾರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್। So thank you very much, Tamim, for your wonderful inspirational word, because nevertheless we are not going to neglect, because you are the one, you are the family member of our South Canada district commentator group. So no way an invitation coming from your way, I need to respect that your invitation, and it's going to be a great privilege and honor for us to coming here, because with that we are getting kind of welcome as well as hospitality. It's going to be a very good to see, and it's going to be a great experience coming here in this prestigious MULARAPATNA cricket stadium for this prestigious MPL 2024. And first ball of the over number 4, and that was a batsman wanted to get that one into deep square leg region, but not quite getting that one from middle of the bat, but good enough for him to get the single there and score was on to 16 on the board. So Riaz will go into ball again, right arm over the wicket from Vision India, and he will go into ball right arm over the wicket to the right-hander batsman Sinan. Round the wicket, balls, nothing much to do with the delivery. The batsman just shouldering his arm, left the ball into the hand of the wicketkeeper. Wicketkeeper fails to collect the ball, but umpire not fails to give the decision here in the form of wide. So 1 plus 1, 2 more to the total with the addition of the 2 extras. Scuba Namuzan to 18 on the board. It's a long way to go as far as chasing this run is concerned. Definitely the team star Emirates needed some explosive cricketing stroke if they wanted to back in the game. Otherwise very difficult for them to win this match. Quite a different condition is compared to the condition in the morning. We are just feeling a lot of hot condition out here, and this probably because of this was a ground which is situated near to that river side, as well as the wind which is not flowing in the ground. That's the main the big reason that humidity is too high, and not an easy condition for the players, but players are very much settle for this condition, isn't it? Not like that they are going to tired quickly, because they are regularly playing in this condition, so no way that they are getting tired for this condition. And one more delivery which is going outside the line of leg stump. Each and every dot ball will going to create the problem for Emirates to get the runs, so they need to get each and every deliveries into scoring one if they wanted to win the match. Score remains on 19 on the board for the loss of 3 wickets. Right arm around the wicket, again lovely delivery beaten by the pace, but ball is just having leg before the wicket, so that not the leg before wicket in the sense ball pitching outside the line of leg stump, and umpire rightly so Kishore has got no hesitation to call that leg by. With that leg by, score moves on to 20 on the board. Just we are talking about the difference between these two teams is that the discipline in the bowling performance. So many wide deliveries and extras conceded by the team star Emirates, and yes, coming back to the Zara 11, they are a little bit
tidy in their line and length is concerned. Of course, they've considered some extras, but not more than their opposition. One more good delivery, which is pitches outside the line of leg stump. Batsman fails to take the advantage of that one, and last delivery of the over. It's going to be punishable. What we're talking about, the difference between the two teams, Zara 11 as well as Star Emirates, the number of extras now. Even Zara 11 also just following their opposition team. This time, what a shot! That will go into a chance here for the fielder because of some disturbance in the ground. We can see that coconut tree, which is down at square leg region, ball just hitting the branches of that coconut tree. Otherwise, definitely the opportunity of catch, or the ball will go into travel out of the ground line. But fortunately for the batsman, the ball is just hitting that three there, a couple of runs which is taken in between, and after completion of over number 4 is 23 on the board. 66 which is the target, 56 which is the target, and 23 is the score, and a long way to go, and that means another 33 more runs required for the victory in remaining 2 overs, and asking run rate is slight a bit of problems, 16.5 runs per over, the required run rate if they wanted to win the match. We're just talking about from morning itself, and we are seeing Shakir, the one of the MC who are doing the job, is doing a right job from the morning itself, is announcing, talking about this cricket tournament, and a lot of hard work which is from this time he lofted that one. That's going to be a chance here for the fielder or not. Oh, lovely save there by the fielder. Absolutely good save. What could be a certain six? The fielder in the deep long on absolutely got a fantastic job to put the ball into the playing area by having a side very good jump. Team. ರೀಪ್ಲೇ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ. So now I think it's ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅವಕಾಶವಿದೆ, ತೀರ್ಪುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ. Right, I'm over the wicket. Thank you very much. Yes, yeah, we're just a little bit having a technical issue in the first match, but now I think everything is clear now, so that umpire can ask for a review if there is again going for the outside and on a flex stump. They're going to be a chance here for the run out, and umpire says it's now they are asking for the third umpire for the run out. So we are having a live telecast of this cricket tournament, one of the most popular live telecast YouTube channel, King Sports. Nowadays they are spreading their wings with their some good quality coverages and with a very good technique and quality, and so that they are leading now YouTube channel as far as sports is concerned, the games and sports are concerned, especially for the cricket. Of course, more than 4 to 5 places they are having live telecast of this cricket tournament. This is the one, the MPL, MULARAPATNA Premier League season 4, and addition which is coming from the third umpire. It's addition white +1, 2 more to the total. With the addition of that, a couple of runs, Skobar moves on to 27 on the board. 27 means another 29 more runs required for the victory. If you go to the history of cricket and get so many examples, not even 21, but more than in 1 hour they got 29 runs, and that is the tournament which is held at last 3 weeks back at Sulia, and where Ashraf is more than 29 runs in the 1 hour. One more dotted delivery, and scoreboard numbers on to 27 on the board. But not that that kind of scenario you cannot get regularly in cricket, but sometime it's happening. And again, lovely delivery, beautifully bowled there by the bowler. Slide a bit of outside the line of off-time batsman just to try to get that one then down into offside region, misses the line complete, then wicketkeeper behind the stump, beautifully collected, and back to bowler. Last time in this over, 7 ball remaining, 29 more runs required for the victory. The things are looking tougher and stiffer.
It's going to be a wide, one more wide. With that extra score, but now moves on to 28. On the board. So 28 more runs required for the victory. Again, it's going to be a one more wide. They're going for the single chance of run out. It's a suicider. And the wide call by umpire. The batsman have to back to pavilion in the form of run out. And with that one more wicket, it looks like another 8 balls remaining. Unesh is a batsman, is back into pavilion. Shamsuddin is a new batter in, is a good all-rounder for the side. But here is some big innings which is badly required for the team Emirates. Bashita balls again, driven that one right in the gap towards the wideish long on before the fielder from deep long on to run across his right. The ample time for the batter to complete the single, and with that single scope and moves on to 30 on the board. Sinan is the batter, came as an opener for the style, still is hanging there in the middle, but without getting a big stroke is very difficult to win this match. Last over remaining, 26 required for the victory. The last opportunity for the batters of team Star Emirates to get the victory runs. This seems to be very difficult but not impossible. And just talking about that the ISRI, that tournament which is organized at Guttigar Veera Maruti Trophy 2024, and Ashraf, one who picked up 29 runs. It's not the big thing of getting a 29, but big thing is that after when they required 19 runs in 2 balls, and it's an unbelievable victory. Everyone thought it's going to be all over, but Bower bowled a no ball, batsman hits a 6, then 2 balls still required, and Ashraf hit 2 sixes and finished the match. This is what the kind of history will going to encourage the present, isn't it? The history will going to encourage the present. And the present, if you manage to convert that present into yes, in positively, then you can make another history. Why we the commentators are goes on giving that 5 examples of the history, because the batter will going to get some kind of confidence that yes, match is still in the hands. And he can try for the victory. Right arm over the wicket. Coming down to that. What you are talking about? What we talking about? This is absolutely a glorious cricketing stroke coming from the blade of Sinan. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೀನ ದಲಿತರ ಆಶಾ ಕಿರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಡವಾಗಿ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ MPL ಮುಲ್ಲಾರಪಟ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮುಲ್ಲಾರಪಟ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ MPL ಸೀಸನ್ 4 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾದಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್, ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಒಬ್ಬರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದರೂ ನಮಗೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಮನೋಭಾವವುಳ್ಳ ಅವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರರು, ಬಡವರ ಬಂಧು, ದೀನ ದಲಿತರ ಆಶಾಕಿರಣ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ ರೈ ಇವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ MPL ಮುಲ್ಲಾರಪಟ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ
ಬೇಬಿ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಬಿ ಸದಸ್ಯರು ಅರಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಜೋರ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಇವರಿಗೆ ಅಶ್ರಫ್ ಎಂಬಿ ಸದಸ್ಯರು ಅರಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮೊಮೆಂಟವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಇನ್ನೋರ್ವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಇವರಿಗೆ ಜಬ್ಬರ್ ಮುಲಾರಪಟ್ನ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಬೇಬಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೀಡಿದಂತ ಜಬ್ಬರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಜೋರ ಇವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3-12 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಗರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಾನ್ ಇವರು 2,000 ನಗದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಇವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು. So 12 runs required from last 3 balls. It's going to be a very interesting match, and it's going to be decided on delivery. Right, Amartya coming down to track using his speed, but the ball is just carrying to the fielder. Absolutely everyone thought it might be the opportunity for the batsman to get the distance, but unfortunately ball just carried to the fielder at deep long on. One more wicket is back into pavilion. Now 2 balls remaining, 12 runs required for the victory. That means 2 sixes which will go into finish the match for Team Emirates, Star Emirates. The new batter will coming to the middle, and 2 sixes which is required. Just very interesting to see that the 12 which is the jersey number of that batter which is coming to the bat, and it is the same number of runs which is required for the victory. And it's going to be memorable for him if he manages to get 2 sixes in 2 deliveries. Then we're going to justify the jersey number what is worth for his team. And now it's going to be decided delivery. Final opportunity for the batsman to get 2 sixes in 2 deliveries. Right arm over wicket. Going to be a punishable not from the batter but from the umpire. That means still there is opportunity. 11 required for the victory. 10 for the tie. 1 boundary and 1 6 will go into tie the match. And 2 sixes will go into give the victory for Star Emirates. The bowler is under pressure. Batsman don't think he will not going to feel the pressure because he had to do, and it's going to be do or die situation. Right arm over the wicket, using his feet, lofted at one, and it's going to be, oh my goodness, can you believe this? Oh, this is certain 6 I want to say. The fielder is saving that 6. Unbelievable attempt. What my friend Gopi is just talking about. In this particular matches, we are witnessing some unbelievable fielding performance. Unbelievable. It's not lesser than the international level, isn't it? You can see the kind of savings in international level, but now because of that fielder which has saved that 6, now things looks difficult. Now umpire Kishore just asking for the third umpire to see that whether the fielder is saved the 6 or not. Whether it's going to be a clean save or not, that's what umpire, I have to see the third umpire because this is going to be very crucial. If it is a 6, then 5 required from the last ball. If it is a not 6, I think it's all over. And it's saved. Yes, it's saved. Yes, the rightly saved. That means very good save by the fielder. And now last delivery remaining. The needed 10 runs. 10 required for the victory. Unless bowler will go into make any stupidity of bowling wides and no balls, then no one can stop the victory from for Zahra. So last ball, 10 required for the victory. Looks like just a formality is left in the game. Yes, he's lofted, but I think they will not going to go for the single because they know that single will not going to help. So congratulations, Zahra. At last they managed to win the match, but it really
total marks goes to the fielder, one who was saving 2 sixes in this particular match and winning the match against for the Zahra 11. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ದೀನದಲಿತರ ಆಶಾ ಕಿರಣ, ಬಡವರ ಬಂಧು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತ, ನಮ್ಮೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಸಕರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರು ಮಾಜಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ಇವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ 2 ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಲಾರಪಟ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಬಾಹುಳ್ಯದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಅವರೇ, MD ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರೇ, ಸುರೇಶ್ ಜೋರರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಒಂದು ರಸಗಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ ಆಟ ಬಹುಶಃ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತೂ ನಾನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ನಾವು MLA ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕೇವಲ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಭಿರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಪಂದ್ಯ, ನಾವು ಹುಡುಗರು, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಅಜ್ಜಿಯ ಅಂತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ದುರಭ್ಯಾಸದಿಂದ ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹುಚ್ಚು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕ ಜನ ನಾವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತೀಯವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತೀವಿ. ಆಟ ಆಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೂಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇಶ. ಅನೇಕ ಜಾತಿ, ಅನೇಕ ಧರ್ಮ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆ ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಭಾರತ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸುಂದರ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಸುಂದರ ಭಾರತ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಭಾರತ ಸುಂದರ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆಯವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡೆ. ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ? ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದೇ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳ್ತಾ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಇದೇ ಜಾತಿಯವನಾಗಿ, ಇದೇ ಧರ್ಮದವನಾಗಿ, ಇದೇ ಭಾಷೆಯವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಭಾಷೆ ಜಾತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ದ್ವೇಷ ಭಾರತ ಜೋಡೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೋಡು ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಜೋಡಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಮನಸ್ಸುಗಳು ದೂರ ಆಗಿದೆ, ಮನಸ್ಸುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತ ಜಹೀರುದ್ದೀನ್ ಜರಾ 11 ತಂಡದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಜಹೀರುದ್ದೀನ್ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮಾನಾಥ್ ರೈ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಜಹೀರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬೇಬಿ ಕುಂದರ್ ಸರ್. ಮೂಲರಪಟ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲರಪಟ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೀಗ್ 4 ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. Fails to ball some good overs, but they have managed to get the wickets. This is what the big problem here for Azad Lions are. They got runs, but lost 5 wickets. Fayaz is still there in the middle, and wait and see how Hakim will going to give some kind of support from other end. 3 overs completed after completion of over number 3. It's 21. That means they're going exactly 7 runs per over, and wait and see how many runs they will going to score in the remaining 3 overs. And for that remaining 3 overs, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in Hindi. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो एक और विकेट यहाँ पर गिर चुका है और यहाँ तक का स्कोर है इस वक्त 21 रन 6 विकेट के नुकसान पर। It's 21 for the loss of 6 wicket at the start of the 4th over. Alif Star looking in trouble after being a slow start. They are still they are progressing quite difficultly. 21 runs scored. 21 for the loss of 6 wickets at the start of the 4th over. Still in overall calculation, it's going to be 17 balls remaining in their innings. And now the new batsman is now comes out to the middle. और गेंदबाज अगली गेंद इस वक्त ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद पहुंची इस वक्त शॉट बैन पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर 6 wicket के नुकसान पर। 22 for the loss of 6 wicket at the start of the 4th over. In fact, और गेंदबाज अल्फाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त फयाज, जो कि इस वक्त बेहतर बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इस बार गेंद को उछाला है लंबों पर, फील्डर गेंद के नीचे आ नहीं सकते हैं। गेंद सीमा रेखा को इस वक्त पार कर चुकी है 6 रनों के लिए।
और गेंद को इस वक्त उछाला था, जीतों ने कोशिश जरूर की थी, लंगोन पर जो फील्डर मौजूद थे अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए गेंद को अंदर की ओर ढकेलना चाहा, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद सफलता उनके पक्ष में नहीं आई और गेंद उनको बीट करते हुए सीधे लंगोन सीमा रेखा को पार कर गई छक्के के लिए। तो इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर, छक्का नंबर 2 इस वक्त लग चुका है फयाज के बल्ले से। स्कोरबोर्ड इज नाउ जंपिंग अप टू 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 wickets and a fantastic struck came from the bat of Fayaz. 6 number 2 came from his bat. और एक बार फिर से वो सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद एक बार फिर से गेंद को उछाला, लंबन की दिशा में गेंद जाती हुई फील्डर गेंद को रोका जाता, जब तक गेंद को सीमा रेखा के अंदर एक बेहतर फील्डिंग के जरिए ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। कोई बैकअप नहीं था वहां पर, काफी वाइड थ्रो, गेंदबाज के पहुंच से बाहर जब तक गेंद को बैकअप किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स आर एट टू टोटल इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। इस 30 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट और फयाज एक बेहतर बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए 2 छक्कों की मदद से 17 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी वो करते हुए और निस्संदेह एक मुख्य सूत्रधार की भूमिका वो अदा करते हैं। बेहतर गेंद इस वक्त एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्ट्रेट लाइन, विकेट कीपर की अपील इस वक्त जारी है, लेकिन किसके लिए पता नहीं लगा और सब कुछ यहाँ पर सुरक्षित है बल्लेबाज के लिए। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, अल्फाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फयाज के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लंबों पर लंबों सीमा रेखा से बाहर। 6 number 2 in this over. So Fayaz looking on fire. और तीसरा छक्का उनके बल्ले से लग चुका है। इस बार ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड लॉफ्टेड दैट वन इन अ स्टाइल लोअर लॉन्ग ऑफेंस फॉर अ मैसिव वन। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर 36 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 15 रन्स ऑलरेडी स्कोर्ड इन दिस ओवर। ತೀರ್ಪುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. So 36 for the loss of 6 wickets and what a fantastic over came in Arif Star's point of view, especially from Fayaz who hit 2 sixes in this over. 15 runs came from this over and because 2 sixes hit in this over, in overall he hit 3 sixes. Okay, and now the scoreboard stays at 36 for the loss of 6 wicket and now just 2 overs left in overall calculation and there is 2 ओवर का खेल बाकी है और फयाज के बल्ले से 2 छक्का पिछले ओवर में लग चुका है। कुल मिलाकर 3 छक्का वो अब तक जड़ चुके हैं और उनके इस बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत इस वक्त आरंभिक आघातों से खासकर इस ओवर में काफी हद तक संभल चुका है अनिल स्टार। कुल मिलाकर स्कोर है इस वक्त 36 रन, 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में यहाँ पर उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। Alif Star 46 for the loss of 6 wicket after completion of 4 overs. 5th over starts in the next 5वां ओवर शुरू होता हुआ और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, गेंद इस वक्त पहुंचती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर और सिर्फ बाई का इशारा और बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 37 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 37 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 11 बॉल्स रिमेनिंग, 11 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो गेंदबाज सज्जद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ रन द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद better again, absolutely fantastic one, extra quicker, not so missing 2 for Saadi of stop, विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं करता जब तक गेंद को शॉर्ट थर्ड बैन पर फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। It's 38 for the loss of 6 wickets in the over number 5 in progress। और जहाँ तक स्ट्राइक पर सवाल है इस वक्त तुफैल इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और सज्जद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज 4 से 5 कदम उनका रनअप दाहिने हाथ ऊपर द विकेट राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, डीप विकेट पर गेंद पहुंची, वहां पर बेहतर फील्डिंग, गेंद को फील्ड किया लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में जब तक गेंद को थोड़े छल बढ़ाने के बाद वो फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का और ओवर थ्रो हुआ था जरूर लेकिन बैकअप होता हुआ इस वक्त शॉट एक्स्ट्रा कवर पर 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ चुके हैं। विद दैट कपल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 39 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 40 in fact for the loss of 40 the score now for the loss of 6 wickets in the over number
6 in progress और गेंदबाज सज्जद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए फाइन लेग सीमा रेखा को गेंद पार कर चुके हैं। 1+1 2 runs in fact added to the total and with that couple of runs the scoreboard moving up to 42 for the loss of 42 for the loss of 42 for the loss of 6 wickets in the over number. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಕೂತು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ರಿಪಾಜ್ರವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಕೂತು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಚಣೆ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. नेक्स्ट वन इस बार गेंद को खेला शॉर्ट में विकेट पर रन बल्लेबाज को मिलेगा एक सप्ताह, लेकिन शॉर्ट में विकेट फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर विकेट झटका बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 43 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो सज्जद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फयाज जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं। शीट एंकर्स रोल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मुख्य सूत्रधार की भूमिका इस वक्त अदा करते हुए फयाज 17 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सज्जद की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर अगली गेंद लेकर सज्जद काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए सज्जद गेंदबाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज फयाज इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त फील्ड क्लियर करते हुए कवर पॉइंट सीमा रेखा को गेंद बाहर नहीं जी नहीं अंदर बेहतरीन तरीके से गेंद को ढकेल चुके हैं इस वक्त फील्डर बेहतरीन फील्डिंग के जरिए। काफी लंबा दौर जरूर उन्होंने लगाई लेकिन हालांकि खुद सीमा रेखा से बाहर चले गए लेकिन गेंद को सीमा रेखा के अंदर ढकेलने में सफल खूबसूरती के साथ इस बीच 2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। फैंटास्टिक स्ट्राइक विद अ ट्विस्टेड बैट हिट बाय फयाज एंड बिकॉज ऑफ दैट इज गॉट अ कपल ऑफ रन्स फॉर दैट स्ट्रोक और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रनों पर। 5th ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड एंड 9 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर। 5 overs completed, 45 on the board, and fantastic comeback made by the batsmen of Alif Star after being scoring 21 in the first 3 overs. They added 25 in the next second, and this is an absolutely fantastic comeback after being a slower start made by the batsmen of Alif Star. So last over remaining, अंतिम ओवर का खेल बाकी और गेंदबाज अराफा इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तुफैल में सामना करने के लिए इस वक्त तैयार है। तुफैल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ आलिफ स्टार क्रिकेटर्स की पारी में 45 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। पहली गेंद 2 फॉर स्लाइटली ऑफ स्टंप और गेंद इस वक्त पेड़ पर टकराने के बाद वापस विकेट कीपर के हाथों में आते हुए वाइड का इशारा 1 रन का इजाफा। 46 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th एंड द लास्ट ओवर इन फैक्ट इन देयर इनिंग्स। और राफा इस वक्त अगली गेंद है। ये गेंद बेहतर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन मच स्ट्रेट लाइन गेंद को आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहता गेंद पर चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 46 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदें इस वक्त बाकी। मैच नंबर 2 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ मुल्लरपटना प्रीमियर लीग सीजन 4 2024 के अंतर्गत ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा अपने एक हाथ से गेंद को कलेक्ट कर लिया इस वक्त विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे, लेकिन वाइड का इशारा हो चुका है। वाइड के स्ट्रोक के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 47 रनों पर। 47 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज अराफा इस वक्त राउंड द विकेट का गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लंबा सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Fantastic struck came from the right of the right-handed batsman. ऐसा कहना पड़ेगा, just stand and delivered, and he just got that one right from the middle of the bat. और छक्का इस वक्त जुड़ चुका है। इस छक्के के साथ the 50 comes up for Alif Star, and they are heading towards a huge total now. और इस बार छक्का तुफैल के बल्ले से लगता हुआ और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 53 रनों पर। 53 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। और निस्संदेह धीमी शुरुआत के बाद एक बेहतर स्कोर की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ बढ़ता हुआ आलिफ स्टार। और कुल मिलाकर 4 गेंदें बाकी उनकी पारी में। Still 4 balls left in their innings in overall calculation. अगली गेंद ये गेंद तुफैल के लिए धीमी गेंद पुल किया इस वक्त स्कोर ऑफ विकेट और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर। Consecutive 6
sixes for Tuhail. And now he is now looking on the fire in the last over of their innings. The scoreboard is now jumping up to 59 with that 6. इस बार बल्लेबाज के पास काफी समय था कि गेंद को इस वक्त हम साइड पर पुल कर सके. ऐसा कहना पड़ेगा, just waiting to the ball to come on to his bat at the last moment. Throwing, getting right from the middle of the bat, he just pulled that one down to deep back of the square leg fence for a huge one. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ CR7 ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಸಾಜಿದ್ ಅಂಡ್ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ರಫೀಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಗೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ CR7. ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. धन्यवाद. तो the scoreboard is now moving to 60 now. Next one is ball, just gone for a big one, not succeeded. Again this वक्त पहुंचे short fine leg पर no contact between the bat and ball by declared by umpire. Single run added to the total, and now with that single run the side total is now moving up to 61 now. और कुल मिलाकर इस वक्त गेंदे बाकी है 2 उनकी पारी में. Just 2 balls left in overall calculation in their innings. गेंदबाज रफा गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और फयाज सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ फैंटास्टिक इनिंग्स केम टू एंड फ्रॉम फयाज. इस बार गेंद को उछाला था, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर इस कैच को बाखूबी यहाँ पर लपक लिया गया डीप मिड विकेट फील्डर द्वारा. तो फयाज की बेहतरीन पारी पर पर्दा गिर चुका है. He's out for 19 after being scoring 19 runs. He is back into pavilion, and the wicket lost number 7 for Alif Star. It's 61 now. One ball left in the innings, and the last ball of the innings is now coming up. Zayed इस वक्त क्रीज की ओर कदम बढ़ाते हुए उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार है. और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम गेंद पर जायद किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं. गेंदबाज इस वक्त तैयार है. ये गेंद इस बार गेंद को छोड़ दिया, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए वाइड का इशारा. 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 63 रनों पर. 63 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स. और अभी भी अंतिम गेंद बाकी उनके ओवर का, और गेंदबाज रफा गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. इस बार loves it, and this time I think it got the distance. Yes, it does. And he just finished the innings in a style with a 6. So the innings is up, and a fantastic struck came from the bat of Tufail. 6 number 2 came from him, and the innings is up, and Tufail just finished the innings with a style with a 6. And 69 the score scored by Alif Star. 69, and a fantastic comeback made by the batsmen of Alif Star in the second half of their innings. After the end of 3 overs, they managed to score only 21 runs on the board, and after that they come back fantastically in the next 3 overs, managed to score 48 runs in the last 3 overs, and because of that they finished very well with 69 for the loss of 7 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a victory target of exactly 74 Azad Lions in 6 overs. ಸಂಘಟಕರು ತೀರ್ಪುದಾರರಿಗೆ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸಂಘಟಕರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. CR7 ಕಪ್ತಾನ್ ಹಾಗೂ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರಿಗೆ ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ತಂಡಗಳು ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದೆ. MFC ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುಲಾರಪಟ್ನ, ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಜಾದ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಜಾದ್ ನಗರ. So exactly 70 the target in 6 overs, and as far as the required run rate is concerned 11.66 runs per over they have to score for victory. ठीक 70 रनों की दरकार इस वक्त आलिफ स्टार को उनके निर्धारित 6 ओवर में, और देखते हैं वो इस 70 रनों के लंबे से लक्ष्य तक वो पहुंच पाते हैं या नहीं. फिलहाल इस वक्त आजाद लायंस की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर आजाद लायंस की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. हल
ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮ್ಲಾನ್ ಒಬ್ಬರು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕ, ಇವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ತಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಶ್ರಫ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಜಾದ್ ನಗರ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸಾರ್, ಖ್ಯಾತ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತವರು, ಆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸಾರ್ ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Thank you so much, Gopu, and thank you very much, Shakir sir, for your wonderful master of ceremony, and so far you did a great job. And in other end, it's very important for the success of any cricket tournament, and coordination and the combination is very important. And just we are talking about this match. After that, been a slow start. Lions are looking in deep trouble in first 3 overs, but after that 3 overs, the one big lion called Fayaz started to roar with a big sound, and he's scoring some big runs from his bat, and very good support coming from Tawfiq, I think, in the Tofel, and of course Tofel is definitely played one more very good innings along with the Fayaz, and 2 Lions they rolled in that last 3 overs, so that they managed to score 69 valuable runs, and they set a target of 70 to win this match. So when I hand over the microphone to Gopi, it's 21, and after that when Gopi is handovering microphone to me, the score has become 69. That shows that how the Lions, Azad Lions, are managed to bat in the remaining 3 overs. It's been outstanding. And now 70 is going to be a target, and seems to be a little bit difficult one, but not impossible. So here is announcement today for the chasing team, Alif Star. Every 6s, there will be 1,000 rupees. That is only for Sawad. That's 1,000 rupees for every 6s. And that's going to be encouragement here for the batter. And I don't know who, the donor's name, but one of the supporter, Sinan. This time, it's going to be 1,000 rupees. Wait and see. No, it's a catch. Oh my goodness. Sawad, after just hearing that announcement of rupees 1,000 for every 6, in the very first ball he wanted to go for the big shot, but something wrong with that shot selection. He's just choosing one of the fielder out of the 2. It's always going to be disaster for any fielder, any batter, when you're getting a fielder out of 2, because if the power play is on, only 2 fielders outside the circle, and you need to see where the fielder is. Now umpire asking for the third umpire. The no ball, which is going to be the overstep, I think umpire just asking for. Yes. Whether the bowler is overstepped or not, it's maybe the question asked by the non-striker batter. So which is review from the batter, the non-striker may be asking for that review for the no ball, whether it is going to be overstep or not, and umpire Ashok straight away, Kishore Riddipikrishnan straight away asking for the third umpire to see whether the bat bowler is bowled a no ball or not, and it's going to be very interesting. And yes, coming back to this cricket tournament, and for the latecomers, you are watching a match number
2 of the day number 1 of this prestigious MPL and MULARAPATNA Premier League 2024, which is proudly organized by MULARAPATNA friends in this very good cricket stadium. And so far there's a very good cricket is going on. We are witnessing some outstanding fielding performance, especially the one of the highlight of this day number 1, some outstanding fielding. One good catch has been taken and 2-3 sixes which is saved in the deep long on and long off region, and altogether some explosive batting performance, some mesmerizing batting performance in this particular innings of Lions, especially the Fayaz is hitting some big shots. And now third umpire is called it's a no ball. So lucky escape here for Sawat. Chance is still for him to get some runs for his team, and more than anything else, every sixes for him 1,000 rupees. Sinan MB is the announcer, is the one who announced that 1,000 rupees for every six for Sawat. Unlucky, Hakim will go into ball that free hit delivery for that no ball. The free hit delivery for batter. It's going to be a delivery which is called as a wide, 1+1, 2 more to the total. Hakim will go into ball that again, because he need to re-ball that one because of that wide. The free hit will going to continue. And Shafi has got opportunity to go for the free hit delivery because of that wide delivery from Shafi. 1 no ball, 1 wide, altogether runs are coming here, 3 on the board. Shafi tries that one straight down the ground, down to deep long on, good piece of fielding there by the fielder, absolutely good one. Almost is running from the deep long on to straight deep long off region to cut it off. Excellent piece of fielding there by the fielder. Another no ball, and again the bowler really feeling some pressure as far as run-up is concerned. He couldn't manage to get his front foot inside the line, the front line, and the scoreboard is now 5 on the board. So 5 on the board, and a very hot sunny afternoon, and absolutely the condition of the game is more hotter than the condition of the weather, and because of that target which is set by Azad Lions for Ali Star, it's a 70, the huge total they need to get, and it seems to be difficult one but not impossible in cricket. Hakim to continue, the free hit delivery will go into continue. Again going to be a wide, one more wide, absolutely he's struggling Hakim to get his line and length. Once he gets the line and length, he bowls no ball. Once he gets a right ball, he bowls wide outside and on a flex stump. It's 6 on the board. Lovely delivery, beautifully bowled there by Hakim. This is the line you need to bowl. A slight bit of ball is getting a deviation of the ball, pitching on the middle stump, slightly going away from the bat of the right-hand batsman Sawad. Wicketkeeper behind the stump did the rest back to bowler. 6 without loss of any wicket. Sawad is on strike. Again they're going for the no ball, one more no ball, one more free hit delivery, and really the Arif Sar is not really bothered about how the runs are coming, but they're definitely going to grab this all opportunity, the opportunity to get that free hit delivery, but so far the batters fails to convert that free hit delivery for a big one, and unless you are not getting the advantage of the free hit delivery, it's very difficult for them to climb the mountain of runs which is set by the Azad Lions as a 70. But these 2 overs is going to be very important over for the chasing team Ali Star. At least they need to get 25 to 30 runs, then gate will go into open for team Ali Star to win this match. ಮುಂಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ CR7 ಅಂಡ್ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. Thank you. One more white plus 1, 2 wides which is
added to total with that addition of that 2 runs scored, moves on to 10 on the board. Is absolutely a prolonged over from Hakim. A lovely delivery, beautifully balled outside the line of off stamp. And Sawad again fails to make a contact with the bat. Try to get that one in the offside region. Again beaten by the pace of the ball and missed it completely. 10 on the board. Another 59 more runs required. 59 means 60 runs. In fact, that target is 70. That means another 60 runs required for the victory. Hakim, right now over the wicket again. That ball goes outside edge of the bat, but the fielder is there in the short third man region. Slip Gordon will go in to field the ball. Quite a difficult time for the fielder at short third man Fayaz. The man is to stop that one, but the dotted delivery there from Hakim. Much required dotted delivery. Even though a lot of extras conceded in this over, but he managed to control the flow of the runs from the bat of the batter. All we can see that the most of the runs which is coming in the form of extras. The match number 2 is in progress. Hakim, back to his bowling mark. Sawat wanted to get one, at least a big shot in this over. Again, that going to be a wide, and wide in the sense is a one more extra, and you need to re-ball again. 11 on the board. Things which is not going very well here for Hakim. Sawat is on strike. Bowling with a short run up. Right arm over the wicket bounce. This time drives it on beautifully down to mid-wicket region. And a very good piece of fielding there by the fielder just for a single there. With that single score, but the moves on to 12 on the board. Absolutely big over. And the big over in the sense, not in the form of runs, but in the form of extras. Still they need to bowl another 2 deliveries in this over. Hakim. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. No ball. One more no ball and score by moves on to 13 on the board. 13 again. No ball means it's a free hit delivery. Shafi this time has got opportunity to ball that free hit delivery. 57 required for the victory. This is a kind of over which is badly required for the chasing team, and 13 already came from this over. This time he lofted, and the fielder will go in to take that one, but no danger of getting out because of that free hit delivery. Again the no ball. Oh my goodness, again the no ball. It looks like Hakim will not going to finish his over today. And it's definitely going to be a headache for the organizer because they're having a shortage of time. But Hakim is bowling a prolonged over, and it's a 15 on the board. 15 and more than 4 or 5 no balls and made more than 4 to 5 wide deliveries. He bowling a over of more than 15 deliveries. And himself is bowling almost 3 overs. This never looks like it's going to be a 6 overs game. It's going to be a 10 overs game. Right arm over the wicket bounce. Driven straight up in the air, and he got oh my goodness, the fielder is there in the deep long arm. He's going to cut it off. This time he's got the fair delivery, and one more single. With that single score, and moves on to 16 on the board. Last delivery remaining in this over. 54 more runs required for the victory, and 31 deliveries remaining. 31, 54 required. 54 required. Again going for the cross-batted stroke, but not quite able to get the timing behind the stroke. Placement is not good enough. And Hakim completes at last. Oh my, relax for the captain of the side. That last Hakim completes his prolonged over. It's absolutely prolonged over, and I don't know how many delivery balls in this over, but he conceded 16 runs. 16 runs which is conceded in this over. 17 runs with correction, and another 53 more runs required for the victory. Last ball dot actually, the 16 which is a little correction, scoreboard is 16. 54 more runs required for the victory.
54 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಂದಿನ 5 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 54 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ವೆಲ್ ಟೀಮ್ Alif Star will going to get. 15 deliveries bowled by Akim the previous, that means almost 2.5 hours, not almost, exactly 2.5 hours. Fayaz is the new bowler, the man who is damaged with the bat now is trying to get damage from the ball, but first ball which is Sawad is not quite controlled cricketing stroke, but good enough for him to get the single. For that, with that single scope and Muzan to 17 on the board. 17 means 53 more runs required for the victory in remaining 29 deliveries. Fayaz, the man who really dominated from the bat, and especially in the last 3 overs of the game of their innings. Fayaz, right arm over wicket bounce. It's going to be punishable from the umpire. Far above southern and off time wicket keeper misses it. Short third-man fielder also missed it, and 1+1, 2 more to the total. These all runs is going to be very crucial. The team Alif Star will going to enjoy these extra runs, extra deliveries. 19 on the board. 51 more runs required for the victory. Fayaz again with a short run up. Ball him, clean him up. Sawad not only lost his offset, but he lost his opportunity to grab 1,000 rupees for every sixes. And I think the announcer Sinan MB will be very happiest man. That is the money which is safe in his pocket. The 1,000 rupees for every sixes. Sawad is a man, is a back into pavilion, couldn't manage to grab the opportunity, and of course, grabbing the opportunity, not only getting 6 but even 1,000 rupees into his pocket. He's back into pavilion. First wicket back into pavilion at a score of exactly 20. 19 on the board, 19, and the 51 more runs required for the victory. Fayaz, absolute man with the golden hand, because the reason that he scored runs from the bat, now he's picking up a very important wicket for his team. The very good all-rounder for the side of Azad Lions. Seems to be the king of Lions, and being leading from the front is getting some runs and bowling some good overs. Afraz is a new batter in. Came into middle with a lot of responsibility in his shoulder. That 51 more runs required for the victory, and Fayaz will going to continue from productions end. Right above wicket, driven that one right in the gap between bowler and short. Bit of good piece of fielding there by the fieldsman, but not good enough to stop the single from the batter. With that single score, and moves on to 20 on the board, and Afraz is off the mark with the single. He's got his first run, first delivery faced, and 20 on the board. That means another exactly 50 required for the victory. What a fantastic cricket tournament is in progress. Absolutely, with a bright sunny afternoon. Lofted handsomely, and one bounce collected by the fielder. Quite unfortunate for the batter, and they're coming back for the second as well. Unfortunate for the batter in the sense, definitely after one ball need to get past that boundary line, but ball is little bit stopped after that ball hitting some part. Maybe there will be a little bit stone is in that part of the ground that a deep long on, the stopping the ball not to cross over to the boundary line, and the fielder from deep long on quickly moving towards his right to stop that boundary, in couple of runs which is conceded. 22 on the board, and 48 more runs required for the victory for team Alif Star. Right arm over wicket Fayaz. Balls again, nothing much said. Oh my goodness, he just misjudging the line of the ball, and the Dejappa is a very experienced umpire. You know exactly ball just within the reach of the bat, and misjudgment by the wicketkeeper behind the stump, and no damage done. 2 more deliveries remaining. That means 26 possible deliveries remaining. In that 26, they need to get another 48 runs to win this match. Last ball remaining. Slight bit of correction in the scoring department. Fayaz, final time in this over. Right arm over the wicket. Bowls to Safi. This time wicket keeper, absolutely fantastic work. Shamir behind the stump in a fraction, just in a blink of eyes, he completed the job, and no question for the batter to regain his
crease. Absolutely good work. Just in a fraction of second he completed a job. Excellent work by Shamir behind the stump, and wicket number 2 which is back into pavilion, the last delivery of the over number 2. So after completion of over number 2, searching for the right track, Alif Star, they managed to score 22 runs by losing 2 wickets. That means they needed another 48 runs to win this match in 4 overs. 48 in the sense, another 12 runs per over, the required 100, and 12 for over, the required 100 for the team Alif Star to win this match. Sajjad is a new batter in. I just got information is that Sajid is the one is from MULARAPATNA, and the MULARAPATNA is produced one of a great striker of the ball, and is home ground, and one is represented for JD Boys Bantwal for more than 6 to 7 years, but he represented for Young Friends Urva as well, and he represents some reputed cricket teams in Mangalore, South Kent district. Sajid. Yes, Hakim will be the bowler. Very interesting that captain still is not lost his faith about the bowler Hakim, even though he bowled 15 deliveries in the first over. But still, it just shows that the level of confidence of the captain and as well as the bowler Hakim. He wanted to correct the mistake. He wanted to correct the mistake what he did in the previous over. This is what you need to do, isn't it? The mistake is common, but learning from the mistake is so important, not only in cricket but in every field. And Hakim just keeping the fielder on a deep long on, deep long off, deep extra cover, the fielder at mid wicket. There is no fielder in a deep square, like quite understandable, very difficult to get the distance. There is a deep square like inside the ring. There is a short extra cover, a short mid off, and a deep extra cover. First ball, wicket keeper fails to collect the ball. Opportunity from out in the non-strikers, and diving effort there from the batter Afraz in the negation to save his wicket from the run out, but they completed a single. So wicketkeeper fails to collect the balls. That means extra. There is a bye. Score by Namoza under 23 on the board. 47 more runs required for the victory in 23 deliveries. Needed some big hitting, isn't it? So far there is no boundary. There is no 6. Without getting that huge strokes, it's very difficult to get that 70 runs, which is a target for Alif Star. Hakim to continue. Down the wicket. Balls outside the run of off time, going to be punishable from the umpire, and with that extra score, but moves on to 24 on the board. Hakim still is trying for the line which is wanted to concentrate, which is on the midland off stump. Right arm round the wicket balls. Again, that's going to be a wicket keeper fails to collect the ball. Batsman going to grab the opportunity to cross off for a single. 1+1, 2 more to the total. What we are talking about, the cricket is all about the best teacher of up and downs. But here, the learning from the mistake, what I am told, that is very important for any bowler. After he bowled a 15 deliveries first over, he stopped really learn from the mistake as he bowls a wide. This time, top edge. But ball will go into landed in the no-man area between extra cover and the deep extra cover. Before the fielder from deep extra cover will go and collect the ball, returns the ball, the opportunity of run out is created, and unfortunately Afraz is the batter, will going to be out in the form of run out. So looking for the third run, but of course there's opportunities created for the third run because of some fumble from the fielder. And unfortunately the batter will go into back into pavilion, and with that couple of runs scored by moves on to 28 on the board, but they lost 2 valuable wickets. So 28 for the loss of 2 wickets. That means another 42 more runs required for the victory. The over number 3 is in progress. Hakim, the problems little bit continues in this match, in this over as well, as he bowled 1-2 wides, and yes, the new batter in is Shafi. Kalandar Shafi, and is a non-striker then, but striker is Sajjad. Lovely delivery, beautifully bowled by Hakim.
And that's why captain wanted to get him to ball in the second over, because he's got some good deliveries. If you see that his first over, there's no big shot coming from his over, but the problem that he bowled some extras. And the captain knows that if he bowled a good line, it's very difficult for the batter to hit the ball. And problem for Hakim is that he's not really getting that line what he really wanted. But in this over, compared to the previous one, it looks like he's a lot more better line and length is maintained. Tomorrow will be the second day of this cricket tournament. Just I heard the news that there will be the day for the legend cricketers. Those who are dominated in the 80s and 90s will got opportunity to come and perform in this beautiful cricket tournament, MPL. Yes, one more very good delivery. 2 balls remaining in this over of Hakim. So runs are very hard to combine in this over. Hakim bowled very tidy line. Again around the wicket he bowls. Beautifully bowled. That was a perfect one. Just ball passing around the legs of the batter, between the legs. The pad and pad, then the wicketkeeper behind the stump did the rest. Good over is in progress. The very good concept by the organizers to bring that all the legend players of 80s and 90s, those who dominated, when there is no live telecast, when there is nothing, technologies, but they performed very well for the team and for the sake of their team. And 1 plus 1, 2 more to the total again. Hakim need to bowl 1 delivery and scoreboard numbers on to 30 on the board. 30 for the loss of 2 wickets. Another 40 runs required. Lovely delivery indeed. The ball deflected from the leg of the batter. Leg by call by umpire. They're looking for the second chance of run out, and wicket keeper fails to gather the throw from the fielder. They completed a couple of runs, and with that couple of runs, Kopanam was under 32 on the board. 33 on the board. That means another 37 more runs required. Yes, 33, 37, yes. 37 more runs required for the victory in remaining 3 overs, and it's going to be a more interesting game of cricket is left here. And yes, now it's time for me to say goodbye from here onwards commentary box, because I have another schedule of having a commentary in Uppinangadi. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಾದಂಥ MPL ಮುಲಾರಪಟ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ಸರ್, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ಬೇಸರ ಪಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೋಪಿ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ದ अपॉर्चुनिटी. धन्यवाद सतीश. तो निसंदेह बेहतरीन नाको निकाल आपने सुनाया, और निसंदेह संगठक यहाँ पर मुल्लारपटना प्रीमियर लीग 2024 संगठकों की ओर से हम आपका आभारी रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम दोनों मिलकर निसंदेह इस श्रृंखला का और भी 4 चांद यहाँ पर लगाएंगे कमेंट्री के जरिए. बहुत बहुत धन्यवाद सतीश. तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त, स्कोर इस वक्त ಹಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಖ್ಯಾತ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಯುವ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಲಾರಪಟ್ನ ಇವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗಿದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟವನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯುವ ವಕೀಲರಾದಂಥ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಮುಲಾರಪಟ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. धन्यवाद सतीश. एक बार फिर से आपको अभिवादन करते हुए, तो यहाँ पर आजाद Lions इस वक्त the struggling time continuing here for Azad Lions. 33 man to score on the board, and this is the over number
4 in progress. तो जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज का, तो बल्लेबाज इस वक्त सपना करने के लिए तैयार है। बैट्समैन स्ट्राइकर सज्जद इस वक्त सज्जद इस वक्त सपना करने के लिए तैयार है। गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फयाज। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त फील्डिंग के नजरिए का, तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। मैच नंबर 2 आज का यहाँ पर प्रगति पर निश्चित रूप से पर ऐसा कहना पड़ेगा एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी। और आशिक का आगमन जो कि हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में, इस वक्त फयाज की गेंदों का बोझ सामना करने के लिए तैयार। और फयाज हमसे पूर्व वाले चोट से इस वक्त दाहिने हाथ उभरता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार है। और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए इस वक्त वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 in progress. So still the batsmen of Hazard Lions are now still फाइटिंग बैक। और जहां तक सवाल इस वक्त चौके और छक्कों का, तो निस्संदेह कुछ चंद चौके और छक्कों की इस वक्त जरूरत है कम बैक करने के लिए। जस्ट कॉल फॉर अ बिग वन एंड दिस टाइम ही लॉस्ट हिज विकेट। The ball gets an extra bounce at the last moment और गेंद सीधे बल्लेबाज के बल्ले को व्यतीत करते हुए मिडल ऑफ स्टंप पर जा टकरा है। और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। सज्जद की पारी समाप्त। तो यहाँ पर सज्जद कुछ हद तक स्ट्रगल कर रहे थे और आखिरकार इस गेंद पर करारा प्रहार खेलने के प्रयास में अपना विकेट इस वक्त गंवा कर पेविलियन वापस लौटते हुए। और यहाँ पर स्कोर 34 रनों पर इस वक्त विकेट गिर चुके हैं कुल मिलाकर 6। 34 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। आजाद लायंस आर नाउ स्ट्रगलिंग out in the middle. In fact, they are 34 for the loss of 6 wicket with the 36 more runs now they have to score for victory. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का, तो हफीज इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और यहाँ पर सपना करने के लिए तैयार गेंदबाज फयाज की गेंदों का। तो फयाज इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर, गेट सम एक्स्ट्रा लाइन राइट लाइन एट द लास्ट मोमेंट एंड went into the hands of wicket keeper after beating the batsman and there is no possibility of any run. Now score इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें इस ओवर में बाकी है। फयाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग आउट के दिशा में, फील्डर गेंद का इंतजार करते हैं। इनफैक्ट लुकिंग फॉर द सेकंड बट वोंट गेट इट। इनफैक्ट फाइनली सेटिस्फाइड विद अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। अब वन बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। 35 for the loss of 6 wicket, 35 runs. They are scored 35 runs. Still they have to score for victory, and still the overall calculation it's going to be 13 balls remaining in their innings. गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस वक्त लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद इस वक्त पहुंच चुके शॉट थर्ड मैन पर। इस बीच रन मिलेंगे 1+1 2 runs now added to their total। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। रन इस वक्त चाहिए आजाद लायंस के लिए, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्रीज पर मौजूद है दोनों बल्लेबाज रन बनाने का हर तरीके का प्रयास, हर तरीके की कोशिश यहाँ पर करते हुए। और गेंदबाज फयाज अगली गेंद ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई और इस बीच सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा। ओवर नंबर 4 has been came to an end after completion of 4 overs. The score is 37 for the loss of 6 wickets. 4 overs completed, 37 on the board and 33 more runs now they have to score for victory in remaining 2 overs. That means the remaining 12 deliveries with a required run rate of exactly 16.5 runs per over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त चौके और छक्कों का, तो जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त चंद चौके और छक्कों की इस वक्त सख्त जरूरत आजाद लायंस के बल्लेबाजों को यहाँ पर कम बैक करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर तख्ता भारी लगता हुआ अलिफ स्टार के खिलाड़ियों का। और इस वक्त थोड़ी सी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है। गेंदबाज जो कि नंबर 11 की जर्सी पहने इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए समीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए बाएं हाथ के गेंदबाज और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार
दोपहर के वक्त लगभग 1:45 यहाँ पर बज चुके हैं। धूप का कहर काफी हद तक गहरा यहाँ पर हो चुका है। भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हैं। बेहतर गेंद थे, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग और साथ ही ऑफ स्टंप, और गेंद को इस वक्त कट करना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है। कुल मिलाकर 37 पॉइंट्स, 37 for the loss of 5 wickets, in fact 6 wickets, and this time once again beaten outside the off stump at the last moment, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुक चुका है 37 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर। 10 balls remaining and 33 more runs now they have to score for victory. The equation seems to get stiffer and stiffer now for that. Left it, और इस बार गेंद हमें फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और यहाँ पर इस कैच को लपकने में सफल। गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन स्ट्रोक में इतना दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। वाडी स्लॉगर पर नारियल के पेड़ के नीचे जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि उन्हें कुछ हद तक अपनी दाईं और दौड़ जरूर लगानी पड़ी, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को बाखूबी उन्होंने लपका, एक बेहतरीन जजमेंट के साथ। और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा, द प्रॉब्लम्स आर नाउ मोर बिल्डिंग अप फॉर द बैट्समैन ऑफ आजाद लायंस, दे आर स्ट्रगलिंग। इट्स 37 for 7। तो 37 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त नंबर 9 बल्लेबाज का, तो नंबर 9 बल्लेबाज निसार इस वक्त क्रीज पर मौजूद। वैसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके छक्के ही आजाद लायंस को इस मैच में विजय दिला सकते हैं। और गेंदबाज समीर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए निसार समीर की गेंदों का। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, मिड ऑफ फील्डर को थोड़ा सा पीछे इस वक्त तैनात किया गया है। और जहां तक का सवाल है, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, गेंद पहुंची हुई स्क्वायर लेग के दिशा में, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर देख रहे बल्लेबाज को मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा स्ट्राइक पर निशाना डायरेक्ट, और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है। डायरेक्ट हिट इस वक्त लगता हुआ और बल्लेबाज रनआउट के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए। 8 wicket gone, they are looking deep in trouble now. It's 38 for 8 with just 2 wickets left in their innings. तो निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला मुल्लारपटना प्रीमियर लीग 2024 सीजन 4 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई। कल जो कि संगठक और मेरे काबिल दोस्त सतीश ने फरमाया कि कल लेजेंड्स के मैच खेल जाएंगे। भूतपूर्व काल के लेजेंड क्रिकेटर जो कि स्पेशली 80s एंड 1990s के 80वें 90वें दशक में जो कि अंतराम क्रिकेट पर अपनी छाप छोड़ गए थे अपने बेहतरीन खेल के जरिए, उस बेहतरीन खेल को एक बार फिर से हमको देखने का सौभाग्य यहाँ पर हासिल होगा इस सुंदर से मैदान पर। लेजेंड्स क्रिकेटर्स के अंतर्गत जो कि लेजेंड्स क्रिकेटर्स के बीच में भूतपूर्व काल के खिलाड़ियों के बीच में कल कई मैचेस यहाँ पर खेले जाएंगे। तो यहाँ पर एक और विकेट गिर चुका है बोल्ड आउट के रूप में, विकेट नंबर 9 डाउन, एंड नाउ इट्स जस्ट लुक्स लाइक जस्ट 4 minutes now remaining in this match. So just in overall calculation it's going to be 8 balls remaining, 7 balls remaining, in fact 7 balls remaining, 32 runs needed, just the last wicket left. So we are just waiting for the number 11 of the last batsman. और नंबर 11 बल्लेबाज क्रीज पर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए, और ऐसा लग रहा है सिर्फ औपचारिकताएं ही इस मैच में अब बाकी रह गई है। और इस ओवर में अंतिम बार समीर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। For the last time in this over, Shamir comes बाएं हाथ रन द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर, रन से नहीं मिलेंगे और इसी के साथ ओवर नंबर 5 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 5 overs completed and 38 on the board, 9 wickets lost, in fact last over remaining, 32 runs required from last over, and just take out last wicket kept intact. अंतिम ओवर का खेल बाकी, निस्संदेह यहाँ पर छक्के लगाने होंगे हर गेंद पर बल्लेबाज को अगर उन्हें विजय दर्ज करना इस अंतिम विकेट की मदद से इस अंतिम ओवर में। ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿದ್ಯಾ
So last over starts in the innings और अंतिम ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार मरजूक ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर निकलती हुई गेंद इस वक्त वहां पर पेड़ पर टकराने के बाद वापस विकेट कीपर के हाथों में आते हुए और जहां तक रनों का सवाल है तो रन्स मिलेंगे एक वाइड के रूप में 6 balls 31 needed 39 for the loss of 9 wickets और मरजूक गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ रन द विकेट इस वक्त तैयार इस बार बल्ले का बाहरी किनारा और अपील इस वक्त जारी है विकेट कीपर द्वारा शायद बोल्ड आउट के बारे में और अंपायर ने इशारा किया कि इस वक्त तीसरी अंपायर की मदद यहां पर ली जाए इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर तो जस्ट वेट एंड सी वेदर इट्स अ बोल्ड और नॉट इन दिस डिलीवरी और अगर इस गेंद पर विकेट गिरता है तो यहां पर ये मैच यहां पर संपन्न हो जाएगा मुकम्मल हो जाएगा और देखते हैं तृतीय अंपायर इस वक्त क्या निर्धार यहां पर देते हैं ಔಟ್ ಆದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ಔಟ್ ಅದೇ So that's out and it's all over for Azad Lions and they lost the match by exactly 30 runs. They lost the match against Alif Star and Alif Star back the complete points with this victory. Therefore, they registered their first victory in this tournament by Alif Star defeating Azad Lions by a long margin of exactly 30 runs. And with that 30 runs big margin victory, they backed the complete points. So the match number 2 of this prestigious cricket tournament is now came to an end. MULARAPATNA Premier League 2024, which proudly presented by MULARAPATNA friends. And we are just waiting for the match number 3 of this tournament, and this match number 3 of this tournament is now coming up live exclusively right in front of you with the registered file. So till then we're taking a short break and we'll be back right after the short break with myself Gopi when the match number 3 of this tournament is now going to start right after the short break. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. So the second match of this tournament ended just short while ago, and the man of the match of this match, the award goes to the batsman who performed brilliantly with the bat and brilliantly from the ball also. He scored 27 runs from his bat and captured 3 wickets in his bowling spell, and because of this all-round performance he bagged the man of the match award. I request Fayaz of Alif Star who bagged the man of the match award, who enjoyed the man of the match award for his all-rounding performance of 27 runs and 3 wickets in his bowling department. I request Mr. Fayaz of Alif Star to please come on to the stage and receive the man of the match award from the organizers. Fayaz, Alif Star ತಂಡದ ಫಯಾಜ್ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫಯಾಜ್. ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಫಯಾಜ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಜಲೀಲ್ ಎಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಬೌಲನ್ನ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಕರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫಯಾಜ್.
ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಫಯಾಜ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಜಲೀಲ್ ಎಂಜಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಗೊಂಡಂತ ಫಯಾಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಜಲೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಎರಡು ತಂಡ. ರಫೀಕ್ ಕೈಸ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಜೀದ್ ತೌಹೀದ್ ಇವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ CR7. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮಿಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ತೀರ್ಪುದಾರರಾಗಿ ನುರಿತ ತೀರ್ಪುದಾರರು, ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಜಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. सर कंटिन्यू गुड टू सर. धन्यवाद जनाब शाकिर. तो जहाँ तक इस वक्त सवाल है, मैच नंबर 3 तीसरा मैच इसी श्रृंखला का यहाँ पर शुरू होता हुआ. CR7 versus Sky Strikers, and Sky Strikers have won the toss. They elected to field first. In fact, because of that, the openers of CR7 batting CR7 at the crease, Sajid and Imtiaz. इम्तियाज बॉलर रफीक गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए निश्चित रूप से यहाँ पर मैच नंबर 3 इस श्रृंखला का शुरू होता हुआ इस कड़ी दोपहर में. तो दोपहर के 2 इस वक्त बज चुके हैं और निस्संदेह सूरज आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है और अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, और इस बढ़ती हुई धूप की तीव्रता के साथ गर्मी की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती हुई और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी जो काफी मात्रा में इस मैदान के इर्द गिर्द मौजूद हैं वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए और इस भीषण गर्मी तले यहाँ पर मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत मुल्लरपटना प्रीमियर लीग 2024 सीजन 4 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू होता हुआ. और इस बीच सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज साजिद, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर इम्तियाज, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए रफीक. तो इस वक्त साजिद सामना करने के लिए तैयार, इम्तियाज माफ कीजिए, सामना करने के लिए तैयार. साजिद नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो रफीक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हैं. द फर्स्ट बॉल ऑफ द थर्ड मैच ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट मुल्लरपटना प्रीमियर लीग 2024 सीजन 4 इज नाउ कमिंग अप. रफीक टू इम्तियाज. पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी. केवल 2 मात्र फील्डर बीच के दायरे के बाहर सीमा रेखा के पास तैनात. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर चूके और गेंद को जब तक फाइनल लेग फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है. It's 2 without loss in the first over for CR7 in the first over. गेंदबाज इस वक्त रफीक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामना करते हुए इस वक्त साजिद जो कि आमतौर पर जेडी बॉयज बंटवाल का प्रतिनिधित्व किया करते हैं और कई बेहतरीन मंगलूर की टीमों में उन्होंने खेला है और एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं. साजिद जो कि अपना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को खेला खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद. He just collected the ball after a couple of bounces और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और रफीक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. ये गेंद इज दिस टाइम जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली. और विकेट कीपर जरूर चूके लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में तेजी के साथ दौड़ते हुए अपने दाईं ओर जाते हुए गेंद को वो कलेक्ट करने में सफल और इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर इस वक्त हो चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर 3 गेंदें इस ओवर में फेंके जा चुके हैं. रफीक अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार है.
2 गेंदें माफ कीजिए इस ओवर में फेंके जा चुके, 4 गेंदें और फेंके जाने बाकी। और रफीक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ लंबा विकेट लिए, गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर के साथ साथ शॉट थर्ड मैन फील्डर भी चुके, वाइड का इशारा, 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। सिर्फ 2 मात्र गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है और ऐसा कहना पड़ेगा गेंदबाज रफीक कभी भी अपनी सही लेंथ और लाइन को यहाँ पर तराशते हुए। तो इस वक्त 1 रन के साथ इम्तियाज ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं, स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं नंबर 44 के जर्सी पहने हुए बल्लेबाज साजिद और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ಗಂಜಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಗಂಜಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೋಗದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಗಂಜಿಯನ್ನ ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಂಜಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು. ದಯವಿಟ್ಟು ತವೀದ್ರವರು ಆ ಪ್ಲೇಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. तो इस वक्त ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर मिस फील्ड होते हुए। जब तक दोबारा आपने पीछे के जाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। इसको इनसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद इस वक्त फाइन निकली कि स्क्वायर लेग फील्डर की बाईं ओर से रेजमेज बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है, 3 गेंदें और फेंके जाने बाकी। साजिद इस वक्त सामना करने के लिए एक बार फिर से तैयार और रफीक इस वक्त गेंदबाजी पर आगे बढ़ाते हुए। पहला पावर प्ले ओवर में इस वक्त प्रगति पर और केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, ठीक सीमा रेखा के पास। और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को चलना चाह, बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया शॉट फाइन लेग फील्डर द्वारा, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और कुल मिलाकर रफीक का काफी वाइड गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं इस वक्त और अभी भी अपनी सही लेंथ और लाइन को वहां पर तलाशते हुए। और रफीक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑन साइड पर 2 स्क्वायर और यहाँ पर मिलेंगे सिर्फ 1 रन। अगर थोड़ा सा स्ट्रेटर गेंद को इस वक्त उछालते तो शायद चौका या छक्का उनके पक्ष में आ सकता था, लेकिन गेंद को इस वक्त काफी स्क्वायर उन्होंने इस वक्त उछाला था और इस बीच सिर्फ 1 मात्र रन उनके टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 10 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 10 विदाउट लॉस, 9 विदाउट लॉस इन फैक्ट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। काफी लंबा ओवर इस वक्त रफीक का यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर रफीक तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद साजिद के लिए बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को स्कूप कर दिया, गेंद जाती हुई इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा की और काफी लंबा दौड़ इस वक्त लगाते हैं फील्डर। जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद को इस वक्त गेंद पर पहुंचते हुए गेंद किस वक्त उछाल दिया था, गेंद लगभग कवर पॉइंट पर कुछ पत्थर से टकराने के बाद अपने दिशा को बदलते हुए और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज यहाँ पर दौड़कर पूर्ण करते हुए और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 11 विदाउट लॉस। और यहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो रफीक इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लंबा ओवर उनका यहाँ पर प्रगति पर। साजिद एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद बैकफुट पर गए, गेंद तो खेला एक्स्ट्रा कवर पर मिसफील्ड, साजिद दौड़ा है, इम्तियाज थोड़े देर से दौड़े जरूर लेकिन आखिरकार 1 रन पूर्ण करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, 12 रन्स ऑन द बोर्ड, yet to lose any wicket and this is a fantastic start for CR7 after losing the toss and putting to bat by K strikers in the match number 3 of this prestigious cricket tournament, MULARAPATNA Premier League season for 2024 and still in overall calculation it's going to be 5 overs remaining in the innings। 5 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 5 ओवर में यहाँ पर CR7 के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। खासकर रह जाता कि एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है CR7 का, तो यहाँ पर साजिद की उपस्थिति उनके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि साजिद के पास अपार अनुभव है, एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं और वहाँ पर
यहाँ पर अगर साजिद एक बेहतर पारी अपनी टीम के लिए खेलते हैं तो CR7 एक बेहतर स्कोर की ओर यहाँ पर अग्रसर हो सकता है। और जहां तक सवाल है इस वक्त केएस स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों का, जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉलर्स ऑफ केएस स्ट्राइकर्स, उनको इस वक्त साजिद का विकेट जल्द से जल्द उखाड़ना होगा। उन्होंने यहाँ पर CR7 के बल्लेबाजों को रनों के बहाव पर अंकुश लगाना था। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बचे हुए 5 ओवर में दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और हनीफ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए। और जहां तक सवाल है तो रन तरीका के खिलाड़ी हनीफ जो कि इस वक्त नया ओवर प्रारंभ करते हुए सामना करने के लिए इस वक्त तैयार है साजिद। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद उछाला इस वक्त 2 square of the wicket. In fact, I think it's going to be gone over the fence after 1 bounce. He just hit that one 2 square after being exposing the wicket. Played that one with an inside out cricket and he gets a boundary for that. Fantastically struck in from the bat of Sajid. इस चौके के साथ स्कोर इस वक्त बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और साजिद इस वक्त कुछ हद तक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए और इस वक्त एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार हनीफ की गेंदों का। तो फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज हनीफ, लॉन्ग फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद बिल्कुल सीधे दाहिने हाथ के बल्लेबाज साजिद के लिए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और हनीफ एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद पुल किया ऑनसाइड पर मिड विकेट पर गेंद जाते हुए और गेंद जब तक मिड विकेट सीमा रेखा को पार करे अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक फील्डर द्वारा फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद इस वक्त पुल कर दिया था साजिद ने डीप मिड विकेट पर। आखिरकार 2 रन यहाँ पर बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 18 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 in progress. A fantastic progress here for CR7 in the match number 3 of this prestigious cricket tournament, मुल्लारपटना प्रीमियर लीग सीजन 4 2024। जहां तक गेंदबाजी का सवाल है इस वक्त हनीफ गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो again on side पर mid wicket पर again, but this time he's got the distance. Yes it does, it's a biggie. This is an absolutely fantastically struck, just stand and delivered. और गेंद आसानी के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 24 रनों पर। Fantastically struck came from the bat of Sajid। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का तो हनीफ इस वक्त सामना करने के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार साजिद के लिए। तो साजिद इस वक्त काफी विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट रिवर्स शॉट गेंद तो खेला इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद जाते हुए इस वक्त शॉर्टर पैन पर। और जब तक गेंद वहां पर नेट्स पर टकराने के बाद फील्ड और गेंद यहाँ पर वृक्ष पर जाकर टकराते हुए नारियल के वृक्ष पर और ओवरथ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 26 रनों पर। और 26 रनों में लगभग साजिद काफी रन बना चुके हैं। जहां तक साजिद का सवाल है इस वक्त वो 21 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं। इस बैटिंग ऑन 21 इंक्लूडिंग 1 6 and a boundary and this is a fantastic batting performance coming here from the batsman साजिद। अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। ये गेंद इस बार एक्स्ट्रा क्विकर एक्स्ट्रा बाउंस जस्ट मिसिंग और शॉट ऑफ स्टंप और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन्स यहाँ पर बल्लेबाज को नहीं मिलेगा तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर 26 विदाउट लॉस। द स्कोर बोर्ड स्टेज at Sajid batting on 21। इस बीच गेंदबाज की गेंद का सामना करने के लिए तैयार हनीफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया बेहतरीन तरीके से। और जब तक दोबारा दूसरी बार फील्ड करने के बाद गेंद को थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का।
गेंद को रोक तो जरूर लिया था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके हाथों से छूटी और इन द सेकंड अटेम्प्ट जबकि दूसरे प्रयत्न जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो कर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर इन 2 रनों के साथ। और एक और बेहतर ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका। अगर CR7 के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए जो कि समाप्त हो चुका। 16 रन इस ओवर में बने। 16 रन केम फ्रॉम दिस ओवर फ्रॉम हनीफ एंड आफ्टर 2 overs CR7 looking on a commanding situation. It's 28 for none after 2 overs. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಝರಾ 11. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಝರಾ 11. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ. ಬರೀ 3 ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ CR7 ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಝರಾ 11. धन्यवाद जनाब शाकिर साहब। और जहां तक सवाल इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति के बाद CR7 इस वक्त काफी बेहतर स्थिति में नजर आता है। 28 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के और रफीक का गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना करने के लिए तैयार इस वक्त इम्तियाज। और जहां तक इम्तियाज का सवाल है अब तक उनका बल्ला यहाँ पर खामोश है। एक बेहतर साथ निभाते हुए साजिद का और जितने भी रन्स बने उनमें से ज्यादातर रन साजिद ने बनाए हैं। तो इस वक्त वो ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। इम्तियाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और रफीक का गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज इम्तियाज के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात। काफी दूर दूर तक पहला वक्षेप रक्षण यहाँ पर दिखाई देता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त रफीक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर है तो रनर की मदद से इस वक्त इम्तियाज यहाँ पर खेलते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त रफीक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए शॉर्ट थर्ड की दिशा में गेंद पहुंची ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। अब 29 रनों पर बिना किसी नुकसान के 29 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर इनफैक्ट। और एक बार फिर से रफीक का गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहा। ये गेंद ऑफ द टोस गेंद को मोड़ना चाहा पैरों पर गेंद टकराई अंतिम क्षण में और आखिरकार फॉरवर्ड शॉट क्षेत्र पर गेंद को फील्ड कर लेगा। विकेट कीपर द्वारा अपनी दाईं ओर जाने के बाद रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रख चुका है 29 रनों पर बिना किसी नुकसान के। द स्कोर बोर्ड स्टेज एट 29 विदाउट लॉस। नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 2 वाइड फेंकने के बाद एक बेहतर गेंद रफीक इस वक्त फेंक चुके अपनी ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। गेंद को स्कूप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और गेंद को यहाँ पर लंगो फील्डर अपने टोपी को जमीन पर फेंकने के बाद जब तक वो फील्ड करे सीमा रेखा के अंदर आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 30 रनों पर बिना किसी नुकसान के। साजिद बैक ऑन स्ट्राइक। साजिद इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और देखना यह है कि इस वक्त गेंदबाज रफीक कौन सा रणतंत्र यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं गेंदबाजी में साजिद को बांध कर रखने के लिए और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार है और ये गेंद इस वक्त स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ गेंद पहुंची इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर 1 रन मिलेगा यहाँ पर रिवर्स शॉट के जरिए खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त खेल दिया था डीप कवर पॉइंट पर और जब तक गेंद को फील्ड करें फील्डर डीप कवर पॉइंट पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 31 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। रन इस वक्त खुलकर बनते हुए यहाँ पर CR7 के बल्लेबाजों के लिए धीरे धीरे ये आरंभिक साजदार यहाँ पर जमती हुई और इस बीच गेंदबाज रफीक गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड विकेट ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है गेंद
मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इसी के साथ एट लास्ट द बॉलर्स ऑफ कई स्ट्राइकर्स गॉट द ब्रेक थ्रू। इम्तियाज की पारी सलाह गेंद को उछाला था जरूर लेकिन नॉट क्वाइट गेट दैट वन फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट। डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे, हालांकि 3-4 कदम आगे जरूर उन्हें अपने आगे दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को लपकने में सफल बाखूबी और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका। दे लूज देयर फर्स्ट विकेट एंड नाउ इट्स 31 for 1. ಅನ್ನದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸಜೀವುದ್ದೀನ್ ಎಂಎಸ್ ಇವರು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಸಜೀವುದ್ದೀನ್ ಎಂಎಸ್ ಮುಲಾರಪಟ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಗಂಜಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಜೀವುದ್ದೀನ್ ಎಂಎಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಗಾಗಿ ಅನ್ನ ಗಂಜಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಜೀವುದ್ದೀನ್ ಎಂಎಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. धन्यवाद सर। एक बार फिर से सजीवुद्दीन एमएस उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। इस श्रृंखला के लिए भोजन की व्यवस्था उन्होंने जो की है, आपका हार्दिक अभिवादन है सर। ये गेंद हल्के से इस वक्त गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ ऑफ द टॉस, गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर डायरेक्ट इट वुड हैव बीन अ ट्रबल फॉर द बैट्समैन एट द लास्ट मोमेंट बट द बॉल वेंट जस्ट वाइड ऑफ द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट और इसी के साथ बल्लेबाज दूसरा रन आसानी के साथ यहां पर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर 33 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. So last ball remaining in this over और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर गेंद पहुंचे 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 3 overs has been games 3 ओवर के समाप्ति 34 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर exactly 11.33 the run rate present run rate is now progressing here for them and except they lost their 1 wicket they are progressing a lot nicely. CR7 34 for 1 after 3 overs. ಹಲ್ ತವೀದ್ರವರೇ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತವೀದ್ So Imran, the bowler is now brought into the attack and the 4th over starts in CR7's innings. और सामना करने के लिए इस वक्त बल्लेबाज नौफल और पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए इमरान और 3 ओवर का खेल अब बाकी कुल मिलाकर उनकी पारी में पहली गेंद को खेल दिया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में रन से नहीं मिलेगा स्ट्राइक रोटेट करना चाहते थे नौफल इस वक्त ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक साजिद को वो देना चाहते हैं वो जानते हैं जितना ज्यादा स्ट्राइक साजिद को मिलेगा उतना उनकी टीम के लिए बेहतर होगा तो पहली गेंद पर खाली क्षेत्र नहीं ढूंढ पाया बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद के इस वक्त पुश कर दिया रन बल्लेबाज को नहीं बोला बेहतर गेंद थी इमरान की और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड के रूप में 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 36 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 36 for the loss of 1 wicket at the start of the 4th over in fact और इमरान फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार है
Again, reverse shot, fantastically struck with a twisted bat. He played that one, finds the gap as well, and because of that, he's got a couple run for that stroke. With a twisted bat, he just played that one fine, just wide off the gully fielder. 2 रन बल्लेबाज यहाँ पर प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रन। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त साजिद के बल्ले से लगता और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद, रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त, गेंद यहाँ पर नारियल के पेड़ पर टकराने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी मिसजजमेंट फील्डर द्वारा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। और गेंद यहाँ पर नारियल के पेड़ पर टकराने के बाद अपने दिशा को कुछ हद तक बदली थी और जब तक फील्डर अपने दिशा को बदलते हुए इस गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, बल्लेबाज के पास समय था कि दूसरे रन के लिए वो अपना छोड़ पर वापस लौट सके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 39 for the loss of 1 wicket, 40 in fact for the loss of 39 for the 40 so 40 the score now for losing 1 wicket in fact। और इस बार गेंद थी लेग स्टंप पर लेकिन कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 40 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि चौथा ओवर उनकी पारी की प्रगति पर रन से आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए यहाँ पर CR7 के लिए इस बार लेग स्टंप से बाहर और रन यहाँ पर मिलेंगे। एक हल्के से अजीब तरीके से गेंद को खेल दिया था बल्ला अड़ाते हुए और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 40 से 41 पर 41 और गेंदबाज इमरान इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 42 रनों पर 42 नाउ द स्कोर। और इमरान इस बार ड्राइव किया गेंद को खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया गया था 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर 43 for the loss of 1 wicket and the 4th over has been game strained and still they are progressing around nicely. Exactly the present run rate is exactly 10.75 runs per hour they have got at the situation and still in overall calculation it's going to be 2 overs remaining. There is 2 over का खेल बाकी। देखते हैं इन बचे हुए 2 ओवर में यहाँ पर CR7 के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ। 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜರಾ 11 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ। ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಜರಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ। ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ। ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು। ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ। ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ। धन्यवाद सर। तो 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ पहली गेंद लेकर गेंदबाज हनीफ इस वक्त तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए नौफल के लिए और गेंद की दिशा को परखते हुए गेंद को जाने दिया इस वक्त अपने बल्ले को हवा में उठाते हुए वाइड के रूप में और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हनीफ दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा, 2 वाइड्स कंसेक्यूटिवली बॉल्ड बाय हनीफ और निस्संदेह अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तलाशते हुए 2 लगातार वाइड इस वक्त फेंक चुके हैं और स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 45 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। It's 45 for the loss of 1 wicket in the over number 5th starting just short running go और हनीफ फिर से एक बार तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, जस्ट मिसिंग और साथ ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त पंच करना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 45 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और हनीफ फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने
खूबसूरती के साथ ऑफ द पेस वाइड स्लॉन्ग आउट पर फील्डर मौजूद, दूसरा रन नहीं मिलेगा, थ्रू पहुंच चुका है इस वक्त गेंदबाज के हाथों में और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट हो चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 1 रन के साथ 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साजिद एक जिम्मेदारी भरी पारी यहां पर खेलते हुए अपनी टीम के लिए, एक लंबी पारी कहना पड़ेगा अपनी टीम के लिए, वो खेलते हुए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। और हनीफ इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथ के बल्लेबाज साजिद के लिए अगली गेंद, ये गेंद इस बार उछाला लंगोट पर मौका और ऐसे क्या he dropped that one. That was a straightforward chance and the chance is now gone in vain. और आसान सा मौका था लंगोन में फील्डर के लिए और इस आसान से मौके को वहां पर गंवा चुके हैं और साजिद यहां पर जीवदान यानी लाइफ प्राप्त कर चुके हैं और भाग्य इस बार साजिद का साथ देता हुआ 1 रन जीवदान के साथ वो प्राप्त कर चुके हैं। 47 रन 47 for the loss of 1 wicket। और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड नंबर 3 इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज हनीफ और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 48 रनों पर। और हनीफ फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 9 गेंदें कुल मिलाकर अब उनकी पारी में शेष और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार है। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, बेहतर गेंद इस वक्त और आखिरकार पर बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुके हैं। हालांकि विकेट कीपर ने निशाना जरूर दागा था इस वक्त, उनको निशाना भी बैठा जरूर बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस और सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 48 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर यहाँ पर प्रगति पर, तो शायद यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए मांग दी गई है, तो देखते हैं यहाँ पर तृतीय अंपायर क्या निर्धारण यहाँ पर देते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर एंड लेट्स सी व्हाट द डिसीजन केम फ्रॉम द थर्ड अंपायर आफ्टर बीइंग वाचिंग दिस रन आउट चांस। No, it is the goal and the batsman survived. बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं और सब कुछ सुरक्षित है बल्लेबाज के लिए। तो साजिद इस वक्त कुछ समझाते हुए नौफल के लिए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए, किस तरीके से स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। और इस बीच गेंदबाज हनीफ गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए काफी धीमी प्रगति गेंदबाजी यहां पर होती हुई गेंदबाज द्वारा कई स्ट्राइकर्स के। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद, यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची इस वक्त लंगोन की दिशा में, 1 रन का इजाफा, स्ट्राइक रोटेट हो चुका है। साजिद स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। 49 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। सो स्टिल 1 बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम गेंद में साजिद क्या करते हैं। और 1 रन दूर अपने अर्धशतक से इस वक्त यहाँ पर CR7 में गेंदबाज इस वक्त तैयार है। ये गेंद रिवर्स शॉट डिलीकेट, एब्सोल्युटली डिलीकेट, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ साजिद कीप्स स्ट्राइक एंड 50 कम्स अप फॉर CR7। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं, 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। साजिद स्ट्राइक खुद अपने पास रख चुके हैं और अंतिम ओवर का खेल अब उनकी पारी में बाकी। मैं देखना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा साजिद इस वक्त कितने रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कृपया स्कोरर साहब हमें बताइए कि साजिद इस वक्त कितने रनों पर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। निस्संदेह बेहतरीन बल्लेबाज, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग हियर फ्रॉम साजिद एंड शीट एंकर्स रोल, ही इज नाउ प्लेइंग अ शीट एंकर्स रोल फॉर द साइड। 31, he is batting on 31 by Sajid and this is an absolutely fantastic knock coming from him। और अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में साजिद अपने व्यक्तिगत रन संख्या को कितनी बुलंदियों पर जाकर ले जा पाते हैं। तो 6 गेंदें बाकी है और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए तमीम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। और जहां तक तमीम का सवाल है, एक प्रतिभाशाली क्रिकेटर के रूप में जाने जाते हैं, न सिर्फ प्रतिभाशाली क्रिकेटर बल्कि एक बेहतरीन
कन्नड़ा राज्यभाषा कन्नड़ के कमेंटेटर के रूप में भी जाने जाते हैं, उभरते हुए कमेंटेटर आज के दौर के हमारे इस डिस्ट्रिक्ट कमेंटेटर ग्रुप के एक सदस्य भी है। और निश्चित रूप से हमें फख्र है कि वो इस वक्त एक मैच में इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहता, बाई का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। अब 51 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर इट्स 51 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। साजिद ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं, सामना करते हुए इस वक्त नौफल तमीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस, गेंद को पुल किया इस वक्त लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। अब 52 रनों पर 52 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस, स्टिल 4 balls लेफ्ट इन द फाइनल कैलकुलेशन इन द इनिंग्स। और तमीम इस वक्त अपने लंबे रनअप के जरिए अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। साजिद 31 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और सामना करने के लिए तैयार तमीम की गेंदों का। तमीम full toss, pulse, and this time it might be touched off. Oh, brilliant, absolutely brilliantly stopped just inside defense. और बल्लेबाज दूसरे रन के दौर पर साजिद के लिए खतरा पैदा हो सकता था अगर निशाना स्टंप्सों पर सही बैठता, लेकिन निशाना चूका और बल्लेबाज 2 रनों के साथ अपने छोड़ पर वापस लौट चुके हैं अपने छोड़ पर वापस। तो बेहतरीन फील्डिंग इस वक्त दीप बैकवर्ड को लेग फील्डर ने की होती है, अपने ऊपर की छलांग लगाते हुए गेंद को एक हाथ से उन्होंने लपका और उसी एक्शन में गेंद को तुरंत अपने हाथों से रिलीज किया और 2 रन इस बीच बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 54 रनों पर। इट्स 54 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड साजिद इज नाउ मूविंग अप टू 33 नाउ विद दैट कपल रन। और 3 गेंदें बाकी इस वक्त तमीम साजिद के लिए अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को उछाला इस वक्त और फील्डर जी हां गेंद को लपक चुके हैं लंबन सीमा रेखा के अंदर। हालांकि फील्डर ने पहले सिर से अपनी टोपी जमीन पर फेंकी और उसके बाद अपने शरीर पर नियंत्रण प्राप्त किया और उसके बाद गेंद का इंतजार किया और गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और अपने दोनों हाथों से गेंद को उन्होंने दबोच लिया और इस तमाम प्रक्रिया में यहाँ पर विकेट गिर चुका है साजिद का और साजिद की बेहतरीन पारी पर यहाँ पर अंत हो चुका है। 33 रन उन्होंने बनाए, 33 रन स्कोर बाय साजिद after playing a fantastic knock of 33 runs for their side. He is back into pavilion and a white wicket lost in the final delivery of their innings for CR7. And now it's 54 for 2. Sajid departs for 33. दो गेंदें इस वक्त बाकी, इंतजार है नंबर 4 बल्लेबाज का। जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द नंबर 4 बैट्समैन और सीरत जिस वक्त बल्लेबाजी पर यहाँ पर उतरते हुए और देखते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में CR7 के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो तमीम अब तक उनका बेहतर ओवर यहाँ पर साबित हो चुका है और अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर का विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और ये गेंद इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। एक्स्ट्रा कवर पर गेंद का इंतजार करते हुए फील्डर और उससे पहले की गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज 3रे रन के लिए यहाँ पर दौड़ पड़े और 3रा रन पूरा कर चुके, चौथा भी मिल सकता है और चौथा भी मिल चुका है। यहाँ पर 4 रन यहाँ पर मिले, 4 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 58 रनों पर 58 एंड नाउ द लास्ट बॉल रिमेनिंग इन द इनिंग्स। अंतिम गेंद बाकी उनकी पारी का और तमीम इस वक्त तैयार है उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर, जबकि इस वक्त सामना करते हुए सिराज। सो द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नॉट कमिंग अप। तमीम टू सिराज इस बार ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर, बेहतरीन तरीके से गेंद को रोका गया, नॉट मोर देन अ सिंगल एंड विद दैट सिंगल द इनिंग्स इज दैट दे फिनिश्ड विद 59 for the loss of 2 wickets after completion of their 6 overs. And now they set a victory target of exactly 60 runs for K Strikers, and the K Strikers have to score 60 runs exactly in the stipulated 6 overs with the help of 10 wickets with the required run rate of exactly 10 runs per over. And this is the present equation. The present equation shows for the men. Let's see can they meet the target or not. 60 the target for K Strikers and the inning starts with the shot. While तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मैं मेरे साथ तैयार गोपी के साथ जब यहाँ पर K Strikers की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿ ಸರ್। ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 59 ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ CR7 ತಂಡ। 60 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲು
60 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರಪಟ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತವೀದ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ತವೀದ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಚೂರು तो धन्यवाद. तो 7 रनों का लक्ष्य कई स्ट्राइकर्स के लिए और उनके पारी की शुरुआत होगी चंद लम्हा बाद. तब तक एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और हमारे सीनियर कमेंटेटर जनाब शाकिर सर के साथ जब यहाँ पर कई स्ट्राइकर्स की पारी की शुरुआत होगी. तो यहाँ पर मैं आदरणीय जनाब शाकिर सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ अगले काको देखल सुनाने के लिए राज्य भाषा कन्नड़ में. आइए जनाब शाकिर सर. धन्यवाद. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗೋಪಿ ಸರ್. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ CR7 ನಿಗದಿತ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 59 ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಸಾಜೀದ್ ರವರ ಆ ಒಂದು 33 ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವುದರ ಮುಖೇನ 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 59 ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 60ರ ಸವಾಲನ್ನ ನೀಡಿದೆ CR7 ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡದೆ ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ತವೀದ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 60 ಓಟದ ಸವಾಲು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 59 ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ CR7. 60ರ ಸವಾಲು ಎದುರಾಳಿ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಆಗಮನ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಕಮ್ಮ ಆಟಗಾರ ರಫೀಕ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ರಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಸ್. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲು 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 60ರ ಸವಾಲು. ಟೂರ್ನಿಯ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜರಾ 11. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮುಗೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು 2 ತಂಡಗಳು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುಖೇನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನೇ ಸೇಳು ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಸಾಜೀದ್ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 33 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವುದರ ಮುಖೇನ 36 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59 ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. 60ರ ಸವಾಲು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ಮಾಲಕ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಎಸೆತ
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಜೀದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಜೀದ್. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುದಾರದಂತ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಇವರಿಂದ ಬಲ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುದಾರರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ತೇಜಪ್ಪ ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅವಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3 ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 60ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಜೀದ್. ರಫೀಕ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 4 ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ, ಮಾಲಕನ ನಂಬುಗೆಯ ಆಟಗಾರ ಸಾಜೀದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ಸಾಜೀದ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅನುಭವ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಅನುಭವ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಅನಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಕೈಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತವೀದ್ ರವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ತಂಡ, ಸಾಜೀದ್ ರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ತಂಡ CR7. ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲತೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜರ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ CR7 ತಂಡದ ಜರ್ಸಿಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ CR7 ಜರ್ಸಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತವೀದ್ ರವರ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು CR7 ಜರ್ಸಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 4. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಿದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲಿದೆ. 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 56 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ರವರೇ ಬಲ ಅನುಭವಿ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ತಂಡ. ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂತವರು ನೌಫಾಲ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ನೌಫಾಲ್ ರವರಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು MPL ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮುಖೇನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತವರು ಆಟಗಾರ ನೌಫಾಲ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಕೈಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಲೋಂಗಾನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 6 ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ನಿಗದಿತ 6 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 59 ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ CR7. 60ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ, ಮಾಲಕ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕೈಸ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೈಸ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೈಸ್ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೌಫಾಲ್. ಇವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 6.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್. ತೀರ್ಪುದಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 7. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನ ದಾರ ಎರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜರಾ 11. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ತಯ್ಯೂಬ್ರವರೇ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಜರಾ 11 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಫಲ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಹಾಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಬಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನಸ್ ಅಂಡ್ ರಫೀಕ್. 60ರ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಅಗಲಸೆತದ ನಿಶಾನೆ. ತೀರ್ಪುದಾರರ ಹಸ್ತ ಅಗಸದತ್ತ. ಈ ಮುಖೇನ 1+1 ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9. ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಸಾವುಲ್. ಜರಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೌಫಲ್. ತೀರ್ಪುದಾರರಾದಂತ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ದಾಟಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಿಯಾಜ್. ಪ್ರಥಮ ಜೀವದಾನ, ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಿಯಾಜ್. ಈ ಮುಖೇನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಬೇಕಾಗಿದೆ 24. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 9. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲಿದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 50. 24 ಎಸೆತವಿದೆ. 50 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಫೀಕ್ ಕೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಎಸೆತಗಾರ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ CR7. ಸಾಜೀದ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಸ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅನಸ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಸಾಮ್ ಇವರು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಂದು ಜೀವದಾನ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಅನಸ್ ರವರಿಗೆ. ಈ ಮುಖೇನ ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 12. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಜೀದ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ ಸಾಜೀದ್ ರವರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜರಾ 11 ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ರವರೇ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ
ಅಗಲೆಸೆತದ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುದಾರರಿಂದ ಕಿಶೋರ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಮುಖೇನ ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ರಫೀಕ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಜಿದ್ ಟು ರಫೀಕ್ ಕೈಸ್. ತೀರ್ಪುದಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ಬಲಾನುಭವಿ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ತೀರ್ಪುದಾರರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ. ಈ ಮುಖೇನ ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಂತಹ ರಫೀಕ್ ಕೈಸ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಸ್. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಜಿದ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅಗಲೆಸೆತದ ನಿಶಾನೆ. 1 ಓಟಗಳ ದಾಖಲಾತಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಜಿದ್ ತನ್ನ ಕೂಟದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದರೆ 1 ಓಟಗಳು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ನೋ ಬಾಲ್. 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಅನಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತನಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನಸ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಆಘಾತ. ಅನಸ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಾಟ್ ಔಟ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನೋ ವಿಕೆಟ್. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 21 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 39. 18 ಎಸೆತವಿದೆ. 39 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ತಂಡದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ನೌಫಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೈಸ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಅಗಲೆಸೆತದ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುದಾರರಿಂದ ಈ ಮುಖೇನ ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22. 18 ಮುಂದೆ 38 ಸವಾಲಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು 4. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕ ರಫೀಕ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡುವ ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ತಂಡಕ್ಕೆ CR7 ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೌಫಲ್. ತನ್ನ ಕರಾರುವತ್ತು ದಾಳಿಯ ಮುಖೇನ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೌಫಲ್.
ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರ ಉದ್ದರಿ ಪತನದ ನಂತರ ಒನ್ ಡೌನ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ತಂಡದ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ನವಾಜ್ ಡಿಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಾಲ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಓಟಗಳ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22, 22 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್. ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳು CR7 ಹಾಗೂ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ನೌಫಾಲ್ ರವರ ಕರಾರುವತ್ತು ದಾಳಿಗೆ ಎದುರಿಸಲಾಗದ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನವಾಜ್. ಶೂನ್ಯ ಸುತ್ತಿ ಪವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಆಘಾತ. ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯ ಮುಖಭಾವ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ CR7 ಪಾಲಯದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 22, 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನವಾಜ್ ರವರ ಉದ್ದರಿ ಪತನದ ನಂತರ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅನೀಫ್ ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅನೀಫ್ ರವರಿಗೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತರ್ಕ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೌಫಾಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23, 37 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಆ ಒಂದು ಸುಳ್ಯ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತಕ್ಕೆ 29 ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಈ ಮುತ್ತೂರು ಪರಿಸರದವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಬಾರಿಸಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಆ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29 ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮುಖೇನ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ತೀರ್ಪುದಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುದಾರರು. ಎಸ್, ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಲ್ಲಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23, 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. 37 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. 12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 37. 12 ಎಸೆತವಿದೆ. 37 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಮ್ಯಾನಿ ಸಾವುಲ್ ಅಮೀದ್ ಅನಸಿರವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ. ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ನೋ ಬಾಲ್ ತೀರ್ಪು. ಈ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 24. 12ರ ಮುಂದೆ 36 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಎಸೆತವಿದೆ. 36 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿಯ ಸುರಿಮಲೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಜಯಿಸಬಹುದು.
ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಸನ್ವಾಜ ಯುಎಇ ಹಾಗೂ ತೌಚಿ ಯುಎಇ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿರಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಗಲ ಸತತ ನಿಶಾನೆ ಈ ಮುಖೇನ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾವುಲ್ ಜರಾ 11 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು, ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾವುಲ್ ರವರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಎಸ್ ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಸೋಲಿನಂಚಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಸಂಘಟಿತ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲ ಅಡ್ಡ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜರಾ 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿರಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಗಲ ಎಸೆತದ ನಿಶಾನೆ, ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಅತಿರಿಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 28, 32 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುದಾರರಿಂದ ಈ ಮುಖೇನ ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ್ಸಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಜಮ್ಸೀರ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜಮ್ಸೀರ್ ಅವರೇ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಮಗಿದು. ತೃತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿರಾಜ್. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 30 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಎಸೆತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅಗಲ ಎಸೆತದ ನಿಶಾನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಇತರರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 31. 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 29. 8 ಎಸೆತವಿದೆ, 29 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ತನ್ಕೂಟದ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿರಾಜ್ ಟು ಅನೀಫ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಫ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ, 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 33. 4 ಅಮೂಲ್ಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ.
6 ಎಸೆತವಿದೆ, 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭರ್ಜರಿ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನೀಫ್ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅನೀಫ್ ರವರಿಗೆ. ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ರಂತರ್ಕ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅನೀಫ್ ರವರಿಗೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ತಾಫ್ 6 ಎಸೆತವಿದೆ, 27 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 27, ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಓವರ್ ಯಾರು? ಅಗಲೆಸೆತದ ನಿಶಾನೆ, 1 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 34. 6ರ ಮುಂದೆ 26 ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ CR7. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ತಂಡ CR7. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ಆಡು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ. ನುರಿತ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಬಲಿಷ್ಠ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಅನುಭವ ತೀರ್ಪುದಾರರಿಗೆ, ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಕಿಶೋರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತೇಜಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 36, 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ 3ರ ಮುಂದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅವರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಜಯದತ್ತ ದಾಪ್ಗಾಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದೆ CR7. ಪ್ರಥಮ ಜಯದತ್ತ CR7 ತಂಡದ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದ ಆಸೆ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜರಾ 11. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೋಸಿನ್ ಸಜಿಪಾ ಅವರನ್ನೇ ಹೋಲುವಂತವರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ನಿಸಾರ್ MG. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇವರನ್ನ ಮೋಸಿನ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ತರನೇ ಹೋಲುವಂತವರುವ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ಧೈರ್ಯ ಮುಖಭಾವ ನಿಸಾರ್ MG. ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. CR7 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 2 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಕೂಡಲೇ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಜಿದ್ ಜಡಿ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ರಿಫಾಜ್ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಷ್ಟೇ ಬಂದಂತ ರಿಫಾಜ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾಜಿದ್ ರವರಿಗೆ. ಬನ್ನಿ ಸಾಜಿದ್ ರವರೇ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನುಭವಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತವರು ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವರ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತವರು ಗೋಪಿ ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಜಿದ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಸಾಜಿದ್ ತನ್ನ
33 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 59 ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ನೆರವಾದಂತ ಸಾಜಿದ್ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ರಿಪಾಜ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. धन्यवाद जनाब शाकिल भाई. तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन नाको देखा राज्य भाषा कन्नड़ में आपने सुनाया हमारे सीनियर. तो निश्चित रूप से हम आपके आभारी हैं कि हमको भी आपके साथ देखिए माइक शेयर करने का मौका यहाँ पर मिला. ये हमारा यहाँ पर सौभाग्य है शाकिल भाई. तो यहाँ पर मैच मैन ऑफ द मैच साजिद जिन्होंने बेहतरीन पारी के लिए fantastic innings played by Sajid of 33 runs, and because of that for that fantastic batting knock he edged the man of the match and he just received the man of the match award from the organisers. So once again thankful to Sajid and best of luck for the rest of the matches of the tournament. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾರ 11 ಫಯಾಜ್ ಅಲ್ಮುಜೈನ್ ಪಂಡ್ರ सारा 11 थे ओनर अगेंस्ट जरा 11 होता अगेंस्ट नहीं जरा 11 अलिफ स्टार एयर बैटिंग फर्स्ट जरा बैटिंग टॉस चॉइस by बैट टॉस बैट यस सो वेलकम बैक वंस अगेन. एक बार फिर से जनाब शाकिर भाई का हम विप्रो का अभिवादन करते हैं और मैच नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं. इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत मुल्लारपटना प्रीमियर लीग सीजन 4 2024 which proudly organized by Mullarapatna Friends Cricketers in the celebration of their 4th year. They are conducting this fantastic cricket tournament in this beautiful Mullarapatna ground in the name of Mullarapatna Premier League season 4 2024. Zara 11 after one the toss they elected to field first in fact and their fielders are now slowly spreading on the feet. And just talking about the owner of Zara 11 Mr. Fayaz Al-Muzain, the franchisee owner of Zara 11 under his great leadership Zara 11 playing in this tournament and now the match number 4 is now going to start between Zara 11 under the leadership of Fayaz Al-Muzain versus against team is Alif Star, one more good team in this tournament, and we are expecting some good battle in this tournament, in this match in fact that will be coming up, fourth match of this prestigious cricket tournament, Mullarapatna Premier League season 4 2024.
So the match starts and Alif Star is now going to bat their openers. Fayaz and Samir. Fayaz and Samir. ಅವನೇ ಆನ್ಲೈನಾ Fayaz and Samir, the openers, and the bowler is Zahiruddin. Start the fresh proceedings from that side in, and we are just waiting for the first ball of the match. So the first ball of the match is now coming up, and the batsman is now going to face is Fayaz. So 6 overs per side to be played, and ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ so first ball this time driven that one into cover point, and we are getting one more guest in our commentator box, Mr. Masood Kallagudde, famous well-known person of this area. He is now at the crease with in the commentary box with ourselves at this situation. Heartily welcome to you, sir, Mr. Masood. So back to this game. It's straight away driven that one down to a mid-on. Can't got any run for that stroke, and the scoreboard stays at none for none in the first over. 2 balls gone, and Zairuddin. And now here he comes right on round the wicket. Next one from the bowler. Just gone for a big one this time. Missing the line completely. Meantime, the fielders appealing for bowled. But then finally, no damage done, and the batsman survived in this delivery. Just gone for a mighty heave at the last moment by the batsman. Not succeeded. The ball went just right off the off stump at the last moment and went into the hands of wicketkeeper. And the batsman survived in this occasion. Now, Shamir, the non-striking batsman, explaining something to Fayaz that how to bat in this first over of their innings. And a strong breeze is now passing here right from right to left of our ground. And Zairuddin, here he comes, right arm round the wicket ball. This time, driven that one, good piece of fielding made on his follow through made by the bowler. He just collected the ball on his follow through. Half stop made by him, in fact, and back up to by then the fielder at mid on, and there is no possibility of any run. And the scoreboard stays at none for none in the first over. And now Alif Star was batting first, and now once again Zairuddin comes right arm round the wicket to the right-handed batsman. The first power play over of their innings is now progressing here. Again, this time just missing 2 fouls on the off stump. But this time, if they wanted the run at the last moment, but they got in trouble if they wanted the run at the last moment. But at the last moment, they kept back their steps onto their creases at the last moment, and because of that, they survived. And finally, no damage done. So 5 better deliveries bowled in this over by Zairuddin, and this is turning out to be a fantastic over in their team's point of view. Zara 11, and once again, here he comes, right arm round the wicket ball. This time, 2 for Sadi off stump, and a first run came in the face of wide in the innings of Alif Star. It's 1 without loss in the first over. And again, Zairuddin comes last time in this over. Just a single run conceded in this over. This time gone for a big one, not quite middling it. In fact, the ball running down to a point area, and the batsman crossed over for the single before the ball has been collected by the point fielder and back onto the stumps. And with that single run, the scoreboard moving up to 2 without loss. So a fantastic over and a fantastic start in bowling department from Zairuddin. And after first over, after being losing the toss and put it to bat by Zara 11 in the bat number 4 of this prestigious cricket tournament. MULARAPATNA Premier League 2024 Season 4. Alif Star made a pretty slower start. In fact, they managed to score only 2 runs on the board after completion of first over, and a fantastic over came straight from Zairuddin. So fantastic start in the bowling department from him, and now the bowler is now brought into the attack. Is Riaz starting the fresh proceedings from that side in. And still some fielding adjustments is going on there. Second power play over is now going to begin in their innings, and the batsman is now going to face Fayaz. Several fielders stood inside the 20-yard circle to protect the single as far as the rules and regulations of this power play is concerned for this tournament. And first ball, this time the bowler comes on his long run up, in fact. Right arm around the wicket ball. This time lofted that one into the gap as well. I think it might be cut off just inside the fence. And the fielder collected the ball. This could be in trouble if the throw was likely to the stumps at the last moment. But the last moment the fielder just collected the ball.
from the front side of his stumps and flicking the wickets at the last moment after receiving the throw, but at the last moment before that the batsman made the ground very quickly after being completing a second run. So a couple of runs added to the total, and with a couple run the scoreboard moving up to 4 without loss in the first over for Alif Star at the start of the second over in fact. And the bowler once again, here he comes, right arm over the wicket to his next delivery. After being making some fielding adjustments, now here he comes, right arm round the wicket bowls. Riaz the bowler, and the batsman is Fayaz. Here he comes, bowls. This time just gone for a mighty at the last minute, goes on to the front foot, just wanted to hit the ball on the onside, he has not succeeded. The ball went just outside the off stump at the last minute, wide off the batsman's bat reach, and there is no possibility of any run, and the scoreboard stays at 4 without loss in the first over. Again, here the bowler bowls, right arm over the wicket, 2 for outside the off stump, wide declared by umpire. This time he bowled 2 for outside the off stump at the last moment, and the batsman just leaving the ball into the hands of wicket keeper, just seeing that the ball missing 2 for outside the off stump. 1 run added to the total in the face of extras, and with that single run the scoreboard moving up to 5 without loss. Next one, just gone for a big one, missing wicket keeper also misses, collected by the short third man fielder. Once again he can't got any run for that in this delivery in fact, and this is turning out to be one more good over in Zara 11's point of view. 5 without loss in the first over. They desperately have to make a strong start if they are to post a huge target in front of Zara 11 when they coming to bat. As far as the batsmen of Alif Star is concerned at the situation. And now once again lofted that one, this time down to long on, but fielder standing so deep on the long on here, he collected the ball after one bounce, and before that the batsman have got a plenty of time to cross over for the single, and with that single run scoreboard moving up to 6 without loss. So here is an announcement comes, if Shamir hit 1-6 he'll be awarded 1,000 rupees cash prize from Masood. So special announcement for Shamir for hitting a 6, he'll get 1,000 rupees from Mr. Masood. Not in cash, but in Google Pay, okay? So back to this game. Right arm around the wicket, this time just gone for a mighty heave, not succeeded, not quite get that one from the bit of but chase for the fielder at deep back with a square leg, he collected the ball, and before that the batsman come back for the second run before that, and with a couple run the scoreboard moving up to 8 without loss in the over number 2 in progress. Still the batsmen of Alif Star searching for the right track at the situation, and a fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers. Lofted, this time I think he's got the distance, it's a biggie! And at last he's got the 1,000 rupees. He's just looking at the commentator box after hitting a 6. I think he's just looking on the commentator box to Masood, who is now announced already announced 1,000 rupees cash prize by Google Pay for Shamir, and at last he got the 1,000 rupees, not in cash but in Google Pay. However, it will go to his account. Never mind. So the scoreboard is now moving up to 14 without loss now. 2 overs completed, and a fantastic struck came to the bat of Shamir, and with that 6 they have recovered a little bit after being a slower start for Alif Stars. Still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in their innings, and let's see how many runs they will make in this remaining 4 overs with the help of remaining all 10 wickets. The bowler brought into the attack starts the fresh proceedings. Zainuddin in his second over. In his first over he bowled fantastically, conceded just 2 runs in his first over, and now he's going to start his second over, and the third over starts in Alif Star's innings. So after being a completion of 2 overs, the fielding restrictions has been taken off. Fielders are now spread out on the field, and first ball of the third over of the innings is now coming up. Zainuddin, right arm around the wicket, this time missing outside the legs. Oh, misunderstanding cost him one of them back into the pavilion. Non-striker and batsman coming to the other end, and absolutely no way for him to get back to his crease. So run out happened at the non-striker end, and the first wicket lost at last. Wide,
It was a right delivery, in fact. And misunderstanding cost him one arm. The batsman is now back into the pavilion, and now they are losing their first wicket. It's 14 for 1, and the ban Fayaz is now departs. So 14 for the loss of 1 wicket at the start of this third over, in fact, for Elite Stars. After being losing the toss and put into bat by KL Strikers in the match number 4 of this prestigious cricket tournament, MULARAPATNA Premier League 2024 Season 4. And number 3 batsman is now coming out to the middle after the departure of Fayaz. Is one more Fayaz number 2 for him, for their team is now coming to bat. So Fayaz replaced by Fayaz, and now he is now going to face Ziauddin, in fact. And now once again Ziauddin comes right arm round the wicket to the left-handed batsman. This time just gone for a big one by Shamil. Not succeeded. The ball kept lower at the last moment. The ball came along the ground at the last moment and passed it just below off his bat and went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run, and the scoreboard stays at 14 for the loss of 1 wicket in over number 3 in progress. Again, Ziauddin bowls just wanted to switch that one, not connected that one properly. Wicketkeeper also misses, and because of that the batsman crossed over for the single in the face of Bye, and that single run, the scoreboard moving up to 15 for the loss of 1 wicket. A partnership is badly required for the batsmen of Alif Star to get back into this match. They lost their early wicket in the face of Fayaz. Unfortunately, he was run out at the non-striker end. Couple of deliveries back. And now they badly required a partnership if they had posed a huge target in front of the opposition side when they come into bat. And now once again Ziauddin. Here he comes, right arm along the wicket bowls. This time just leaving the ball into the hands of wicketkeeper, just seeing that the ball missing 2 for the off stump, and rightly so, umpire called it a wide, and with that wide run the scoreboard moving up to 16 now for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Quite a little bit recovery after being a shackling start for the batsmen of Alif Stars. Next one, driven that one off the toes, turned to a long on. In fact, he's got a single for that, so clean pick up by the fielder. And the batsmen are finally settled with a single, and with that single run the scoreboard moving up to 17 for the loss of 1 wicket. Still a couple of balls left in this over. 2 balls left, and Ziauddin comes. Still some fielding adjustments making by the fielders, making by the captain of KL Stars at the situation. And once again Ziauddin comes bowling to lefty Shamil, who already hit 1-6 so far in the previous over. Off the toe, just wanted to turn silver on the corner, not succeeded. The ball gets some extra quicker, just missing outside the leg stump and went into the hands of wicketkeeper. There is no possibility of any run, and the scoreboard stays at 17 for the loss of 1 wicket with just a ball to go in this over. Still in the overall calculation, it's going to be 19 balls remaining in the innings, and so Ziauddin once again comes. 19 balls total. 19 balls undu now. So once again here he comes, right arm round the wicket. This time driven that one down to mid wicket. Slight bit of fumble there by the short mid wicket field, and the batsman because of that gone to for a quick single very safely in the end. And with that single run the scoreboard moving up to 18 for the loss of 1 wicket, and 3 overs had been completed. So 3 gone, half the way mark, half have to go. Let's see how many runs they will make in this remaining halfway with the help of remaining 9 wickets. So 18 for the loss of 1 wicket, 3 overs completed, and before the start of the 4th over for the next further comments, I would like to invite once again one more my good friend, talented state Kannada commentator Mr. Tamim to my point. Please come, Mr. Tamim. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ವರೇ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18ರಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರಿಗೆ ಠಾಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜರಾ 11. ದಾಂಡಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಣಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18,
ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಅಂದರೆ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ. NPL 2024 ಮುಲಾರಪಟ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಯಾಜ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರಂತಹ ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಮುಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ ಕಾಣಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಬದುಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 19ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮೀರ್ 2ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರಿಯಾ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 20 ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 20ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಂಡುಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಯಾಜ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರನ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 21 ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ 21ರಲ್ಲಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜರಾ 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೇರ ಗುಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮೀರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸಮೀರ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದಿಂದ. ಸಮೀರ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21 ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಿಯಮವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬೇಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಇನ್ನು ಸಂಜೆವಾಗುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಹಿರಿಯರ ಆಟವಿರುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಹಾಗೂ ಮಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 21ರಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಮನವಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಯಕರನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿನ್ನಿಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಮೌಂಟ್ಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಜಾದ್ ನಗರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ
ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ದಿನ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 24 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ನಿಮಿಷ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಗಿಯುವಾಗ 40 ನಿಮಿಷ ಖಂಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ. 24-26 ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನು 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ನಾಳೆ ಹಿರಿಯರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇರುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 2 ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ತೀರ್ಮಾನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ. ಕೈಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಆಜಾದ್ ನಗರ. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ ಮಾಡಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಆಜಾದ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶಾಫಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ರಫೀಕ್ ಕೈಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಮೈಕ್ ಮಾಡಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Yes is out. Fayaz is back to the pavilion. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 22 22 ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗ ತಾನೇ 4 ದಾಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ರಿಯಾಜ್ ತನ್ಕೂಟದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ತೈಬ್ನವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. End of the 4th over, total miss and 22 of the scoreboard, loss of 2 wicket. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ 22 ಇಬ್ಬರು ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜರಾ 11. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಕ್ಷರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರನ್ನು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಸ್ರಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಗೆಳೆದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ, ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ 1+1 ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 24 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. 24ರಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಗೆಲ್ಲಿದೆ. ಅಸ್ರಾಟ್ ತಂಕುಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತನ್ನಡೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತನ್ನಡೆ. ಲೋಗಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಒಂಟಿ ಬೋಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 25 ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಒಬ್ಬರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಗೆಲ್ಲಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಗೆಲ್ಲಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ರಿಟಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ತಾಯಿ. ಬೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ತೈಬುನವರ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೈಬುನವರ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 25 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಉದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೈಬುನವರ ಜಾಗ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ತುಫೈಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಹೀರೋ ನೋಡಿ. ಅಸ್ರಾರ್ನವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಉದ್ದರಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಾದರೆ ಫಯಾಜ್ ಮುಜೈನ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿತ್ತು. ಎಸ್, ರನ್ಔಟ್. ಮಾರ್ಜೋಕ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮಾರ್ಜೋಕ್ನವರ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಸ್ರಾರ್ನವರೇ, ರನ್ಔಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ 2,000 ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ 25ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಎಸ್, ಔಟ್. ತುಫೈಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ತಂಡದ ಮಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ತುಫೈಲ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ತುಫೈಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 25 ಅಸ್ರಾರ್ ಅವರ ಎಸೆತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಲಿಯಾದರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮಗಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 25ರಲ್ಲಿದೆ. 6 ಉದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಲೈನ್ಸ್. ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ತುಫೈಲ್ ಅವರ ಜಾಗ ತುಂಬಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಶಾಹುಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಲ್ಮಯುತ ಆಟ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ ಅವಲಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್. ಶಾಹುಲ್ ಅಮೀದ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಶಾಹುಲ್ ಅವರ ಆಟ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ. ಎಸೋಕೆ 26ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ತುಳೆ ಅಚ್ಚನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಪೋದು ಬಂದರು ನಮಗೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಟೆ ನನಲಾದ ಈಜೆ ಓಡೆ ಪೋಟೆ ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಬಂಡರಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೋದು ತುಳೆ ಐಟುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಕುತೂನಗ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೋದು ಜರಾ 11 ತಂಡಡು ಬಾಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲಗೆ ಖಂಡಿತ 26ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 26 27 ಸ್ಕೋರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. 26 26ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 more to go. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು
ಒಂದು ಗುದ್ದರಿ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಆಗಲಿ ಅಸ್ರಾರ್ ನಂಬರ್ಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಲೋಂಗಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಸುಲಭ. End of the 5th over, total missile to 27 on the scoreboard. 26 ಆಯ್ತಾ? 26 on the scoreboard, loss of 7 wicket. ಐದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ 26ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 26 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಶುಭ ಆರೈಕೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮದ್ ಇತ್ತಿಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಶುಭವನ್ನ ಆರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮದ್ ಇತ್ತಿಲ್ ರವರೇ. ಮತ್ತೊಂದು ಗುದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫಯಾಜ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 26. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಇರ್ಫಾನ್. 8 ಗುದ್ದರಿ ನೆಲಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇರುವರು ಆಟಗಾರರು. ಈ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಅಸ್ಬಾತ್ ಹಾಗೂ ಸಾವುಲ್ಲಾ ಇತ್ತಿಲು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಲೆಜೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಅಸ್ಬಾ ಹಾಗೂ ಸಾವುಲ್ ಇತ್ತಿಲು. ಅಡ್ಡಚಿನ ನಿಶಾನೆ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ ಎಸೆತ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 28 ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 8 ವಿಕೆಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಯೀದ್ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಉಲ್ಟಾ ದಂಡ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಲೋಂಗಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಅವಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಮೂರನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟರು, 3 ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31 ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್, 31ರಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡು ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 31. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸೆದುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಫಾನ್. ಅಡ್ಡಚಿನ ನಿಶಾನೆ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ ಎಸೆತ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 32. ತೀರ್ಪುಗಾರರಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 32. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ. ಲೋಂಗಾಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಒಂಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವಲಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 34ರಲ್ಲಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜರಾ 11. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. 5ನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಫಾನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾಟಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಒಂಟಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 35 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್, 35ರಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ತನ್ಕೂಟದ ಕೊನೆಯ 1 ಬಾರಿ ಎದುರಿಸುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 6th ಓವರ್, ಟೋಟಲ್ ಮಿಸೈಲ್ ಟು 35 on 36 of the target, loss of 9 wicket.
36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇನ್ನೂ 3 ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್. ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದೃಶ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಹಿರಿಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾಳೆ ದಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠ 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಮುಲ್ಲರಪಟ್ಟಣ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಡಲು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಂತ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ತಂಡಗಳಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟಕರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಲಭ ಸವಾಲು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತವರು ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಗೋಪಿ ಸರ್. धन्यवाद जनाब शाकिल जी. तो जहाँ तक आपके बेहतरीन अल्फाजों के लिए, तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त लक्ष्य का 36 रनों का लक्ष्य. 36 the target in 6 overs for DAY-01, and now innings now going to start, and as far as the required run rate is concerned, exactly 6 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and the first ball of their innings is now coming up. So the openers for DAY-01 is now walking towards to the middle. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್. ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ದಿನ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ನಾಳೆ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿರಿಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ 1 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Right, 36 the target, and Siab, and he has the openers, and the bowler is Fayaz, who will start the fresh proceedings from that side end, and the first ball of the innings is now coming up. And here is the announcement: 1,000 rupees cash prize declared for every 6 for Siab by their team owner Fayaz Al-Muzain. If Siab hit 1/6, he'll get 1,000 rupees cash prize from their team owner Mr. Fayaz Al-Muzain. Declared this prize money for Siab for every 6. He'll getting 1,000 rupees cash prize from the owner of
मिस्टर फयाज अल मुजैन। फर्स्ट बॉल हियर ही कम्स, पहली गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप पर आते हुए इस वक्त रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास किया था, चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, तो 1000 रुपए हर छक्के के लिए यहाँ पर सियाब के लिए घोषित किया उनके टीम ओनर फयाज अल मुजैन ने। तो देखना है कि यहाँ पर सियाब उस इनाम को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं फयाज, दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर, जबकि 2 गेंदें उनके पारी के इस वक्त फेंके जा चुके हैं। और फिर से एक बार सियाब सामना इस वक्त करने के लिए तैयार और फयाज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, 7 से 8 कदम उनका रन अपा, ये गेंद इस बार उछाला है लंगोल पर मौका और इसी के साथ सियाब का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। गेंद को उछाला तो जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और लंगोन पर जो फील्डर खड़े हुए थे गेंद सीधे उनके हाथों में पहुंची और आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो पहली गेंद पहली ओवर में सियाब का विकेट गिर चुका है 0 पर और 0 पर पहला विकेट यहाँ पर खो चुका है ज़ारा 11। इट्स नॉट फॉर 1 इन द फर्स्ट ओवर एंड नाउ सियाब डिपार्ट्स फॉर डक। So still in overall calculation it's going to be 5.3 overs remaining in their innings। 5.3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, यानी 33 गेंदें अभी भी बरकरार, 36 रन और चाहिए विजय के लिए और एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए इस वक्त फयाज यहाँ पर कर चुके हैं। नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडिल। इरफान का आगमन होता हुआ नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फयाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आते हुए विकेट कीपर चूके और गेंद इस वक्त निकल चुकी है थर्ड मैन पर, वहां पर लगभग नेट्स पर जाकर गेंद जब तक टकराए बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन के साथ अपना छोड़ यहाँ पर बदलने का, वाइड का भी इशारा हो चुका है। 1+1 2 runs added to the total and with that couple run the runs are begin for ज़ारा 11। रनों का सिलसिला ज़ारा 11 के लिए शुरू हो चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज फयाज गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ पर विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर, निप बैक अ लिटिल बिट एट द लास्ट मोमेंट और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के बल्ले को वंचित करने के बाद स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। स्टिल 2 balls left in this over और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो फयाज इस वक्त गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहाँ पर जारी रखते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। रियाज इस वक्त सामना करते हुए फयाज की गेंदों का, ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को उछाला इस वक्त, लेकिन गेंद लगभग ऐसा कहना पड़ेगा नारियल के पेड़ के डाल पर लगने के बाद अपने रफ्तार को काफी हद तक खो चुकी है। जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रो करे बैकवर्ड थर्ड मैन फील्डर बल्लेबाज के पास यहाँ पर मौका था 3 रन प्राप्त करने का और 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर है। 1 बॉल लेफ्ट, तो अंतिम गेंद लेकर इस ओवर में गेंदबाज फयाज तैयार और इस बीच इरफान में सामना करते हुए पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ द टोस गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से गेंद को खेल तो नहीं पाए, लेकिन 1 रन नजर मिला इससे पहले कि शॉट्स को लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया जाता है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket। फर्स्ट ओवर came to an end and a next start for the batsmen of ज़ारा 11। They lost their 1 wicket in the face of Siab in the third delivery of their innings, but managed to score 6 runs on the board after completion of first over and still in 5 overs, so that means they're planning 30 deliveries. Still they have to score exactly 30 more runs for victory and still they got 9 wickets in hand। तो मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है और थोड़ी सी बातचीत के बाद गेंदबाजी का जिम्मा इस वक्त सौंपा जा रहा है। गेंदबाज जो कि नंबर 55 की जर्सी पहने हुए इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए हकीम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और
सामना इस वक्त करेंगे। इरफान आता स्ट्राइकर हो स्ट्राइकर इरफान इरफान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और हकीम इस वक्त फील्डिंग में कुछ जमावट करते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और केवल दो मात्र फील्डर इस वक्त 20 गज के दायरे के बाहर तैनात ठीक ही सीमा रेखा के पास वादिस लंगोफ और लंगोन और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर हकीम गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार बैकफुट पर गए सीधे गेंद तोड़ के पॉइंट फील्डर के हाथों में और इसी के साथ दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है और यहाँ पर इरफान खुद अपने आप पर बिलीव नहीं कर पाए, वो यहाँ पर मान नहीं पाए कि गेंद किस तरह इस वक्त पॉइंट फील्डर के हाथों में पहुंची है और आखिरकार स्ट्राइट फॉरवर्ड कैच इस वक्त देते हुए पॉइंट फील्डर के हाथों में और इसी के साथ दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इरफान की पारी समाप्त हो चुकी है, 6 रनों पर दूसरा विकेट तक हो चुका है। यहाँ पर ज़ारा 11 कुछ हद तक संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। तो यहाँ पर मैच नंबर 4 की प्रगति होती है और इस मैच के बाद 2 मैचेस और खेले जाने बाकी है, तो मैं इसलिए दरख्वास्त निवेदन करता हूं कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाएं। प्लीज कंटिन्यू द मैच एज सून एज पॉसिबल because we are running shortage of time at this situation. Still 2 matches to be played after this one, and because of that I request all the players of this match to please continue the match as soon as possible. तो नए बल्लेबाज असरारुद्दीन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार खूबसूरती के साथ इंटू द गैप एज वेल, गेंद को मोड़ दिया, स्कोर ऑफ द विकेट और गेंद इस वक्त जब पॉइंट फील्डर द्वारा फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ स्टंप्स को एक्सपोज करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था, तो वह पॉइंट पर एम्प्टी गैप इस वक्त चुनते हुए 2 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 8 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. Still the equal battle is now on. अगली गेंद इस बार बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी एक्स्ट्रा की करना लूट से मिसिंग 2 फॉर साथ ही स्टंप पर गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन से स्पीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर निश्चित रूप से एक सरदारी की इस वक्त सख्त जरूरत ज़्यादा 11 के बल्लेबाजों को अगर उन्हें 30 रन के लक्ष्य तक पहुंचना है तो खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, इस वक्त पॉइंट पर गेंद जाती हुई गेंद को फील्ड करते हैं, फील्डर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा मस्ती के मामला और यहाँ पर ये विकेट जी यहाँ पर है या नहीं, हाँ या नहीं देखना पड़ेगा और अंपायर ने इस वक्त इशारा किया है तृतीय अंपायर की और इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर नाउ। तो देखना यह है कि यहाँ पर जब विकेटों पर विकेट कीपर ने गेंद लगाए थे तब बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या फिर नहीं। He is gone. He fell short out of his crease और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है, तो तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा परेशानियों के बादल ज़ारा 11 के ऊपर साफ मंडराते हुए। असरुद्दीन आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और यहाँ पर तख्ता कुछ हद तक अब भारी लगता हुआ कैसे आलिफ स्टार इस वक्त तख्ता कुछ हद तक उनका भारी लगता है और नए बल्लेबाज इन संदिग्ध हालातों में क्रीज पर मौजूद एज नंबर 5 बैट्समैन अजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। गेंदबाज हकीम इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए काफी जोरदार हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए और ये जो जोरदार हवा इस वक्त गुजर रही है खिलाड़ियों को और दर्शकों को काफी हद तक इस भीषण गर्मी से राहत यहाँ पर दिलाते हुए और इस बीच गेंदबाज हकीम गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज अजीम के लिए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, एक से कवर पर रन के लिए दौड़ पर स्ट्राइक कर रन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले की थ्रो पहुंचे बल्लेबाज तेज रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा 1 रन में पूर्ण कर चुके थे।
ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार कोई दिक्कत ही नहीं हुई इन दोनों बल्लेबाजों को एक रन पूर्ण करने में और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर यानी 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी और अंतिम गेंद इस ओवर में शेष है। लास्ट बॉल रिमाइंडिंग दिस ओवर। कुछ बातचीत इस वक्त चलती हुई गेंदबाज और टीम के अन्य खिलाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पर एक और इनाम घोषित किया गया है। अगर कोई बल्लेबाज ज़ारा 11 का चौका लगाता है तो 500 रुपए का नकद पुरस्कार जो ज़ारा 11 के टीम ओनर है फयाज अल मुजाहिन इनके ओर से घोषित किया गया। फॉर एवरी बाउंड्री the batsmen of Zara 11 will get 500 rupees cash prize from their team owner Fayaz Al Muzain। तो इस बीच ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा। गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 11 for the loss of 3 wickets and 2 overs completed. Still the equal battle is now on and 19 more runs now they have in fact 25 more runs now they have to score for victory in the remaining 24 deliveries और required run rate जो है exactly 6.25 runs per over the situation for them। तो शाम का वक्त 4:05 यहाँ पर बच चुके हैं और धूप की तीव्रता इस वक्त काफी हद तक कम जरूर हो चुकी है लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट इन द नेम ऑफ मुल्लारपटना प्रीमियर लीग सीजन 4 2024 इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर फैंटास्टिकली। और जहाँ तक सवाल है मैच नंबर 4 का तो इस मैच में ज़ारा 11 और अलिफ स्टार 2 टीमें इस वक्त भिड़ रहे हैं और एक बेहतरीन संघर्ष कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है विजय के लिए। इस मैच में फयाज अपना दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए और गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। So 1 + 1 2 runs now added to the total in the face of wide 2 wides and scoreboard is now moving up to 13 for the loss of 3 wicket। अगली गेंद लेकर गेंदबाज फयाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ बाएं हाथ के बल्लेबाज अजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ तक बढ़ता विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को हल्की से स्कूप कर दिया। इस वक्त कवर पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद निकल चुकी है। इस वक्त जब तक भी कवर पॉइंट पर फील्डर गेंद को फील्ड करे दोनों फील्डर टकराने के बाद उनमें से एक फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 14 for the loss of 3 wicket। 22 runs more run now they have to score for victory in remaining 23 deliveries और गेंदबाज फयाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को छोड़ दिया। इस वक्त वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। तो रियाज इस वक्त सामना करते हुए और फयाज इस वक्त यार गेंदबाजी करते हुए गेंद इस वक्त गेंद सीधे पहुंचे एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में। इस बार ऑफ द बैकफुट गेंद के स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कूप किया था लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा द प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट। एक्स्ट्रा कवर स्वीपर पर गेंद को लपक लिया गया खूबसूरती के साथ बेहतर जजमेंट के साथ फील्डर द्वारा एक और विकेट गिर चुका है। रियाज रिपोर्ट्स एंड विद दिस डिसमिसल आई मस्ट से Zara 11 are now looking in trouble।
15 for the loss of 4 top enders wicket. Really a testing time continuing here for the batsmen of Zara 11. Still they have a long way to go. 21 more runs required. 22 balls remaining, but the main question stands about the wickets. They got only 6 wickets in their hand, and in this critical circumstances, the man, number 6 batsman, is now comes out to the middle. Sahul, number 6 बल्लेबाज की हैसियत से इन संदिग्ध हालातों में क्रीज पर कदम बनाकर इस वक्त क्रीज पर मौजूद है बल्लेबाज साहुल, और इस वक्त फयाज गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए 22 गेंदें बाकी, 21 रन चाहिए विजय के लिए। बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद तो खेलना चाहे, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बिहाइंड द स्टंप्स, बट द बॉल मिसिंग टू फॉर साइड ऑफ स्टंप एंड इट्स अ वाइड। और वाइड का ये रन इस वक्त जुड़ चुका है उनके खाते में, और वाइड की रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर कहना पड़ेगा। तो एक बार फिर से फयाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता, क्योंकि इस बार कुछ ज्यादा हद तक गेंद लेग से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे, सही गेंद घोषित, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन ओवर नंबर 3 in progress. Prolonged over progressing here so far from the bowler Fayaz. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, फयाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। विकेट कीपर इस वक्त फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद फयाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ट्राई कर दिया मिड ऑफ पर, रन बल्लेबाज काफी आगे निकल आया, लेकिन एंड मौके पर कदमों को क्रीज पर खींचते हुए वहां पर दूसरे खिलाड़ी जो कि उन्हें डांटते हुए क्योंकि क्यों तुमने निशाना इस वक्त स्टंप्सों पर नहीं दागा। अगर शायद वो निशाना दाग दे, अगर उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता तो शायद नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज मुश्किल में पड़ सकते थे। तो इस बार उन्होंने कोई रिस्क उठाना मुनासिब नहीं समझा, थ्रो नहीं फेंका, और आखिरकार बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर वापस, और कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर फयाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज साहुल सामना करते हुए। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। हर डॉट गेंद के साथ इस वक्त दबाव बढ़ता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार फयाज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस बीच बल्लेबाज साहुल सामना करते हुए। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, एंड दिस टाइम आई थिंक इज गॉन। The ball just chipping the wicket at the last moment, just keeping the wicket, just touching the wicket in fact at the last moment, and it went into the hands of wicket keeper after kissing the wicket. So one more wicket fall. The problems are now more building up for the batsmen of Zara 11. Now it's 16 for the loss of 5 wicket. 3 overs have been bowled. So half the way mark, still half have to go. And 15 more runs now they have to score for, in fact it's 20 more runs now they have to score for victory in the remaining 18 delivers, and that means in the remaining 3 overs with a required run rate of exactly 66.66 runs per over. So still the equal battle is now on, and it's going to be 50-50 at the situation. And the fourth over starts from that side end. The bowler starts the fresh proceedings, और गेंदबाज नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए। 16, 20 needed in 18 balls, 3 overs. 16 for the loss of 5 wickets. तो शाम के 4:15 यहाँ पर बच चुके हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर धूप की तीव्रता काफी हद तक यहाँ पर कम हो चुकी है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। और इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट मुल्लारपटना
Premier League Season 4 2024, the match number 4 of this tournament, prestigious cricket tournament, is now progressing here fantastically. The first ball of the fourth over of Zara 11's innings is now coming up. Bowler? Zairuddin. Bowler? Bowler Samir. समीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. Batsman is Zairuddin, Striker? अजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए. 18 गेंदों में 20 रनों की दरकार और निश्चित रूप से यहाँ पर बराबर का संघर्ष जो कि यहाँ पर जारी है. और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार है. लेफ्टी बैट्समैन टू लेफ्टी बॉलर, दिस टाइम ही lofted that ball into the commentator box for a boundary. This is a fantastic strike came from the bat of Azim. This time he lofted that one and finds the gap as well in between deep backward square leg and the deep mid wicket, and the ball went straight into our commentator box and one of the spectators just fielded that ball inside the commentator box, and finally boundary results. And with that boundary I must say Zara 11 are now back in the game a little bit. 20 for the loss of 5 wickets, and now it's going to be 17 balls remaining, 16 runs required. What a match is now progressing here. So he already grabbed 500 rupees cash prize for that boundary, which is announced by the owner of their teams, owner of Zara 11, Fayaz Al-Muzain, and he got a 500 rupees cash prize for that boundary. अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद स्टीयर करना चाहा, इस वक्त गेंद पहुंच चुकी है थर्ड मैन पर. वाइड का इशारा. इनफैक्ट जस्ट वेट फॉर द अंपायर डिसीजन. नो, इट्स अ बाय, इट्स नॉट अ वाइड. पहले हाथ जरूर उठाते हैं वाइड के लिए, लेकिन अंतिम एक्शन में अब वाइड इस वक्त घोषित करते हैं. तो 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल. तो 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे. 22 now for the loss of 5 wicket. 14 needed. The things getting much easier now for the batsmen of Zara 11. गेंदबाज इस वक्त समीर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ पर विकेट. निस्संदेह चंद गेंदों की इस वक्त सख्त दरकार अली स्टार के गेंदबाजों को यहाँ पर वापसी करने के लिए, और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. पहली गेंद डिफेंसिवली, जस्ट बैकवर्ड डिफेंस, प्लेड दैट वन डेलिकेटली, सेंसिबली कवर पर, शॉर्ट कवर पर. जब तक गेंदबाज खुद अपनी बाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 23 for the loss of 5 wicket. 13 needed in remaining 16 deliveries. Still the battle is now on. गेंदबाज समीर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए. ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा. बेहतर गेंदबाजी, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर. It played the last moment and went into the hands of wicket keeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 21 रनों पर. 15 रिक्वायर्ड in fact. इस बार उछाल दिया गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, not more than a single. That single the score board moving up to 24. 12 required now. समीर 24 रन बन चुके, 12 रन चाहिए, गेंदे बाकी है यहाँ पर 14. 12 needed in 14 balls. और गेंदबाज समीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. जैरुद्दीन सामना करते हुए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद विकेट कीपर चूके. गेंद इस वक्त शॉर्ट कटबान फील्डर के हाथों से भी चूकी. 1 रन का इजाफा 22 के रूप में, और 22 के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर. 25 for the loss of 5 wicket. Good 6 wicket partnership is now building up between these two batsmen, Azim and Zairuddin. Just take charge of their innings. और एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर निभाते हुए
और समीर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ पर राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार वन साइड पर टॉप स्कोप इस वक्त कर दिया खूबसूरती के साथ गेंद के उछाल को भागते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर क्लीन पिकअप, दूसरा रन लेना चाहते नहीं मिलेगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंच चुकी है। थ्रो के रूप में एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 26 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 26 with a loss of 5 wicket and over number 4 has been a game student. 10 needed in remaining 12 balls, that means in 2 overs. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಲೈನ್ಸ್. ತದನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ CR7. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ದಿನ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. धन्यवाद जनाब शकील। तो जहां तक सवाल है इस वक्त 12 गेंदे 10 रन, जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाए। कृपया मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट निवेदन यहाँ पर करता हूँ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से। और 12 गेंदों में 10 रन चाहिए, ज्यादा 11। और इस बीच पहली गेंद लेकर तैयार, इस बार लेग स्टंप पर आते हुए फाइन लेग फील्डर चुके गेंद इस वक्त फाइन लेग की दिशा में जाते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और यहाँ पर 2 रन प्राप्त कर चुके हैं। विकेट कीपर के बॉल से बाहर ये थ्रो, लेग बाय के रूप में 2 रन। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 28 रनों पर 28, 8 रिक्वायर्ड, 11 बॉल से मैनिंग। ज़्यादा 11 का जहां तक सवाल है तो यहाँ पर फारूक मुत्तूर इनके मार्गदर्शन में, इनके कोचिंग में ज़्यादा 11 इस वक्त एक बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए और निस्संदेह मैच में जीतने की पूरी कोशिश करते हुए और उन पर पाबंदी लगाने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर अलीफ स्टार के गेंदबाज और हकीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और 11 रन चाहिए, माफ कीजिए 8 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी। अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, हकीम ये गेंद ऑफ द टॉस इन द एयर एंड टेकन एट मिड विकेट. He just checked the shot at the last moment and well judged wicket taken by the mid-wicket fielder, just jumping towards to his top side with both hands with a perfect judgment. अपने ऊपर के छलांग लगाते हुए बेहतर जजमेंट के साथ शॉर्ट मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया और इस बेहतर कैच की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है अजीम का और इस विकेट के पतन के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा they are looking once again in trouble. 8 needed and 10 balls remaining. Batsman. So the match is now still in balance. In fact, in this critical circumstances, the number 8 batsman is now comes out to the middle. और नए बल्लेबाज के रूप में सिद्दीक इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और 10 गेंदे 8 रन बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी है इस ढलते हुए शाम में इन दोनों प्रतिष्ठित टीमों के बीच में अलीफ स्टार और ज़ारा 11 के बीच। और इस बीच गेंदबाज हकीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज सिद्दीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलते हुए निश्चित रूप से दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता नजर आता हुआ और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। और गेंदबाज इस बीच हकीम दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए विकेट कीपर जो कि विकेट में उस वक्त विकेटों के पीछे से इस वक्त फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए और हकीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज नए बल्लेबाज सिद्दीक इस वक्त सामना करते हुए लेग से बाहर की ओर गेंद जाते हुए वाइड का इशारा 1 रन एक्स्ट्रास के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है। 29 रन इस मौके पर वाइड फेंकना सामने वाली टीम को तोहफे के रूप में उपहार के रूप में रन प्रदान करना के बराबर होगा और यहाँ पर वो गलती को यहाँ पर गेंदबाज बार बार दोहराते हुए और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस तो खेलना चाह शॉट फाइनल पटनी साला एंड इज गॉन
direct hit, and at last the batsman is not dismissed. जहीरुद्दीन जोखिम भरा रन चुराना चाहते थे और शॉट तो फाइन लेग फील्डर का फेंका गया, सीधा थ्रो स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ, और इसी के साथ 7वां विकेट गिर चुका है. 7 needed in remaining 9 balls. What a fantastic match is now progressing here. और ज़रा 11 एक बार फिर से ऐसा कहना पड़ेगा, मुश्किलों के दलदल में यहाँ पर धंसता हुआ इस विकेट के पतन के साथ. तो डॉट गेंदों की सख्त जरूरत इस वक्त अलीफ स्टार के गेंदबाजों को इस मैच में कमबैक करने के लिए, और इस मुश्किल से हालातों में नए बल्लेबाज के रूप में एज ए नंबर 9 बैट्समैन ಅದು ಸುಬೇಗ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇನ್ನೂ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ದಿನ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿರಿಯರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. थैंक यू सर. तो यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हकीम 9 गेंदे 7 रन. इट कुड बी anybody's game at this situation. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद हकीम नए बल्लेबाज मुनैफ इस वक्त सामना करते हुए हकीम की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 4 से 5 बार गेंद को जमीन पर टिप्पा खिलाने के बाद अपनी और की अगली गेंद लेकर तैयार होने के लिए गेंद इस वक्त मुनैफ के लिए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर. 6 रनों की जरूरत है. काफी अतिरिक्त रन यहाँ पर एक्स्ट्रास अतिरिक्त के रूप में प्रदान कर चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज. फलस्वरूप इस वक्त उम्मीदें अभी भी बरकरार ज़रा 11 के बल्लेबाजों के लिए. 6 रन चाहिए, 9 गेंदे बाकी, और हकीम गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना था, बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग विकेट कीपर द्वारा, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर एट दिस सिचुएशन. अंपायर for the third umpire run out. So just we have to wait for the third umpire decision whether it's a run out or not at the non-striker end. तो यहाँ पर तृतीय अंपायर ने मांग की है कि गेंदबाजी करते समय गेंदबाज का शरीर का कोई अंग विकेटों पर टकराया है या नहीं, हाथ या पैर शायद टकराया है या नहीं, ये जानने के लिए इस वक्त तृतीय अंपायर के लिए मांग की गई है मेन अंपायर द्वारा. तो यहाँ पर पैर जो कि टकराया था, तो यहाँ पर हिज लेग्स टच टू द स्टंप्स. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತೀರ್ಪುದಾರರೇ, ಅವರ ಕಾಲು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಬೌಲರ್ ಇದು. Yes. So because of that, umpire called it a no ball. तो गेंदबाजी करते समय इस वक्त गेंदबाज का पैर जो है स्टंप्सों पर टकराया था, स्टंप्सों पर लगा था, तो यहाँ पर नियमानुसार इसे नो बॉल इस वक्त अंपायर घोषित करते थे. So with that no ball run, the scoreboard is now moving up to 31 for the loss of 7 wickets. 5 needed. So free hit delivery for the batsman. 9 balls, 5 runs required. और गेंदबाज इस वक्त हकीम गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए तैनात राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, डॉट बॉल. Still a couple of more dot balls needed for the fielding side to get back into this match at this situation. Now
8 balls. In fact, something happened. Something happened at the striker end. Just we have to wait for the umpire decision. And this time, he is back into pavilion in the face of run out, in fact. So funny things has happened here in the middle of the bit. So 5 needed. And 8 wickets down. 2 wickets left. ಬಾಲ್ ಇರ್ತದ ಪಾಂಡ್ಯ ರನ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲ 8 balls and 5 runs required. 8 wickets down. 8 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ, 2 ಉದ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 31. 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ. Let's continue, sir. 8 balls, 5 runs required, 2 wickets in hand. So what a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. Number 10 batsman is now comes out to the middle. ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡ तो जुनैद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त स्ट्राइकर रहते नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। और इस बीच गेंदबाज हकीम गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए 8 गेंदे 5 रन 2 विकेट सुरक्षित। गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके और रन के लिए दौड़ पड़े बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं। 1 more run added to the total. फील्डर की विकेट कीपर की गलती की वजह से यहाँ पर रन से बने 1 और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 32 रनों पर। 32 for the loss of 8 wickets now. So 7 balls and this time he's gone. तो यहाँ पर अपील जारी हुई थी, रन से पूरा करने के बाद कुछ तकरीर से बाहर निकल आए बल्लेबाज और इसे देखते हुए विकेट फील्डर ने विकेट यहाँ पर चटका दिए। और इस अपील ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ತೀರ್ಪುದಾರರ ಮನವಿ, ತೀರ್ಪುದಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ನುರಿತ ತೀರ್ಪುದಾರರು, ಅದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುದಾರರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತವರು ತೇಜಪ್ಪ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಟಗಾರರು ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ, ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಾರ್ದು. 32 आता है सही आता है 32 सही आता है 32 for the loss of 9 wicket. The last batsman, number 11 and the last batsman is now coming out to the middle. And now it's going to be 7 balls remaining, 4 runs to get and the last wicket in hand. So this is really going to be the best match of the tournament so far. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಪುದಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೀರ್ಪುದಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಪುದಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೀರ್ಪುದಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುದಾರರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ದಿನದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂತಿಮ 1 ಉದ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 9 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. 32 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 7 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 4 ಬೇಕಾಗಿದೆ. Continue, sir. Thank you, sir. 7 balls remaining, 4 runs required. Last wicket in hand. Number 11 and the last batsman, Saifullah is now going to face the bowler Hakeem. So the last time in this over, Hakeem comes right arm round the wicket. Still some fielding adjustments is going on there. 4 required, 7 balls remaining, and the last wicket they got kept intact. और गेंदबाज इस वक्त हकीम फील्डिंग में इस वक्त जमावट करने के बाद अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। विकेट कीपर इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और अंतिम बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए। और हकीम
इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अंतिम बल्लेबाज सैफुल्लाह नंबर 11 बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। लेकिन इस बार लेग स्टंप पर शॉट फाइन लेग पर रन का खतरा और इसी के साथ यहां पर यह मैच आलिफ स्टार 3 रनों से जीत चुका है। वाइड का इशारा हो चुका है, 2 रनों से इस मैच जीत चुका है। They were bundled out for 33, chasing the victory target of 35 with 7 balls to spare in their innings, and they were all out for 33 in 4.5 overs. They were all out for 33 in 4.5 overs, and they lost the match by 2 runs. So what a thrilling victory for Alif Star by 2 runs, defeating Zara 11. They defended the total of 35, and at last Zara 11 bowled out for 33 under their stipulated 6 overs. That means in 4.5 overs, and finally they lost the match by 2 runs with the 7 balls to go in their innings. So fantastic victory, memorable victory for Alif Star against Zara 11, and with that victory they back the complete pass. So fantastic match number 4 of this prestigious cricket tournament, MULARAPATNA Premier League season for 2024 has been came to an end. And now the match number 5 is now going to begin with the short while till then we're taking a short break, and we'll be back right after the short break with the match number 5 will going to commence. Thank you. Dhanyavad. ಮಗದೊಂದು ತಂಡದ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ತದನಂತರ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ CR7 ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ CR7 ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ CR7. ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ CR7 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ತೀರ್ಪುದಾರರೇ. ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಕೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. So match number 5 is now going to start, and before the match number 5 is going to start, I'd like to invite my senior most reputed person, Mr. Janab Shakir, to please continue with the committee procedure in our state language, sweet language, Kannada. Thank you. Please come, sir. Thank you, sir. Gopi, sir. ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದಂತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸತತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಂತ ತಂಡ ಕೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸೋತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಯ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡ. ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ CR7 ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತು. ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಯ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನವಾಜ್ ರವರು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು ತೀರ್ಪುದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 2 ದಿನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ನವಾಜ್ ಅವರೇ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. CR7 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಸೋತಿತ್ತು. ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒತ್ತಡವಿದೆ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್, 1 ಮಿನಿಟ್ ಜಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಜರಾ 11 ಹಾಗೂ ಅಲಿಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫಯಾಜ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಫಯಾಜ್ ರವರು. 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಬಲಿಸಿ ರೋಚಕ ತಿರುವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫಯಾಜ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಪಿ ತೀರ್ಪುದಾರರನ್ನ ಗಾಟಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನವಾಜ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಫಯಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಯಿದ್ MS ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದಂತ ಫಯಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಪಿ ಬಲಸ್ವ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಸಾಪಿ ಅವರ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟವನ್ನ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ. ಮಗದೊಂದು ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ. ಸತತ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 3 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 3 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಬಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಾಪೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ ಪರವಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನವಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಮೀಜ್ ರವರಿಗೆ ಜೀವದಾನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಜೀವದಾನದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ರಮೀಜ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳಕೊಳ್ಳದೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ನವಾಜ್ ಅಂಡ್ ರಮೀಜ್.
ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅನಸ್ ಹಾಗೂ ರಫೀಕ್ ರವರು ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಈ ಬಾರಿ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ಅಂಡ್ ರಮೀಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನೆಸೆಯಲು ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸಜ್ಜಾದ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇಂಜರ್ ಮ್ಯಾನ್ ನವಾಜ್. ತೀರ್ಪುದಾರರನ್ನ ದಾಟಿ ತೀರ್ಪುದಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರರು ದೇಜಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಕಿಶೋರ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಚೆಂಡು, ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಜ್ಜಾದ್. ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸೆತವನ್ನ ಎಸೆಯಲು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ. ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು, ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದಂತೆ. ಜಮ್ಸೀರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 5. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಬಾರಿ. ಮಗದೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ರಮೀಸ್ ರವರ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾದ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಚಿಕೆ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೀಸ್ ಎಸ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಗಾರ ಸಜ್ಜಾದ್, ಖ್ಯಾತನಾಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಡತೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಪುದಾರನ ಮುಖೇನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತ ಇರುವರು ತೀರ್ಪುದಾರರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ತೇಜಪ್ಪ ಸರ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸೋತ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಂಸೀರ್ ರವರ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಳಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ತೀರ್ಪುದಾರರ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನವಾಜ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನ. ತಹಸೀಲ್ ರವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು, ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡು, ಲಾಸ್ಟ್ 1 ನಾಟ್ ಗೋ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಜ್ಜಾದ್ ಟು ನವಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುಖೇನ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 10. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು ಝರಾ 11. 36ರ ಮುಂದೆ 36ರ ಸವಾಲ, 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 36 ಓಟದ ಸುಲಭ ಸವಾಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲುವ ಮುಖೇನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಝರಾ 11. ಅರ್ಹವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ರವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಒಲಿದು ಬಂತು. ತೃತೀಯ ಓವರನ್ನೇ ಸೇಲು ಅಪ್ರಾಜ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಅಪ್ರಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ರಮೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೀಸ್ ಅವರಿಗೆ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ವಾಜ್ ರವರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾನ್ವಾಜ್ KSA
2,000 ರೂಪಾಯಿಯ ನಗದು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಕೋರರ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ತೌಫೀಕ್ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ರಾಸ್ ರವರ ಪತ್ತಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಆಟಗಾರ ಶಂಸೀರ್ ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಪಿಚ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಶಂಸೀರ್. ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಿಗೆ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಶಂಸೀರ್ ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 10. ಅಪ್ರಾಸ್ ತನ್ನ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚುರುಕಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ನ್ಯೂಮ್ಯಾನೇಜ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಮಾಲಕ ರಫೀಕ್ ರವರ ಆಗಮನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಪ್ರಾಸ್. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಪ್ರಾಸ್ ಟು ರಫೀಕ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ನಾಟ್ ಔಟ್. ಉತ್ತಮವಾದ ತೀರ್ಪುದಾರನೆ. ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುದಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರ ತೀರ್ಪು ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಖರವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಬಲ್ಲಂತವರು ಕಿಶೋರ್ ಅಂಡ್ ತೇಜಪ್ಪ ಸರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ. ತಮಗಿದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್, ಟೋಟಲ್ ಮುಸ್ಲಾನ್ ಟು 12, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ 3 ವಿಕೆಟ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸಜ್ಜಾದ್. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಮಾಲಕ ರಫೀಕ್ ಕೈಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಫೀಕ್ ರವರು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ತೋರುವಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾದ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 13. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 14.
ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ CR7 ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಗೆಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ವೈಫಲ್ಯ. ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಜ್ಜಾದ್. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸಜ್ಜಾ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಮಂಗಾಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ MPL ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂತವರು ಆಟಗಾರ ರಫೀಕ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ದಾಖಲಾಗದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಬಹುತೇಕ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 14 ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಹೇಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ರಿಜ್ವಾನ್ ರವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಸುಹೇಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಡಗಬೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಡಗಬೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು, ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರರು MA ಆಜಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸತತ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಡಗಬೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರರಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಡಗಬೆಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ MA ಆಜಬ್ಬ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೀಪ್ರವರ ಬುದ್ಧರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 14. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 14. ರಫೀಕ್ ರವರೇ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಓಟಗಳು ಹರಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 20-25 ಓಟವನ್ನಾದರೂ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ರೋಚಕ ಘಟ್ಟವನ್ನ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ 35-40 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ ರಫೀಕ್ ರವರೇ. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿಲು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಖರವಾದ ಲಯವಾದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ಡೇಂಜರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ನವಾಜ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಅದು ಕೂಡ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 14. ಇನ್ನು 10 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಬಹುದು? ಸುಲಭ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಬಹುದಾ? ಸಾವುಲ್ ಹಲೆ ಹುಲಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾವುಲ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಸಾವುಲ್ ರವರು ಲೆಜೆಂಡ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೈಸ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಹಿರಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದೀಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಫೀಕ್ ರವರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇನ್ನೂ 1 ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 5:01 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನುಭವವನ್ನ ಧಾರೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಶಂಶೀರ್ ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ
ಈ ಒಂದು ಪಿಚ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಗಾಯಾಲಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು. ಗಾಯಾಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 15. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟು ಗೋ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 5ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಪಿ ಬಡಕಬೇಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಓರ್ವ ಎಸೆತಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಧೀರ್ ಸರ್, ಸರಿ ತೇಜಪ್ಪ ಸರ್. ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ ಮನವಿ. 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಸೆಣಸಾಟ. ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಔಟ್. ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಶಾಫಿ ಪ್ರಪಂಚ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್ 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇವಲ 15. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಇನ್ನೋರ್ವ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸವಾದ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಾಸ್. ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 16. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಜಾದ್ ಲಯನ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದೂರದ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿಯಾಬ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಎಸ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೆ ಆಘಾತ. ಸಾಪೀರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖೇನ ಮಗದೊಂದು ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಸವಾದಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ರವರ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಕೊಂಡಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಸಿನಾನ್ ರವರಿಂದ. ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ತಮೀಮ್ ರವರ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ. 16ರಲ್ಲಿದೆ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿ 30-35 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್. ಮತ್ತೆ ಸಾಪೀರ್ ಅವರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ಕ್ಯಾಚ್. ಸಿನಾನ್ ರವರೇ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ ರವರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಸವಾದ್ ರವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಬಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ರವರಿಂದ 3,000 ನಗದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ರಾಫ್ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಇವರು ಕೂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸವಾದ್ ರವರಿಗೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಲಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತೌಹೀದ್ ರವರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಬಲಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೌಫಾಲ್ ರವರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2
2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸ್ಸಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು CR7 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 17. 8 ಉದ್ದರಿಯನ್ನ ಕಳಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಕಮಲ್ ರವರೇ, ಸುಲಭ ಸವಾಲು. ಈ ಒಂದು ಕೂಟದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 17 ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋಲರಿಯದ ಸರದಾರ ಬಡಗಬೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸತತ 4ನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತ MA ಆಜಬ್ಬ ಮುಲಾರಪಟ್ನ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಸೂದ್ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡ ಇವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ದೂರದ ಮೂಡಿಗೆರೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನವನ್ನ ತಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಆರ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಿಆರ್ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ತವೀದ್ MB ಹಾಗೂ ನೌಫಾಲ್ ರವರು ಮೊಮೆಂಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಪಾಜ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ನೌಫಾಲ್ HV ಮಾಲಕತ್ವದ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒತ್ತಡ. ಎದುರಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ CR7. 36 ಎಸೆತವಿದೆ, 18 ಬೇಕಾಗಿದೆ. CR7 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ತವೀದ್ ನೌಫಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. CR7 ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ CR7 ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟು ನಾಸೀರ್ MP. ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೀಫ್ 36ರ ಮುಂದೆ 17ರ ಸವಾಲು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸವಾದ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೂ ಸೈ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಗೂ ಸೈ ಅನ್ನುವಂತವರುವ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಸವಾದ್. ಅನೀಪ್ರವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಟ್ಟುವ ಮುಖೇನ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು 18ರ ಸವಾಲು ಸುಲಭ ಸವಾಲನ್ನ ಬೆನ್ನಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಮಗಿದು ಅಂತಿಮ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಡಾಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ 4-3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸವಾದ್ರವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು. CR7 ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಾನ್ ರವರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಿಸಿದರು ಸವಾದ್ರವರಿಗೆ. ಇದು ಖ್ಯಾತ
ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತ ಸವಾದ್ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೂ ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಎರಡು ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ರಫೀಕ್ ಕೈಸ್ರವರೇ, ಏನಿದು ನಿಮ್ಮ ತಂಡ? ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರೇನೋ? ಹಲವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಎಸ್ 1+1, ಎಸ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸೋಮವಾರ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸವಾದ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿ ಆ 18 ಓಟವನ್ನು ಕೇವಲ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸವಾದ್ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ MA ಆಜಬ್ಬ, ಸದಸ್ಯರು ಬಡಗಬೆಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಸವಾದ್ರವರಿಗೆ ಸಿನಾನ್ ರವರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾದ್ರವರ ಬನ್ನಿ. ಸವಾದ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾದ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡ, ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ CR7. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಖ್ಯಾತನಾಮ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸುಮಧುರ ಕಂಠದ ಮುಖೇನ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿದು ಸ್ವಾಗತ. Field first. Sir, go sir. 1,000 rupees. Sawad 2 6. So Samad receiving the man of the match award for his wonderful batting knock of 17 runs, including 2 massive sixes. He'll be rewarded 1,000 rupees cash prize. So congratulations for Samad and best of luck for the rest of the matches of the tournament. So thank you Mr. धन्यवाद जनाब शाकिर जी. निसंदेह आपका बेहतरीन अल्फाजों के लिए शुक्रगुजार हैं हम. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस मैच का, तो इस वक्त मैच नंबर 6 आज का शुरू होने जा रहा है. So the match starts between CR7 versus Star Emirates, and the news is here from the center that the captain of CR7 after won the toss elected to field first, and just we have to wait for the first ball of the match number 6 of this prestigious cricket tournament, MULARAPATNA Premier League Season 4 2024, which is proudly presented by MULARAPATNA Friends. And now we are just waiting for the first ball of the match. The fielders of CR7 are now spun out on the field, and we are just waiting for the openers of Star Emirates, and Star Emirates openers, I request the openers of Star Emirates, please go for bat immediately, because we are running a shortage of time, and because of that I request the openers of Star Emirates, please go for bat as soon as possible.
ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಓಪನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಬರ್ತೀರಿ. So match number 6 of this prestigious cricket tournament, the MULARAPATNA Premier League season for 2024 is now going to start, which proudly presented by MULARAPATNA Friends Cricketers. And the openers of Star Emirates are the crease are Sinan and Mansoor. Meantime, the bowler Sajid starts the fresh proceedings from that side end, and we are just waiting for the first ball of the match. And the first ball of the match is now coming up. Sajid to the right-handed batsman Sinan, right arm over the wicket where he bowls. First ball of Sajid of time, delicately steering it away down to body point area, and they come back for the second run and get it comfortably at last before the ball has been collected by the backward point fielder, just running towards to his left side at the last moment, and because of that the batsman got a couple of runs for that stroke, and with that couple of runs the runs are going to begin for Star Emirates. 2 without loss in the first over, and now once again Sajid making some fielding adjustments. Point fielder brought a little bit of a squarer for the right-handed batsman Sinan, and now once again here he comes, right arm around the wicket to the right-handed batsman Sinan. Here he bowls just change of pace, bowling a leg spin delivery this time, and the batsman just defensively played into the hands of the bowler, and there is no possibility of any run, and the scoreboard stays 2 without loss in the first over for Star Emirates. So this is going to be a really testing time for the batsmen of Star Emirates, because they lost their first match, and they desperately have to make a win in this match if they have to remain in this competition. In fact, this time we just wanted to loft it, therefore not connected that one properly. In fact, he's got a single for that stroke, and with that single run the scoreboard moving up to 3 without loss and the open number first in progress. And as far as the standing is concerned for CR7, they won their first match because of the fantastic batting performance shown by Sajid. They scored 33 runs, and because of his help they registered a first victory in this competition, and they are just looking for their second victory in the second match. Next one from Sajid, lofted this time 2 squarer, but he got just a single for that stroke. If he hit that one little bit of a straighter, he would have been a get a boundary for that, but this time he played that one a little bit of a squarer, and because of that he's got only a single for that stroke, and with that single run the scoreboard moving up to 4 without loss in the first over. And as far as the good score is concerned for the openers of Star Emirates, they desperately have to make a strong start if they have to post a huge target in front of the strong batting lineup of CR7 when they come on to bat. And now the first over of the innings is now progressing up. Off cutter delivery. This time played that one into the hands of Sati. Oh, this could be disaster there for the batsman if the throw was directed to the stumps at the last moment. But the throw went just wide of the stumps, and the batsman back to his crease very safely. Lucky escape for the batsman. And the scoreboard stays at 4 without loss in the first over. Now once again Sajid, here he comes last time in this over. Right arm around the wicket bounce. Outside the leg stump this time. Down to a short fine leg fielder also misses. And wide declared by umpire. 1+1 added to the total. Couple of runs added to the total, and with that couple of runs the scoreboard moving up to 6 without loss in the over number first in progress. And Sinan and Mansoor, the openers for Star Emirates, just trying to give a good start for their team. And now once again last time in this over Sajid comes right arm around the wicket, bowling to the right-handed batsman. This time just wanted to loft that one, misses. Wicket keeper also misses. Short third man fielder also misses, and the batsman got a single for that stroke in the face of leg by, and with that single run the scoreboard moving up to 7 without loss. So first over has been came to an end in Star Emirates innings. So after completion of first over, Star Emirates after being losing the toss and put it to bat by CR7 in the match number 6 of this prestigious cricket tournament, MULARAPATNA Premier League season for 2022-4. They made a steady start. In fact, they managed to score 7 runs on the board yet to lose any wicket after completion of first over.
So Naufal brought into the bowling attack, and he'll be starting the fresh proceedings from that side end. And the striker is Sinan. And the second over in Star Emirates innings is now going to begin. First ball. Lost it. This time I think it's got the distance. No, this time just wait for the umpire signal. And this time just we have to wait for the umpire signal. He's in some confusion, I think so. And this time he indicated a 6. Hit that one pretty hard, just straighter. And because of that, he's got the big one. So 6 runs and a fantastic struck. It came from the bat of Sinan, and with that 6 runs, the scoreboard moving up to 13 now without loss at the start of the second over, in fact. And straight away, the bowler is now under pressure after conceding a 6 in his very first delivery. And let's see what he will do in the next delivery of him. So, Naufal, once again, here he comes, bowling to Sinan. And now once again here he comes right around the wicket ball. So there's two squarer, and this time he's get only a single for that stroke. Hit that one, he pulled that one pretty hard, but this time he pulled that one 2 squarer, and because of that he's got only a single for that stroke, and with that single run the scoreboard moving up to 14 without loss in the over number 2nd in progress. This is the match number 6 of this prestigious cricket tournament. MULARAPATNA Premier League Season 4 2024 is now progressing here. Under this evening, it's already 20 past 5 in the evening. The sunshine getting so much dimmer at the situation, and shadows of trees just arriving to the pitch. The light getting dimmer and dimmer as the time progresses. This time just wanted reverse shot, not succeeded. The ball stuck to his leg, and before it was collected, short square leg, the batsman crossed over for the easy single in the face of leg by, and with that single leg by run, the scoreboard moving up to 15 without loss in the over number 2nd in progress. Sinan and Mansoor are now looking very confidently, especially for Sinan, who hit a 6 couple of deliveries back down to the backward square leg of the bowling of Naufal. He is looking more confident now. This time driven that one down to long on, in fact chase for the fielder. It might be cut off just inside the fence, and they come back for the second, and this time he get it comfortably. And now a couple of runs added to the total. So the throw came a little bit of a slower at the last moment, and because of that the batsman completed a second run very safely in the end, and with a couple runs the scoreboard moving up to 17 without loss in the over number 2nd in progress. This is a really good going on here for the openers for Star Emirates, and once again Naufal, here he comes. Right arm around the wicket bounce. This time driven that one, not quite get that one from the middle of the bat, but he got a single for that stroke, and at last they got the single, and with that single run the scoreboard moving up to 18 without loss in the over number 2nd in progress. 11 runs already scored in this over so far from Naufal, and this is turning out to be a fantastic over in Star Emirates side is now progressing here. Still 1 ball left in this over, and Naufal once again comes, this time bowling once again to Sinan, right arm around the wicket. Here he bowls. Just blocked the shot at the last minute. At once he's just trying to play that one with a reverse shot, but at the last minute saw that the ball missing just outside the leg stump. He just blocked the shot at the last minute, played that one strangely down to one side at the short mid wicket, and crossed over for the quick single at the last moment. Single run came from the last ball of this over, and 19 without loss, and a fantastic over in Star Emirates point of view came to an end, and its 12 runs came from this over, and after completion of 2 they are looking in a commanding situation. It's 19 without loss after 2 overs. Still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in the innings. That means 24 balls left, and let's see how many runs the batsmen of Star Emirates will make in this remaining 24 deliveries. And the bowler starting a fresh over from that side and is Izuddin, the bowler is now brought into the attack, starting a fresh over from the side end, and the batsman Sinan, who is batting very confidently, batting on 10, is now going to face the bowler Izuddin. And after completion of 2 overs, fielding restrictions has been taken off. Fielders are now spread out on the field, and the first ball after power play is now coming up.
Right arm round the wicket. First ball bowling to Sinan. This time good one. Just trying to play the reverse shot at the last moment. Not succeeded. The ball kept low at the last moment and not so missing too far outside the off stump and collected by wicketkeeper behind the stumps. There is no possibility of any run. So good start. And the bowling for Izzuddin. And now once again here the balls too far outside the off stump. Wide. And with that wide run the scoreboard moving up to 20 without loss. And as far as the bowlers of CR7 is concerned, at the situation they badly required to break this opening partnership at the situation because this partnership is now slowly and steadily building up for Star Emirates. This time once again ball 2 for Saudi off stump and wide declared by umpire. Consecutive wides for the bowler. And with that wide run the scoreboard moving up to 21 now without loss at the start of the third over. In fact just one right delivery bowled in this over. And once again Izzuddin. This time bowling right arm to the right-handed batsman. Here he comes. Right arm round the wicket. This time wide again. Hat-trick wide. 3 wides in a row. And this is turning out to be one more good over in Star Emirates point of view. Just one right delivery bowled in this over. And after that 3 consecutive wides bowled by the bowler after being bowling one right delivery in this over. So with that right run the scoreboard moving up to 22 now without loss in the over number 3 in progress for Star Emirates. Izzuddin, here he comes. Right arm round the wicket bounce. Reverse shot, just trying to play the reverse shot, not succeeded, not quite get that one from the middle of the bat. In fact, the ball stuck to his leg and because of that the batsman crossed over for the single in the face of leg by and with that single run the scoreboard moving up to 23 without loss in the over number 3 in progress. And slowly and steadily this partnership is now building up between Sinan and Mansoor and Star Emirates are now heading towards to a good total at the situation. Izzuddin this time just wanted turns it away on the onside. The ball after being got is out of the bat running down to it's off the leg in fact. No contact between the bat and ball and the batsman crossed over for the single in the face of leg by declared by umpire and with that leg by run the scoreboard moving up to 24 without loss in the over number 3 in progress. Izzuddin 4th time in this over. Here he comes bowling to Sinan this time. Right arm around the wicket. This time swings and that ball changed its direction after pitching and they come back for the second run and get it comfortably at last. He pulled that one firmly but at the last moment the ball just changed the direction after hitting the upper area of the ground and because before it was collected by the deep mid wicket fielder. The batsmen have got plenty of time to come back for the second run. It's 26 without loss. 26 without loss and Izzuddin is now bowling the next delivery. Right arm round the wicket. This time just wanted to play reverse shot. Quick piece of work made by wicketkeeper behind the stumps but before that the batsman kept his bat onto his case at the last moment and because of that he survived. Still a ball left in this over. And the scoreboard stays at 26 without loss in the over number 3 in progress. A fantastic progressing year for Star Emirates. And both openers are now playing very confidently. Last time in this over, Izzuddin comes. Right arm round the wicket to the bowling. Right arm round the wicket to the batter Sinan. This time extra cricket, just missing outside the offside, just played for a square try at the last moment, missing by the line and good delivery in the over. 3 gone, 26 on the board and this is a really good progressing year for Star Emirates. So still in overall calculation it's going to be 7 runs came from this over and after 3 overs they are still looking right on top. It's 26 for run after 3 overs. ಎಲ್ಲ ರಾತಾಗ ಪಟಾಂದಮೆ bowler no full. So 3 overs completed, 26 on the board, 3 to go in the innings and the bowler Naufal starts a fresh proceedings from that side end
and the batsman is Mansoor is now going to face the first delivery of the second over of Naufal, and the fourth over starts in the innings. चौथा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता है और नौफल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और मंसूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 18 गेंद कुल मिलाकर उनकी पारी में बाकी। अगली गेंद इस बॉल आउट, लेग स्टंप पर जाकर गेंद टकराते हुए इस वक्त रिवर्स शॉट खेलना चाहता, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद इस वक्त टिप्पा खाने के बाद कुछ उछाल लेते हुए उनके बल्ले को वंचित करते हुए लेग स्टंप पर जा टकराए तो एट लास्ट दे लूज देयर फर्स्ट विकेट इन द फेस ऑफ मंसूर और आखिरकार अपना पहला विकेट इस वक्त स्टार एमिरेट्स को चुका मंसूर के रूप में और 3.1 ओवर के बाद 26 रनों की आरंभिक साझेदारी के बाद ये साझेदारी यहाँ पर टूट चुकी है मंसूर के रूप में, जो कि एक बेहतर सपोर्टिंग का किरदार निभाने के बाद पवेलियन वापस लौटते हुए और 26 रनों पर पहला विकेट यहां पर खो चुका स्टार एमिरेट्स, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, स्टार एमिरेट्स के लिए इस मैच में विजय दर्ज करना बेहद जरूरी बन चुका क्योंकि पहले मैच में उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा था और जहां तक CR7 का सवाल है तो इस मैच में अगर विजय दर्ज करते हैं वो तो उनकी ये लगातार दूसरी जीत होगी। पहले मैच में उन्होंने विजय दर्ज किया था तो इस मैच में भी अगर विजय वो दर्ज करते हैं तो प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना है उनकी उज्जवल हो जाएंगे। तो यहां पर कड़ा मुकाबला जारी है इस मैच में विजय दर्ज करने के लिए स्टार एमिरेट्स और CR7 के खिलाड़ियों के बीच में। साबित इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार गेंदबाज नौफल की गेंदों का, तो नौफल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड विकेट, ये गेंद ड्राइव करना चाहा शॉर्ट मैन पर गेंद रन आउट का खतरा लेकिन नहीं, थोड़ा सा वाइड है और जब तक गेंद को फील्ड करने में असफल रहे तो विकेट कीपर और आखिरकार बल्लेबाज 1 रन दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। जोखिम भरा रन लेकिन यशस्वीतम यहाँ पर बल्लेबाज पूर्ण करते हुए 27 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और नौफल फिर से एक बार अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और सामना करने के लिए तैयार सिनम, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देते हुए कुल मिलाकर 14 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए एक छक्के की मदद से ही इज बैटिंग ऑन 14 इंक्लूडिंग 1 6 एंड जस्ट प्लेइंग फैंटास्टिक नॉक फॉर द साइड। और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार नौफल की गेंदों का, तो नौफल फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए इस वक्त और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद सिनान के लिए ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को मोड़ा, इस वक्त गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्कोर लेकर दिशा में बल्लेबाज को मिलेगा, थ्रो पहुंचा स्ट्राइकर एंड पर लेकिन थ्रो पे इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सिनान से तेज स्टंप्स पर तक पहुंच सके और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन आसानी के साथ पूर्ण करने का, उनमें 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग हियर फॉर स्टार एमिरेट्स और सिनन फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार नौफल की गेंदों का। नौफल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड विकेट ये गेंद इस बार पुल किया लेकिन 2 स्कोर एंड नॉट मोर देन अ सिंगल, सिर्फ एक मात्र रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 30 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और नौफल एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए मैदान पर रोशनी जो कि काफी हद तक कम हो चुकी है, धूप लगभग मैदान से बिल्कुल कहना पड़ेगा गायब हो चुकी है इस वक्त और सूरज धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर इस वक्त तय कर चुका है और उसे ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहाँ पर कम होती हुई शाम के लगभग 5:35 यहाँ पर बच चुके हैं और धीरे धीरे मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ आज का अंतिम मैच इस श्रृंखला का यहाँ पर खेला जाता हुआ ये गेंद सिनान के लिए रिवर्स शॉट खेलना चाहा लेकिन टॉपेज पर गेंद टकराई और गेंद पहुंची थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 31 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, इट्स 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, साबित लास्ट बॉल साबित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज इस बीच नौफल अपनी ओर की अगली गेंद दाहिने हाथ राउंड विकेट पर ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइनल की दिशा में 1 रन फिर से मिलेगा बल्लेबाज को और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 32 रनों पर, 32 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 overs completed, 6 runs came from this over, pretty good one in CR7's point of view came from Naufal, just he conceded 6 runs in this over and after 4 overs still
they lost their one wicket in the first over, except that in this over in fact, except that they are looking in a good situation. They managed to score 32 runs on the board after completion of 4 overs for losing just a single wicket with 2 to go in their innings. बॉलर साजिद brought into the attack और साजिद इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार साबित। तो जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, इस वक्त कम से कम 50 के आंकड़े तक पहुंचना होगा स्टार एमिरेट्स के बल्लेबाजों को। अगर उन्हें CR7 के सशक्त बल्लेबाजी के लाइनअप पर अगर दबाव डालना है गेंदबाजी के जरिए, जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे, इस बार गेंद लक्ष्य से बाहर की ओर फेंकी थी, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। और साजिद अपने जूते के फीते को बांधने के बाद एक बार फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार है। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहता, बेहतर गेंद थी और आखिरकार गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर इस वक्त रुक चुका है 33 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर अब पानी का है पर प्रगति पर। और साजिद फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ पर विकेट तक गेंदबाजी करते हुए साबित के लिए ये गेंद इस बार बॉल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर ड्राइव एंड लॉस्ट हिज मिडलैंड ऑफ स्टंप. Much straighter delivery from Sajid and he just got the rate of the batsman. Second wicket lost, Sabit departs. Now Star Emirates are 33 for 2. So what a fantastic cricket tournament is now progressing here in this beautiful MULARAPATNA ground in the name of MULARAPATNA Premier League Season 4 2024, with proudly presented by MULARAPATNA Friends. And this tournament is now progressing along nicely in this beautiful evening. The day number 1 of this prestigious cricket tournament is now progressing here. The new batsman Mustafa is now comes out to the middle facing the bowler. इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद को खेलना चाहा मुस्तफा, दौड़े थोड़ी देर से, कोई बैकअप वहां पर नहीं और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर यहां पर पूर्ण कर चुके हैं लेग बाय के रूप में। और लेग बाय के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। और साजिद एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। सिनन इस वक्त सामना करते हुए, जहां तक सिनन का सवाल है, इस वक्त वो कुल मिलाकर 18 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हैं। सिनन इज नाउ बैटिंग ऑन 18 विद 1-6, एक छक्का अब तक वो छड़ चुके हैं। और इस बीच साजिद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। ये गेंद सिनन के लिए ऑन साइड पर गेंद को उछाला इस वक्त 2 स्कोर रन, और इस बीच 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। 1 डिक्लेयर्ड इस वक्त हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 35 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। बेहतर ओवर अब तक साजिद का साबित हो चुका, बल्लेबाज को बंद कर रखने में काफी हद तक यश अब तक वो प्राप्त कर चुके हैं और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिनन सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार स्टीयर किया खूबसूरती के साथ, जस्ट ओपनिंग द पेस ऑफ द बेड, लेकिन गेंद वहां पर नारियल के वृक्ष पर टकराने के बाद वहां पर अपनी दिशा को बदल चुके। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज इस बीच दौड़कर पूर्ण कर चुके। इससे पहले की गेंद को फील्डर अपनी दाईं ओर जाकर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, नॉट स्ट्राइक करें, पर कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 37 रनों पर। इट्स 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और साजिद इस ओवर में अंतिम बार 20 रनों की व्यक्तिगत स्कोर पर सिनन ने इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए और स्कोर इस वक्त साजिद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद सिनन के लिए ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा, फील्डर काफी पीछे, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, सिनन सबसे पहले पहुंचे और थ्रो बाद में पहुंचा, तो इस वजह से बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन आसानी के साथ पूर्ण करने का। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है स्कोर है इस वक्त 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 gone 39 on the board, exactly 7.80. The present run rate is now progressing here for Star Emirates with just a last over to go in their innings.
So what a fantastic knock coming from in fact it's a Sinan. 22 runs he is batting out, playing a sheet anchor role for the side at the situation because of his help. Star Emirates heading towards to their good total. And still in overall calculation it's going to be last over remaining the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी है और देखते हैं वो अंतिम ओवर कौन सा गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हैं. नंबर 77 जर्सी सिराज where by Siraj, the bowler is now brought into the attack. तो सिनन इस वक्त नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद और उनके भाई छोटे भाई बड़े भाई कहना पड़ेगा इस वक्त सिराज गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए जबकि सामना करने के लिए तैयार इस वक्त मुस्तफा और अंतिम ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और ओवर की पारी खेलने का इस वक्त सिराज गेंदबाजी शुरू करते हुए दाहिने हाथ पर विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुस्तफा के लिए तैयार. राउंड द विकेट कहना पड़ेगा और सबसे काफी बाहर की ओर निकलते हुए कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे जरूर निकले थे लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर है गेंद को छोड़ दिया विकेट कीपर ठीक तरह से गेंद को गैदर नहीं कर पाया. 2 रनों का इजाफा वाइड के रूप में और इन 2 वाइड रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर 41 रनों पर है. और इस बीच गेंदबाज तैयार ये गेंद उछालना चाहा गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है कवर पॉइंट पर. 1 रन यहाँ पर मिलेगा दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी वाइड रहा और विकेट कीपर काफी हताश मनोभावना के साथ उन्होंने गेंद को फेंक दिया. थ्रो को रिसीव करने के बाद 2 रन यहाँ पर पूर्ण हो चुके हैं. 43 नाउ 41 जीतले रडला 42 43 ಇಂದು ಏತಾಪುನ 2 ರನ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ ಓಕೆ ಅದೇ ಇದು 43 ಅಂದತೆ 43 और रटर सर गिरता रिकॉर्ड लेते नंचे ಅವರ तो इस बीच ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता और गेंद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका था. इस बीच 1 रन प्राप्त करने का 1 रन के साथ स्कोर अब 44 रनों पर पहुंच चुका है. 44 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर लास्ट इन प्रोग्रेस. और सिराज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बल्लेबाज को आगे निकलते हुए देख लिया था और ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी सिर्फ बाई का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 45 रन पर 45 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. सिनन अपने बड़े भाई सीरज की गेंदों को इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है और सीरज अपने छोटे भाई सिनन के लिए इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद ये गेंद दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी में निकली थी ऑफ स्टंप से काफी बाहर की और गेंद निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 46 रनों पर. रन आर स्टिल कमिंग नाइसली नाउ इजीली नाउ फॉर द बैट्समैन ऑफ स्टार एमिरेट्स. और इस बीच एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए सीरज जब दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले जरूर लेकिन गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाया. फॉलो थ्रू में जब तक आगे की ओर आकर गेंदबाज सीरज खुद गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का लेग बाई के रूप में और लेग बाई 30 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 47 रनों पर 47 नाउ. स्टिल इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी जस्ट 2 balls रिमेनिंग इन द इनिंग्स. सिर्फ 2 गेंदें बाकी. ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर है और वाइड का इशारा और वाइड का रन यहाँ पर उनके खाते में टूट चुका है. ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद को फेंकी थी बल्लेबाज को आगे निकलते हुए देखते हुए तो स्कोर 48 now the score for the loss of 2 wicket. 2 balls still left और गेंदबाज इस बीच सिराज अपनी अगली गेंद ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद और सिर्फ बाई का इशारा. बेहतरीन गेंदबाजी इंटेलिजेंट बॉलिंग बहुत ही चतुरता के साथ गेंदबाजी की. बल्लेबाज को पहले आगे निकलते हुए देख लिया था भांप लिया था आगे निकलते हुए भांप लिया था और गेंद को कुछ हद तक उनके पहुंच से बाहर ऑफ स्टंप से बाहर की ओर फेंकी कुछ ज्यादा बाहर में 1 रन का इजाफा सिर्फ बाई के रूप में. बेहतर गेंदबाजी 49 अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज सीरज तैयार स्टार एमिरेट्स की पारी का. So the last ball of the innings is now coming up. सीरज सिनन के लिए और बड़े भाई छोटे भाई के लिए अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार. ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ लंबोर सीमा रेखा से गेंद बाहर हो चुकी है 6 रनों के लिए
finished the innings in a style with a 6. And a fantastic finish for Star Emirate. They finished with 55 for the loss of 2 wickets after the completion of 6 overs, and they set a huge target of 56 in for CR7 for victory in 6 overs. And a fantastic batting performance came from Sinan. He hit 2 sixes, and one of them he hit a last ball of their innings down to a long on, and it went over the fence for many a miles. He remained unbeaten on 30. He is not out on 30, and because of this fantastic knock of unbeaten 30 runs, including 2 massive sixes, Star Emirates finished well with 55 for the loss of 2 wickets. 56th target for CR7, and as far as the required run rate is concerned, exactly 9.33 runs per over they have to score for victory. The required run rate for them with the help of 10 wickets, the present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. 56th target in 6 overs with the help of 10 wickets they have to score, and their inning starts within just short while. उनके पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे खुद मेरे साथ गोपी के साथ जब यहाँ पर CR7 की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ. ಸಮಯ 5:50 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರು ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ.
So welcome back once again to the last session of this prestigious cricket tournament of the Day-01 MULARAPATNA Premier League Season for 2024, which proudly presented by MULARAPATNA Friends. And the 56th target for CR7 for victory, and as far the required run rate is concerned, 9.33 runs per they have to score for victory with help of 10 wickets. The present equation shows for them, and their innings now going to start. So Sajid and Imtiaz the openers, meantime the bowler is Sabit, who will start the fresh proceedings from this side, and the first ball of the innings is now coming up. Imtiaz is now, the left-handed batter is now going to face, and the first power play of their 2 overs power play is now going to start. Just two fielders allowed to stood outside the 20-yard circle in power play in the first 2 overs as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. And now two fielders stood, one at long on and one at deep mid wicket. In fact, Sabit, after making some fielding adjustments, here the first ball of the match is now coming up right arm around the wicket board. So Imtiaz lost at that point. This could be a chance. Just here, wait and see, and it taken inside the fence. First ball, golden duck dismissal for Imtiaz. This time he hit that one pretty hard, but the placement was too wrong, and Wadi's long on fielder Naushad took a well-judged catch, just running towards the right side at the last moment. He took eyes on that ball and grabbed that one successfully with both hands, and with that good catch, the first wicket followed in the very first delivery of their innings in the face of Imtiaz for golden duck in fact. And now CR7 loses their first wicket. It's not for one in the first over. Naufal, after the departure of Imtiaz, the number 3 batsman is now consulted to the middle. And now he is going to face Sabit. And now once again Sabit bowling next delivery to the new man Naufal. Here he bowls stuck to the pad, ball running down to a short third man. In fact, the batsman gone through for a single, and that single, the runs are got open for CR7 now. It's 1 for the loss of 1 wicket. And now the man, the backbone of CR7 is now back on strike. He's on strike in fact. Sajid, who played a brilliant knockout for 33 runs in the previous match. His presence is more important at this situation for CR7 if they have to reach the target, a huge target of 56 runs at this situation. Now he is now going to face the bowler Sabit to Sajid, and here he comes. Right arm round the wicket bowls. This time just gone for a loft, not succeeded, not quite get that one right from the middle of the bat at the last moment. Ball running down to a square leg area, and before fielder collected the ball, the batsman crossed over for the single, and with a single run the scoreboard moving up to 2 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. And as far as the victory of CR7 is concerned, they desperately have to make a strong start if they have to reach the target of 56 in 6 overs. They lost their first wicket in the very first delivery of the innings in the face of Imtiaz, caught by a long on fielder of the bowling of Sabit. Next one, driven that one perfectly by Naufal down to a long on, collected cleanly by the fielder, but won't prevent the single, and with a single run the scoreboard moving up to 3 now for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. The light getting dimmer and dimmer as the time progresses. It's already 55 past 5 in the evening, and sun is now slowly heading towards to a sea. And now the last match of the day 1 of this prestigious tournament is now progressing here. This time 2 squarer, just a single. Hit that one pretty hard, but it went 2 squarer, and because of that the batsman got only a single for that stroke, and with that single run the scoreboard moving up to 4 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. So Sajid, unfortunately, he hit that one pretty hard, but unfortunately for him he got only a single for that stroke because he hit that one 2 squarer. And Sabit, here he comes, just making some fielding adjustment. The point fielder brought a little bit of a straighter for the right-handed batsman. This time, driven that back into the gap as well. He finds the gap as well, and he's crossed over the fence for the boundary. Fantastic struck came from the bat of Sajid. He just picked the gap between long off and long on into the straight hit area, and hit that one pretty hard and finds the gap, and because of that, he's got a boundary for that stroke. And
That boundary brings some oxygen into the innings of CR7 now, which hit by Sajid, and with that boundary the scoreboard moving up to 8 for the loss of 1 wicket after completion of first over. Let's straight away coming back to the equation. 56 Molina side, that means 48 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs with a required run rate of exactly 9.60 runs per over. Still they got all 9 wickets kept intact. So we are just watching a fantastic live coverage from King Sports on YouTube here, and a fantastic live telecast channel, not in India but in abroad. In many countries this live telecast watching by thousands of cricket fans, and that shows the popularity of underarm cricket in South Canada. And now the bowler Sinan is now brought into the attack. First ball of his fresh over is now coming up, and he'll be bowling to right-handed batsman Naufal. Very driven that one. Ran to mid on, can't got any run for that stroke. Second power play over begun just short while ago. And the scoreboard stays at 8 for the loss of 1 wicket at the start of the second over in fact. And once again Sinan ready to bowl to the next delivery to the right-handed batsman Naufal. 7 fielders to inside the 20-yard circle under power play. This time good one, quick piece of work, but the batsman got his back foot onto squeeze at the last moment, and because of that he survived. The scoreboard stays at 8 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. The equal battle is now continuing here, and the batsman Naufal is now going towards to the player's dugout to change his bat. And the match is now stopped for a while. So this is an absolutely fantastic cricket tournament is now progressing here in the name of MULARAPATNA Premier League Season 4 2024, which proudly presented by MULARAPATNA Friends. And the day number 1 of this prestigious cricket tournament is now progressing here. Tomorrow there will be a Legends match will be played on this ground. And we are expecting some more crowds on tomorrow. And on the Monday, once again the main league matches will be played. Tomorrow a couple of matches of league stage will be played. After that in the evening Legends match, 3 or 4 matches of Legends players will going to play 3 matches in fact of the Legend players will going to play. 3 teams will participate, 3 Legends teams will participating in this match, in this tournament in fact. This time 2 for Osadi of stump, and the white declared by umpire, and with that white run the scoreboard moving up to 9 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Still the batsmen of CR7 are now just trying to fight back. Lost it this time into the gap as well. One bounce, it might be cut off just inside defence, and the batsmen come back for the second. In fact they completed a second run very safely. Not quite get that one right from the middle of the bat at the last moment, but luckily for the batsman, it fell just short of a fielder at wide is long off, and because of that he's got a couple of runs for that stroke, and with that couple of runs the scoreboard moving up to 14 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. So still the battle is now on, and Sinan is now going to face going to bowl the next delivery to the right-handed batsman Naufal. 14. In fact, so, I beg your pardon, it's 11 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. 11 for the loss of 1 wicket. This time, lost it into the gap. In fact, once again he gets at least couple for that. Just we have wait to see. They're looking for the second. No, they won't get the couple run. Good piece of work made by the wide long on fielder. And the batsmen are finally satisfied with a single. And with that single run, the scoreboard moving up to 12 for the loss of 1 wicket now in the over number second in progress. So just 3 runs conceded by the bowler Sinan in this over, and this is turning out to be a good over in Star Emirates point of view. Still a ball left in this over, and for the last time in this over Sinan comes bowling to Sajid. He's got a problem on his run up. Once again he is backing to his bowling mark. In fact 2 balls remaining, last 2 balls, and Sinan comes. Lost it this side, this could be a chance. No, he won't get that one. It might be cut off just inside defence, and they come back for the second round. This could be trouble, and this time is gone. He lost his wicket. Naufal the man dismissed after completing a single. They come back for the unnecessary second run, and because of that Naufal paid the penalty for that. Straight throw came from the long on fielder into the hands of bowler, and after receiving the throw
The bowler flicking the wickets very quickly, and Naufal now backing to pavilion. Second wicket gone. CR7 are now looking in trouble. It's 13 for the loss of 2 wickets. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾವನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೊತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿಯಾಬ್ ಮುಲರಪಟ್ನ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. धन्यवाद जनाब शाकिर भाई. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो सिरन इस वक्त ये गेंद इस बार गेंद के ड्राइव, स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन vain, and a life for the batsman Siraj in his very first delivery. This time he hit that one straight into the hands of mid wicket fielder, but he dropped that one at the last moment. Sajid, in fact, Sajid, the batsman survived, and a vital wicket lost for the fielding side. So this is an absolutely big blow and a big boost now for CR7, because Sajid survived in the previous delivery. His wicket remained and 2 overs completed, and after 2 overs 13 for the loss of 2 wicket, and the equal battle is now on. तो पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर साजिद का जो कैच है छूटा है, वो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा CR7 के लिए बिग बूस्ट यहाँ पर साबित हो चुका है, और स्टार एमिरेट्स के लिए ड्रॉबैक यहाँ पर साबित हो सकता है आने वाले ओवर्स में. So 2 overs, 13 on the board, 56 the target, for 56 minus 13, that means 43 more runs now they have to score for victory in the remaining 4 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 10.75 runs per over. So lights getting so dimmer, and because of that I request both teams players to please make it fast. Please continue the match immediately. The bowler brought into the attack is Sabit. He bowled very well in his first over, and now he is starting his second over. And the striker is Siraj. Still some fielding adjustments is going on there. And still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining, the innings. 13 the score. First ball of his fresh over is now coming up. Afraz UAE and Shahnawaz KSA, Shahnawaz KSA and Ashraf UAE declared 100 rupees cash prize for Sabit for every wicket at this situation, and there will be a chance for Sabit to getting 100 rupees for every wicket, this time off the back foot, just punching it away through the offside, square off the wicket, and this time I think it's a no ball called by umpire, and a couple of runs are added to the total, and with that couple run the scoreboard moving up to 15 now for the loss of 2 wickets, and a free hit delivery for the batsman. ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So still in the calculation it's going to be 24 balls remaining, and the run required is 41. Sabit this time bowling to right-handed batsman Sajid. The meantime Sajid discussing something with square leg umpire. And once again he is backing to his batting mark. So 24 balls left, and 41 runs required. Free hit delivery for the batsman Sajid now. Sabit comes. This time 2 for Sajid off stump wide. Single run added. 16 for the loss of 2 wicket. Still the free hit is now remained
for Sajid. And now once again Sabit. Here he bowls right arm round the wicket to the right-handed batsman. Next one. This time gone for a mighty heave, not succeeded. Good one from the bowler. Gets some extra bounce at the last moment. Defeated the batsman and went into the hands of wicketkeeper. The scoreboard stays at 16 for the loss of 2 wickets. And the dot ball bowled. 23 balls left. 40 runs exactly required. The required run rate is now creeping up. At the situation for CR7, Sabit. Once again here he comes, right arm round the wicket ball. So this time steering it away. Delicately played, intelligently played, strangely played, down to a square leg. In fact, he's got a single for that stroke and with a single run, the scoreboard moving up to 17 now, and Sajid off the strike at this situation. The striker is now Siraj. And Sabit once again comes third time in this over. Still they have a long way to go for CR7 at this situation. 39 more runs now they have to score for victory in remaining 22 deliveries. Sabit bowls. Next one. Just wanted to work it away on the onside. Not succeeded. Dot delivery. Not too missing 2 for Osad. The leg stump at the last moment. And collected by the short fine leg fielder, and there is no possibility of any run. So the scoreboard stays at 17 for the loss of 2 wickets. Again Sabit comes. Right arm round the wicket here he bowls. This time, driven that one. Good one. Absolutely good one. Consecutive dot deliveries. And Sajid is not unhappy with the striker at the situation. He's saying something that just try to rotate the strike. Give the strike to me at this situation. And 2 consecutive dot balls are faced by Siraj. Straight away, the pressure on the batsman now. Once again, this time misses. Wicketkeeper misses. And with that... miss, the batsman got a single in the face of bye. Fantastic piece of bowling performance continuing here from Sabit at this situation. 18 for the loss of 2 wickets, and now Sajid back on strike. So 19 balls left and 38 more runs required. The asking run rate is now creeping up for them. They badly required a couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. Sajid is now going to face Sabit, and let's see what he's doing in this delivery. Off the toe, flick that one down to a deep mid wicket. In fact, the fielder after the completed one, in fact, they're looking for the second but won't get it, and Sajid keeps the strike. 3 overs completed, 19 on the board, 2 wickets down. Still the batsmen of CR7 now sitting for the right track. So 37 needed, 3 overs remaining. That means 18 balls remaining, 18 balls left. And the required run rate is now gone up exactly 12.33 runs per over at this situation. And still they got 8 wickets kept intact. With 3 to go, 3 overs to go in the innings. So 37 to get from 18 deliveries, and here is one more announcement. If any bowler will take one wicket, he'll be rewarded 1,000 cash prize from Afraz Dubai and Shahnawaz Saudi Arabia. Announced 1,000 rupees cash prize for every wicket for the bowlers of Star Emirates. And now the announcement came from well-wishers of Star Emirates. 1,000 rupees for every wicket for the bowlers of Star Emirates. And the 4th over starts in the innings. Samshuddin, the bowler, is now starts a fresh proceedings. 4th over starts in the innings. 4th over प्रारंभ होता है और गेंदबाज शमशुद्दीन इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए पहली गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा 1+1 2 runs now added to the total और 2 वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 21 रनों पर. It's 21 for the loss of 2 wickets at the start of the 4th over. 18 balls left and 35 more runs required. Still they have a long way to go. अभी भी एक लंबा सफर तय करना बाकी यहाँ पर उनके लिए. साजिद ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं और रसीद जिस वक्त सामना करने के लिए तैयार है. गेंदबाज शमशुद्दीन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार है. दाहिने हाथ उभरता विकेट तक गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सीरज के लिए बाएं हाथ राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं. ड्राइव किया बैक टू द बॉल के लिए साजिद के लिए खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन ऐन मौके पर जो थ्रो फेंका गया था वो थ्रो ऑफ स्टंप से कुछ दूरी पर निकलता हुआ और बल्लेबाज साजिद इस गेंद पर बाल बचते हुए
अगर निशाना टकरा था तो शायद साजिद के लिए समस्याएं पैदा हो सकती थी वहां पर, लेकिन यहाँ पर साजिद का विकेट बचा और राहत भरी सांस लेते हुए इस वक्त CR7 के कप्तान तो 1 रन का इजाफा, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद लेकर तैयार साजिद के लिए, इलेक्शन से बाहर रहा, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, वाइड का इशारा। और जैसे साजिद ने रिवर्स शॉट खेलने के लिए बल्ला उठाया था, इसे देखते हुए इलेक्शन से काफी बाहर की और गेंदबाज ने गेंदबाजी फेंकी थी और आखिरकार वाइड घोषित करते हुए अंपायर 1 रन का इजाफा, 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर नहीं, वाइड का इशारा, उस से काफी बाहर रहा और एक और वाइड रन उनके खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। रन इस वक्त चाहिए बल्लेबाजों को CR7 के, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए इस वक्त जरूरी नहीं है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज रन बनाने की हर तरीके की कोशिश यहाँ पर करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके साजिद और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन तो साजिद इस वक्त सामना करते हैं, साजिद के लिए हर छक्के के 1000 रुपए का नगद पुरस्कार इस वक्त घोषित किए गए तहसील दुबई ने और जैसे ही मैंने कहा यहाँ पर साजिद ने छक्का लगा दिया और सीधे इस वक्त कुछ देर बाद 1000 रुपए उनके जेब में गिरेंगे। तो साजिद शायद 6th सेंस उनमें है, जैसे ही मैंने फरमाने के लिए मैंने अल्फाज यहाँ पर खोले, साजिद ने छक्का लगा दिया तो शायद पहले ही वो भाग के कहते कि 1000 रुपए उनका इंतजार कर रहा है यहाँ पर, तो छक्का इस वक्त साजिद के पक्ष में लगता हुआ और इस छक्के के साथ वो इस वक्त CR7 के उम्मीदों को बरकरार रख चुके हैं। 30 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है और 26 रन और चाहिए विजय के लिए और कुल मिलाकर गेंदे इस वक्त बाकी है 15 और गेंदबाज ये गेंद साजिद के लिए, इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है शॉट मिड विकेट पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर, 31 1 रन लेग बाय। तहसील दुबई के दौरे जो 1000 रुपए घोषित किया गया है वो साजिद को प्राप्त होंगे कुछ देर बाद छक्के के लिए और यहाँ पर और भी मौका है उनके, कोई भी बल्ले साजिद को कहना पड़ेगा और भी मौका है, अगर वो छक्का लगाते तो हर छक्के के ऊपर 1000 रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। गेंद ड्राइव करके मिडल पर उनके लिए दौड़ पड़े, इस बार काफी धीमा थ्रो, गेंद उनके हाथों से फिसल गई अंतिम क्षण में। आखिरकार जब तक गेंद धीरे धीरे टिप्पा खाकर गेंदबाज के पास पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। तो सबसे अहम बात यह है कि साजिद इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, तो 1 गेंद बाकी, 13 गेंदें बाकी, 13 बॉल्स लेफ्ट एंड 24 रन रिक्वायर्ड, स्टिल द मैच इज नाउ लाइव। और जब तक साजिद क्रीज पर बरकरार रहेंगे CR7 के उम्मीदें यहां पर बरकरार रहेंगे और जहां तक सवाल है स्टार एमिरेट्स के विजय का, तो इस वक्त उन्हें साजिद का विकेट उखाड़ना बेहद जरूरी यहां पर बन चुका है। तो इस बीच शमशुद्दीन काफी लंबा और उनका यहाँ पर प्रगति पर रहा, ये गेंद साजिद के लिए बैकफुट पर गए, कट किया, कोई फील्ड ओवर पर विकेट कीपर गेंद तक पहुंचते हुए, गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद जब तक वहां पर रुके, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर, स्ट्राइक साजिद के पास और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति हो चुकी है। 4 गॉन and after 4 overs it's 33 for the loss of 2 wicket, 23 required in remaining 12 balls, required run rate exactly 11.5 runs per over. तो लगभग मैदान पर अंधेरा सा इस वक्त छाता हुआ, शाम के 6:15 यहाँ पर बच चुके हैं, धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर छठा और अंतिम मैच इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट मुल्लर पटना प्रीमियर लीग 2024 सीजन 4, जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया मुल्लर पटना फ्रेंड्स ने और इस श्रृंखला के पहले दिन का अंतिम 2 ओवर का खेल यहाँ पर बचा हुआ। इस श्रृंखला के विजेता को 60,000 रुपए नगद पुरस्कार और NFC ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा, जबकि द्वितीय स्थानी यानी रनर्स अप को दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 40,000 रुपए का नगद पुरस्कार और NFC ट्रॉफी 2024 से प्रदान किया जाएगा।
पहले स्थानी को 60,000 रुपए और एमएफसी ट्रॉफी, जबकि द्वितीय स्थानी को 40,000 रुपए और एमएफसी ट्रॉफी प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। सोमवार को इस श्रृंखला का अंतिम दिन है। ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, पहली गेंद तक खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग पर गेंद पहुंची और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 34 रन पर, 34 नाउ, और साजिद ऑफ द स्ट्राइक यहाँ पर हो चुके हैं। अब 22 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदे बाकी हैं 11। सिराज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा, निस्संदेह सीरज के दिमाग में कश्मकश इस वक्त चल रही है कि किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाई जाए, क्या सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया जाए या फिर आक्रामक स्ट्रोक खेला जाए। ये गेंद इस वक्त गेंद को खेलना था, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन मैं समझता हूं बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर रख चुके हैं। Absolutely brilliant piece of work made by wicketkeeper behind the stumps, लेकिन अंतिम अक्षर में जैसे ही वो घूमकर फिसलते हुए विकेट अटका है, बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था, बैट क्रीज पर लैंड हो चुका था और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। लेकिन एक गेंद व्यर्थ यहाँ पर जा चुका है, एक डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुका है, स्कोर बुक में जुड़ चुका है। 10 गेंदें बाकी, 22 रन चाहिए। 22 नीडेड इन रिमेनिंग 10 बॉल्स और गेंदबाज सिनन जो कि अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन उन्होंने फेंका था, अपना दूसरा ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार अपने अगली गेंद फेंकने के लिए। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद सीरज सामना करते हुए दाहिने हाथ ओवर पर विकेट। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती है, गेंद पहुंची शॉर्ट टर्न मैन पर, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रन पर विकेट के नुकसान पर। वाइड का इशारा इस बीच, 1+1 इनफैक्ट कुछ देरी से लेकिन सही तरीके से इस वक्त वाइड घोषित किया। 1+1 2 रन, इनफैक्ट इट्स 36 एंड द बॉल इज नाउ रिमेनिंग 20 रिक्वायर्ड, 10 बॉल्स रिमेनिंग एंड द टाइड इज नाउ स्लोली टर्निंग। और देखते हैं इस वक्त साजिद जो स्ट्राइक पर आ चुके हैं किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर इस मौके पर अपनाते हैं। अगली गेंद पर दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद साजिद के लिए, सेकंड चांस गॉन इन वेन, straightforward chance, it's extra cover, but the fielder put down. तो बार बार भाग्य यहाँ पर साजिद का साथ देता हुआ और देखना यह है कि इस भाग्य का साथ देने का किस तरह इसका सदुपयोग वो यहाँ पर करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन अंतिम क्षण में इस गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोच नहीं पाए फील्डर। एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा, 37, 9 बॉल्स रिमेनिंग, 19 रन रिक्वायर्ड, 18 for tie, 19 for win, 9 balls to go in the innings. सिराज के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, मिडल पर थ्रो पहुंचा, निशाना और इसी के साथ विकेट गिर चुका है। निशाना इस वक्त लग चुका था नॉन स्ट्राइकर एंड पर और इसकी बदौलत विकेट यहाँ पर गिर चुका है। सिराज आउट होकर पेविलियन वापस और तीसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है इस वक्त 37 रनों पर। 37 for 3 और यहाँ पर विकेट जरूर गिरा है, लेकिन खुशी की बात यह है CR7 के लिए कि साजिद स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। 8 गेंदें बाकी और 19 रन चाहिए विजय के लिए। 19 रन टू गेट इन रिमेनिंग 8 बॉल्स। निस्संदेह साजिद इस वक्त काफी सोच विचार में इस वक्त डूबे हुए कि किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त अपनाई चाहिए और अपनानी है सिर्फ इस वक्त आक्रामक बल्लेबाजी, दूसरा कोई चारा भी इस वक्त नहीं है उनके सामने। इजुद्दीन का आगमन इस वक्त होता हुआ और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और सिनन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। दबाव दोनों टीमों के खिलाड़ियों के ऊपर साफ पड़ता हुआ विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और सिनन गेंदबाज तैयार, फील्डिंग में जमावट करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार साजिद के लिए। इस बार गेंद को खेल दिया, फाइन गेंद जाती हुई थर्ड मैन के दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, लेकिन साजिद ने कुछ खास दिलचस्पी यहाँ पर नहीं दिखाई। दूसरे रन के लिए 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदें बाकी, 18 रन चाहिए। 18 runs to get from 7 deliveries. The equation seems to be a stiffer and stiffer now for CR7. They badly required a couple of 4s and 6s at this situation to get back into this match, what I told you before. और इस ओवर में अंतिम गेंद फेंकने के लिए सीनन ने इस वक्त तैयार, अपने कोटे की आखिरी गेंद, अपने कोटे की अंतिम गेंद नए बल्लेबाज इजुद्दीन ने इस वक्त सामना करते हुए। दाहिने हाथ
ओवर द विकेट सिमरन इस वक्त तैयार। ये गेंद इस गेंद के लिए चूंकि रन से नहीं मिलेगा, साजिद खुद रन नहीं लेना चाहते, अपने स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहते। ओवर की समाप्ति 38 द स्कोर, 18 नीडेड फ्रॉम लास्ट ओवर। और साजिद इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा CR7 के लिए उम्मीद की आखिरी किरण यहां पर दिखाई देते हुए। हर छक्के पर 1000 रुपए का नकद पुरस्कार इस वक्त घोषित कर चुके हैं तहसील दुबई साजिद के लिए। हालांकि एक छक्का वो लगा चुके हैं साजिद, 1000 रुपए प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा इस 1000 रुपए से भी ज्यादा अगर मैच को वो जिताते हैं तो ज्यादा खुशी उन्हें मिलेगी यहां पर। तो देखते हैं, लेकिन मैच को जिताने के लिए इस वक्त चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है इस वक्त। साजिद सामना करने के लिए तैयार ना, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए। और गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए नौशद। और आज का अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा साजिद सामना करते हुए। ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर CR7 का भविष्य साजिद के ऊपर, जबकि स्टार एमिरेट्स का भविष्य गेंदबाज नौशद के ऊपर। इस अंतिम ओवर में पहली गेंद लेकर तैयार, 6 balls 18 runs. Here we go. First ball, दाहिने हाथ over the wicket. Next spin, left side, and this time taken inside the fence. Sajid the pass, and this is an absolutely a big blow for CR7. लेग स्पिन गेंदबाजी पर गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन यहाँ पर गेंद ज्यादा ऊंची नहीं गई, लंगोट पर फील्डर खड़े हुए थे और आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं किया। लेग स्पिन गेंदबाजी पर ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं गेंदबाज नौशद, और साजिद का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। अब इस विकेट के पतन के साथ ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर स्टार एमिरेट्स, माफ कीजिए, CR7 की पारी की नैया इस वक्त बीच मझधार में इस वक्त जूझती हुई, तट जो है काफी दूर इस वक्त नजर आता हुआ। और निसार यानी अब्बू इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 6 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और 5 गेंदों पर 17 रन टाई के लिए चाहिए, 18 रन विजय के लिए चाहिए। तो देखते हैं बचे हुए 18 रनों को 5 गेंदों में बना पाते हैं या नहीं। पहली बेहतर गेंद इस वक्त नौशद इस ओवर में फेंक चुके हैं, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। दर्शकों की सीटियों की आवाज, तालियों की आवाज इस वक्त सुनाई देते हुए इस वक्त इस बीच ये गेंद इस बार चूके गेंद इस वक्त फाइनल की दिशा में, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। पहली गेंद पर गोल्डन तक के ऊपर विकेट गिर चुका है। गेंद लगभग लेक्सन को छूकर इस वक्त निकल चुकी थी और अंपायर बोल्ड आउट इस वक्त घोषित करते हुए। 4 गेंदे 18 रन। अब 2 गेंदों में 2 विकेट प्राप्त करने के बाद नौशद के लिए इस वक्त हैट्रिक का सुनहरा मौका। हालांकि कोई इनाम उनके लिए रखा तो नहीं गया है। तो 2 गेंदों पर 2 विकेट, 2 गेंदों में नौशद प्राप्त कर चुके हैं, और जो इनाम हर विकेट के लिए 1000 रुपए का रखा गया है वो इनाम को प्राप्त कर चुके हैं। 2000 इस वक्त उनको मिलने वाला है, जो इस वक्त घोषित कर चुके हैं अफरोज दुबई और शाहनवाज सऊदी अरेबिया इन्होंने। तो हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर छोड़ दिया था, मिस जजमेंट, एंड नाउ द लास्ट चांस, 3 sixes required in the remaining last 3 deliveries. They have to convert it for a maximum, 3 maximums in the last 3 deliveries. The last chance, lofted, not quite middling it, gone to the kick single, and this time he's gone. And now it looks like it's almost all over for CR7 if the bowler cannot bowl no ball or wides in this remaining 2 deliveries. 2 balls 18 runs. और अगर कोई नो बॉल या वाइड यहाँ पर गेंदबाज नहीं फेंकते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में, तो निश्चित रूप से स्टार एमिरेट्स की विजय यहाँ पर निश्चित है। तो चाई ने बल्लेबाज के रूप में इस वक्त, और लंबे कद के खिलाड़ी इस वक्त
इजी टीम सामना करने के लिए तैयार है। 2 गेंदे इस वक्त बाकी उनकी पारी में। जस्ट 2 balls left in the innings, 18 runs required. और नौशाद lofted this time and it fell short of a wicket. Just a single. 39 the score, 17 runs required from last delivery. Absolutely impossible task in front of the batsman in this last delivery. If the bowler cannot bowl no ball or wides. The last ball of the match is now coming up. Lofted in the air, chance for the extra cover fielder and taken comfortably. That's it. 16 runs comprehensive victory for Star Emirates against CR7, and with the 16 runs comprehensive victory, they opened the accounts in point table. They registered their first victory, defeating CR7, and the CR7 they suffered. They lost their first match in this competition, and at last Star Emirates registered a comprehensive victory of 16 runs against CR7 and opens the account in a points table. And all the cricketing actions are over in the day number 1 of this prestigious cricket tournament, MULARAPATNA Premier League Season 4 2024, which proudly presented by MULARAPATNA Friends presents. And now the second day, at exactly 8:30 am, the first match of the second day will going to start. Till then, we are saying a goodbye right from myself, Gopi, and my co-commentator, long-term partner, Mr. Satish Sali, and we are saying right from here, goodbye right from our commentator box. The first match of tomorrow starts exactly at 8:30 am on the morning. Till then, we are saying a goodbye right from here. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಘಟಕರು. 8:00ಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ನಾಳೆಯ ದಿನ 8:00ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಹಾಗೂ ಮಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಆಟಗಾರರು ಹಾಜರಿರಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಾನ್.